1996 to 2001, 2001 to 2006, and 2006 to 2009. Cabinet Minister in the government of Kerala for one term. He has served as member Lok Sabha for 2 terms and has been a Union Minister of State for 2 terms. Honorable member had also served as Deputy Chief in Lok Sabha. Sri K.C. Venugopal is a political and social worker by profession and is married to Dr. Asha K. and blessed with son Gokul and daughter Parvati. He has chosen the names very carefully, Gokul and Parvati. Srimati Kanta Kardam has been a member of this August House since April 2018 and serving her first term. She has played an important role in various social, cultural activities and several issues concerning awareness of human rights of downtrodden, deprived sections of the society, and has been vocal for their upliftment and rights. Srimati Kanta Kardam is an agriculturist, social worker by profession and is married to Sri Veer Singh Kardam. She is blessed with 2 sons, Neeraj and Ashish, and daughters Upasana and Swati. Sri Neeraj Dangi has been a member of this August House since June 2020 and serving his first term. It is noteworthy that Honorable Sri Neeraj Dangi had made remarkable efforts in supporting the tsunami victims' families and post-tsunami relief work in Andaman and Nicobar Islands in February 2005, which was monitored by Ministry of Home Affairs, Government of India. He is a member of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Honorable member is the son of late Sri Dinesh Dangi, a popular leader of Rajasthan, who had served as Minister in Government of Rajasthan. Sri Neeraj Dangi is an engineer, political and social worker by profession and is married to Dr. Preeti Soni. He is blessed with 1 son, Yuan, and daughter, Katyayani. I had the good fortune to be in the assembly along with his father. Sri Samir Oran has been a member of this August House since May 2018 and serving his first term. He was a member of Legislative Assembly of Jharkhand for 1 term. As Minister of Committee of Welfare and Scheduled Castes and Scheduled Tribes as a member, he is enlightening the committee through his vast experience in the field of upliftment of SCs and STs. Sri Samir Oran is an agriculturist and farmer by profession and is married to Srimati Sushila Oran. Srimati S. Fagnon Konak has been a member of this August House since April 2022 and serving a first term. Honorable members, I would like to share that through her untiring efforts, she has been instrumental in admitting a large number of children aged between 6 and 14 years who would drop out or never enrolled to school into formal schooling in Mon Educational Block Resource Center, EBRC, and Aboi EBRC, which covers 37 villages. Her active role in the implementation of targeted intervention project at Aboi for injecting drug users, other vulnerable population, and being part of implementation of link workers scheme in Mon district for the prevention of HIV and AIDS is truly commendable. She also played an important role in initiation of the process of documenting Konyak cultural heritage. Srimati S. Fangnon Konyak is a social worker by profession. Honorable members, on your and my behalf, I wish them a long, healthy, and happy life and extend greetings to their family members. Honorable members, I have to inform the House of the sad demise of the President of the Republic of Namibia, His Excellency Dr. Hage G. Geingob. He was a freedom fighter, statesman, chairman of the Constituent Assembly,
that formulated the Namibian constitution, the first Prime Minister of independent Namibia and the third President of the country. He dedicated his entire life to the welfare of his people and development of his country. President Geingob was a friend of India. President Geingob role in facilitating relocation of 8 Namibian cheetahs to India in September 2022 is greatly admired. On behalf of this House, we express our deepest condolences to the government and the people of Namibia. We share our sympathies with his family, friends, and admirers. We deeply mourn the passing away of His Excellency Dr. Hage Geingob. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Papers to be laid on the table. General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name as serial number 2 in the list of business today. Shri Pankaj Chaudhary. माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 2 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। Shri Rajiv Chandrasekhar. I used to lay the paper mentioned against my name as serial number 3 in today's revised list of business in Rajya Sabha, sir. Thank you. Shri Rameshwar Teli. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। श्री कौशल किशोर। सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2/5 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ajay Bhattji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 6 in today's list of business. Shri Pankaj Chaudhary. सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमन की ओर से व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। पेट्रोलियम फूड के उत्पाद पर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को 1700 रुपया मीट्रिक टन से बढ़ाकर रुपये 3200 मीट्रिक टन करने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 18/2022, केंद्रीय उत्पादन शुल्क को संशोधित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी 2024 की अधिसूचना संख्या 5/2024, केंद्रीय उत्पादन शुल्क। We have Mr. K.C. Venugopal here. I tried contacting him yesterday also. He was in the flight. I was telling the House, you chose the name of your children very carefully, Gokul and Parvati. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Dr. Ashok Kumar Mittal. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of the 28th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on the subject Countering Global Terrorism at Regional and International Levels, as listed against my name in today's revised list of business. Statement by Minister Shri Hardeep Singh Puri. Sir, with your permission, I rise to make the half-yearly statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 19th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs
on demands for grants 2023-24 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. Sir, I lay the statement. Honorable members, I have received one notice under Rule 267. The notice does not merit admittance. Matters raised with permission. Shri Samir Urang. माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को सदन में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। गुमला जिला में आज तक रेल लाइन नहीं पहुंचा है। मैं बार बार सदन के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि लोहरदगा से लेकर के कोरबा, ये धर्मजयगढ़ से कोरबा का लाइन प्रारंभ हो गया है रेल लाइन, और धर्मजयगढ़ से लगा 291 किलोमीटर है। ये कई बार इसका सर्वे जसपुर गुमला से रांची तक जा करके वहाँ के जो सैनिकों के लिए रेल की सुविधा हो सकती है। वहाँ किसान हैं, किसानों को फल सब्जी के लिए आगे वो बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ वो माइनिंग एरिया भी है और इन सारे सुविधाओं से वो आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी इसको यथाशीघ्र निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद माननीय समीर उरांव जी। ऑनरेबल श्री वाई को सब्जेक्ट नीड टू रिलीज नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड टू तमिलनाडु विदाउट डिले। Honorable Deputy Chairman, sir, the recent heavy rains and floods due to Cyclone Machong, which devastated 5 districts of Tamil Nadu, namely Chennai, Tiruvallur, and waterlogging and floods in 5 districts, Tirunelveli, Thoothukudi, Kanyakumari, Chengalpattu, Tiruvallur, resulted in destruction of public infrastructure and made lakhs of people homeless. I have requested the Honorable Prime Minister and Home Minister through my letter dated 19th December to send a central team to visit disaster-prone areas for release of financial assistance. Our Honorable Chief Minister, Thalapathy Stalin, also requested for release of rupees 37,000 crore for providing relief to the disaster-affected people and to improve the public infrastructure which was damaged. We also demanded that the recent disaster occurred to Tamil Nadu be declared as a national disaster and adequate relief of history. This is a stepmotherly treatment meted out to the state of Tamil Nadu. I would therefore demand that the disaster relief amount as demanded by the Tamil Nadu government may be released immediately to the state, as people are still suffering from the disaster and lot of relief and reconstruction works are awaiting for the funds. Thank you, Vaikoji. Dr. Fauzia Khan need to make dash camps mandatory for reducing hit and run cases in India. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. The amendment to Section 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Section 304A of the IPC, brings about significant road safety and traffic violations. Sir, Section 279, 304A, 338 of IPC apply in hit and run case incidents. In extreme cases, the police may book a hit and run case under Section 302. 302 जो खून करने पर लगता है, और कोई ड्राइवर जो 302 सेक्शन में बुक हो गया उसको सजाए मौत हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। सर, कुछ दिन पहले इन प्रोविजंस को लेकर इसके विरोध में बहुत भारी संख्या में ड्राइवर्स एसोसिएशन ने रस्तों पर आकर प्रोटेस्ट भी किया था। सर, किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में सबूत की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर सज़ा इतनी भारी हो तो सबूत की स्पष्टता भी आवश्यक होनी चाहिए। One key aspect that deserves attention in the wake of these stringent measures is the promotion of dash camps.
Dash cams have emerged as a valuable tool that can provide concrete evidence in the event of a road accident. So most countries in the world have adopted this on a large scale. Making the use of dash cams mandatory for manufacturers aligns with the objective of collecting reliable evidence, ensuring transparency, and facilitating a fair legal process. So today, seat belt beeps, plastic bonnets, and so on have been made mandatory for manufacturers. Dash cams may be made mandatory in the same way. The significance of dash cams becomes more pronounced considering the prevalent issue of tampering with evidence and corruption within the authorities. In advocating for the widespread adoption of dash cams, highlight their role in not only protecting law-abiding citizens, but also acting as a deterrent against corrupt practices by law enforcement, sir. Sir, these devices serve as an impartial witness, recording events accurately and discouraging unethical behavior. As India grapples with the challenges posed by strict traffic regulations, the incorporation of dash cams emerges as a practical and effective solution to address concerns related to accidents, evidence tampering, and promote responsible driving practices, sir. Thank you. Thank you. Manya Shri Imran Pratapgarhi, concern over unconstitutional action taken by DDA to remove encroachment in Delhi. उपसभापति महोदय, मैं डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मजारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती। डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्ला खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते? मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी, सब्जेक्ट डिमांड टू विथड्रॉ द ड्राफ्ट डी रिजर्वेशन पॉलिसी प्रपोज्ड बाय यूजीसी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, as per the data submitted to the Lok Sabha in the month of August 2023, 4% of the professors and 6% of the assistant professors working in central universities belong to OBC.
Sir, this number stands at 7% in the case of SCs and mere 1.5% in the case of STs. Sir, quite surprisingly, University Grants Commission, UGC, has issued recently draft guidelines de-reserving the vacancies meant for SCs, STs and OBC candidates in higher educational institutions and open up them for general category. This is very much unconstitutional and unwarranted, sir. The guidelines clearly state the ban on de-reservation of reserved vacancies in direct recruitment might be lifted in exceptional cases. I really don't understand what exceptionally exception cases and that are prevailing now for the UGC to take such a unconstitutional step, sir. Sir, the central, I draw your kind attention to the Central Educational Institutions Reservation Teachers Cadre Act 2019 clearly prohibits the de-reservation. Sir, the general procedure that is being followed and throughout India, in all, not only in respect of educational institutions, but even in respect of other government bodies, non-government bodies also, unfilled quota positions in universities, in the case of SC, STs and OBCs. And if they are not filled and unfilled and re-advertised and then special recruitment drives are carried out till the suitable candidates are identified, and until the suitable candidates are identified and these vacancies are filled, this procedure will go on, and there's no occasion and there is no reason why this should be de-reserved, sir. Sir, my sincere appeal to the government to prevent UGC from implementing such draft guidelines that erode the constitutional rights and protections which have been conferred on SCs, STs and OBCs for, in the case of reservation, sir. I urge the government to ensure that the vacant positions reserved for these OBCs, SCs and STs are expeditiously filled and concerted effort should be made. Thank you very much, sir. Thank you, Mani Vijay Sai Reddy ji. Mani Shri Ajay Pratap Singh, demand to include Kol tribe in particularly vulnerable tribal groups, PBT ji. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान कोल जनजाति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह सर्वविदित तथ्य है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। मध्य प्रदेश की आबादी का लगभग 21% आबादी जनजाति भाइयों की है। इन जनजाति भाइयों के बीच में लगभग 7.68% आबादी कोल जनजाति की है। मध्य प्रदेश की यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका उद्गम स्थल कहा जाता है रीवा जिले के फरेंदा गांव या कुराली गांव में है। ये जो कोल जनजाति है, इसके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने सतना जिले के 5 गांवों का सैंपल के तौर पर चयन करके उनका जो अध्ययन किया है, उसके निष्कर्ष से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उसके निष्कर्ष के अनुसार कोल जनजाति के मध्य जो शिक्षा का प्रतिशत है सतना जिले में, वो लगभग 32% है। सतना जिले की आबादी लगभग 22 लाख है। 22 लाख में से कोल जनजाति 2,68,000 हैं। 2,68,000 के बीच में मात्र चंद सैकड़ा लोग ही स्नातक हैं। कुछ लोग ही 12वीं की कक्षा पास किए हुए हैं। कोल जनजाति के लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। ये सामान्यतः मजदूरी करते हैं अथवा खेतीहर मजदूर हैं। बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं। इनके पास आवास के लिए भी कोई अपनी ज़मीन नहीं है। ये अन्य जाति के किसानों की ज़मीन पर बसे हुए हैं अथवा सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं। इनका ये जो मुद्दे हैं, ये जो समस्याएं हैं इस कोल जनजाति की,
इसको हल करने के लिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जो अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई है पीवीजीटी ट्राइब के लिए, उसके तहत या तो कोल जनजाति को पीवीजीटी ट्राइब के अंतर्गत शामिल किया जाए अथवा प्रधानमंत्री जनधन योजना का विस्तार कोल जनजाति तक किया जाए, जिससे कि उनका जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है वो दूर हो सके और विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके और उनका भी उत्थान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अजय प्रताप जी। माननीय श्री इरण कडाडी, नीड फॉर अमेंडमेंट इन एमपी लैट्स गाइडलाइंस। माननीय श्री इरण कडाडी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान, डिमांड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स टू ओडिशा। उपसभापति महोदय, आज आप बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आभारी हूं। सर, उड़ीसा में किसानों के लिए फर्टिलाइजर का बहुत कमी है। इसी के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी कई बार कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके हैं, बोल चुके हैं और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि फर्टिलाइजर उड़ीसा में जो कमी हो रहा है उसको कैसा फुलफिल किया जाए। नेशनल लेवल का अगर देखा जाए सर, तो पर हेक्टर 137 मतलब 1 क्विंटल 37 केजी पर हेक्टर खर्चा होता है या फिर केंद्र सरकार देती है, लेकिन उड़ीसा में 66.17 माने 66 किलो ही फर्टिलाइजर दिया जाता है। उसका मतलब काफ़ी कम है, 50% करीब कम दिया जाता है। इसीलिए हमारा डिमांड है सर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में उड़ीसा में 76% लोग इन्वॉल्वमेंट है। 87,46,000 हेक्टर में फसलें होती है सर, उसमें 18,79,000 हेक्टर इरिगेटेड लैंड है। इसके बावजूद, इतना डिमांड करने के बावजूद पता नहीं क्यों हमारे फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रहा है। केंद्र सरकार क्यों नहीं सुन रही है मुझे पता नहीं। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे उड़ीसा में एग्रीकल्चर फार्मर्स बहुत अच्छा फसल कर रहे हैं। इसी के कारण जो कृषि कर्मण अवार्ड जो दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से, वो उड़ीसा सरकार को 5 बार से ज्यादा दिया जा चुका है। उसका मतलब बहुत ही अच्छा फसल उड़ीसा के किसान लोग कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि पहले दिन ऐसा था, कुछ साल पहले ऐसा था कि लोग खाने को अनाज नहीं पाते थे। छोटे छोटे बच्चों को पेट में अनाज देने के लिए उनके परिवार का जो पिता होता था, जो भी होता था, वो चोरी करके ला के अपने बच्चों को अनाज देता था सर। इसीलिए खेत से अनाज चोरी हो जाएगा, इसके कारण बहुत से किसान रात को खेत में जाके सोते थे, खेत में जाके जगते थे सर। लेकिन आज स्थिति ऐसा है, कोई खेत में जगता नहीं है, कोई खेत में सोता नहीं है, क्योंकि सबके घर में अनाज है सर। उसका मेन कारण है, उसका मुख्य कारण है कि उड़ीसा का सरकार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो किसानों के लिए जो योजना किए हैं वो उनको लाभ दे रहा है और बहुत सुविधा से किसान अपने परिवार को पोषण कर सक रहे हैं सर। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है कालिया योजना, जिसके तहत किसानों को 5,000 रुपया हर सालाना दिया जाता है और 50,000 रुपया तक सर उनको बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाता है, जिसके कारण किसान आज उड़ीसा में खुशहाली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ये फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रहा है, कैसा इसको फुलफिल किया जाए। आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा के किसानों को। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, कंसर्न ओवर राइजिंग केसेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड इन द कंट्री। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज हर भारतीय ऐप, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल ऑनलाइन साधनों के माध्यम से अपने लेन देन की दैनिक क्रिया को बिना समय गंवाए आसानी से पूरा कर रहा है और यह डिजिटल युग का कमाल है। कोरोना महामारी के काल को माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व ने आपदा को अवसर में बदल कर रख दिया है, जिसका परिणाम
अब सबके सामने है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हमारे देश में हो रहा है, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। माननीय उपसभापति महोदय, जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, उसी के साथ साथ बहुत बड़ी चुनौतियां भी आती जा रही है। इसी क्रम में इस डिजिटल युग में डिजिटल लेन देन ऑनलाइन के माध्यम से कुछ लोग फ्रॉड या ठगी या धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस प्रकार का फ्रॉड करने वाले लोगों के लिए कई प्रकार के कानून लेकर आई है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड या ठगी करने वाले मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 13,500 ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले निजी बैंकिंग क्षेत्र में हुए हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत को पिछले 7 सालों में हर रोज औसतन करीब लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ बैंक फ्रॉड या स्कैम के जरिए हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार एवं निजी एवं सरकारी बैंक के अधिकारियों से एक सवाल भी है। यदि हमारे देश के सभी बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं, आधार कार्ड पहले से ही तकनीकी रूप से सत्यापित हो चुके हैं, तो यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड या ठगी होती है, तो हमारे सिस्टम में ऐसी क्या खामी है जो हम फ्रॉड करने वाले लोगों के खातों को ट्रेस नहीं कर पा रहे या पकड़ नहीं पा रहे हैं? यदि इस प्रकार की कोई खामी है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। ऐसे असंख्य केस है जो लिखित में नहीं आते हैं। मैं भी दूर दराज आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ। यह पीड़ा मेरे क्षेत्र के लोगों की भी है। एक कॉल या एक मैसेज में आए लिंक श्री संजीव अरोरा। Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to take up this important issue. This is mainly regarding state of Punjab. I would like to draw the attention of the government through you to a significant issue concerning the wage rate notified under Manrega for the state of Punjab. The rate finalized for the state of Punjab is 303 rupees per day compared to higher rates in neighboring states, especially Haryana, which is 357. The minimum wage which Punjab government has done is 413 rupees. So my request is not only Punjab, in whole of nation, Manrega should match the minimum wage finalized by the state if it is higher. I mean, otherwise people do not want to work for Manrega schemes, and two things happen. Unemployment is also there, and then the schemes are not implemented. Even the total fund allocation on this account to the state of Punjab is going down as per official data from last years. In light of these disparities, I humbly request government through you to intervene to reevaluate the current wage rate for Punjab under Manrega. It is imperative that the wage rate is increased to bring it to par with either the neighboring state or the minimum wage as set by the Punjab state government. Thank you. Thank you. श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं भारत सरकार के उपासना स्थल कानून 1951 महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। माननीय मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, वे पूजा स्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके और उन्होंने राजनीतिक फ़ायदों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी होने की प्रवृत्ति स्थापित की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश
अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता। महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया, उसे विगत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सही ठहरा दिया गया है। मान्यवर, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री A.D. Singh. Thank you, Deputy Chairman, sir. Need for India's effective engagement in the Arctic region. India fulfilled a long-standing need and signaled its rising interest and stakes in the Arctic with the release of the Arctic policy on 17th March 2022. The study of the Arctic is critical to Indian scientists as it influences our monsoon, which directly imparts agriculture sector on which almost 60% of India's population is dependent. The rising sea levels due to the Arctic ice melt also threatens India's 1,300 island territories and the welfare of 1.4 billion Indians. The Arctic meltdown also helps India's scientists better understand the glacial meltdown in Himalayas, the largest source of fresh water outside the poles and home to almost all of India's perennial rivers. It is for this reason that India is the only developing country apart from China to have a permanent research station in the Arctic since 2008 and has undertaken 13 scientific expeditions to the region. The Arctic therefore presents India with a complex set of opportunities as well as challenges to secure its increasing national interest. Firstly, India should seek a more inclusive and equitable Arctic Council with a greater say for the observer states in the decision-making process and more freedom in pursuance of the research objectives in the Arctic region. Secondly, India should also fine-tune its own internal mechanism to impart a greater impetus to its Arctic endeavors with a more singular, coordinated and cohesive approach by appointing an Arctic coordinator. I urge the government to coordinate its efforts in playing a pivotal role in the Arctic region. Thank you. Honorable members, welcome to the parliamentary delegation from Republic of Suriname. Honorable members, I have to make an announcement on my own and your behalf. I have great pleasure in welcoming Sri Marinus Bey, Chairman of the National Assembly of the Republic of Suriname, and the accompanying members of the parliamentary delegation of Suriname who are on a visit to India as our honored guests. The parliamentary delegation from Suriname arrived in India on Sunday, 4th February 2024, and now are seated in the special box. Besides Delhi, they will visit Agra before their final departure from India. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament of Suriname, the government and friendly people of Suriname. Shri Santosh Kumar P.
Thank you, Chairman, sir. Sir, there is an urgent, a critical need to increase the minimum wages of our workers in the country. Minimum wage is a concept which is universally accepted for combating poverty and stabilizing the economy. But unfortunately, in our country, the national minimum wage is shockingly low. That is just 178 rupees for 8 hours. So the trade unions, central trade unions, and the Samyukta Kisan Sabha, Samyukta Kisan Morcha are demanding an increase in this, and at least 26,000 rupees must be provided for the workers in our country. As we all know, 90% of the workforce actually are in the informal sector. They don't have any social security, no security for their jobs, so the working conditions are also very miserable. In fact, there is no job contract as such. And in states also, between the states also, there is huge disparity. For example, in Kerala it is 837 for 8 hours, whereas in Gujarat it is 296 and in Tripura it is 250. So there is huge disparity amongst the states as well. So we have to enhance the minimum wages. Anup Satyavarthi committee recommended in the year 2019 that at least 375 rupees must be the minimum wage. That is not accepted. And this was revised last in 2017. So I urge the government to increase the minimum wages of our workers who are actually the backbone of our economy. There is a system in government sector and corporate sector to provide DA and to increase salary. But these people are left without any social security or any such system. Then their bargaining capacity is also very low. So once again, I take this opportunity to request the government through you to take necessary steps to enhance the minimum wage of our poor workers. Thank you, sir. माननीय सदस्य अशोक कुमार मित्तल जी। धन्यवाद। आज मैं इस सदन के सामने दुनिया भर के 3 करोड़ सिख व करोड़ों अन्य श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़े एक मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारत सरकार टूरिज्म प्रमोशन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, जिसमें एक योजना है स्वदेश दर्शन, जिसमें 5200 करोड़ की कीमत से 76 प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। इस योजना में पूरे देश में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित धार्मिक स्थलों को आइडेंटिफाई करके सर्किट के माध्यम से अलग अलग राज्यों में विकसित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही गुवाहाटी में शक्तिपीठ कामाख्या देवी जी के मंदिर की डेवलपमेंट के लिए भी 500 करोड़ रुपए का लागत से बनने वाला शिलान्यास रखा, जिसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। मैं पंजाब से आता हूं। जो श्री गुरु नानक देव जी, श्री गोविंद सिंह जी और हमारे अन्य सिख गुरुओं की पवित्र धरती है। इन सभी गुरुओं ने दुनिया को मानवता, धर्मनिरपेक्षता और एक ओंकार का पाठ पढ़ाया है। हमारा महान श्री गुरु ग्रंथ साहब लोगों को निस्वार्थ सेवा करना सिखाता है, समाज से जुड़ना सिखाता है और उन सबको बराबर का सम्मान देना सिखाता है। सिख धर्म के 5 तख्त हैं: श्री अकाल साहब अमृतसर, श्री केसगढ़ साहब अनंतपुर साहब, श्री दमदबा साहब तलवंडी साबो, श्री पटना साहब पटना और श्री हजूर साहब महाराष्ट्र के नंदेड़ में स्थित है। इसके अलावा पूरे देश में सिख धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जैसे कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब उत्तराखंड, गुरुद्वारा श्री पोंटा साहब और गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहब हिमाचल प्रदेश, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब पंजाब। इन सभी धार्मिक स्थलों की आस्था और मान्यता को देखते हुए पूरे विश्व भर से हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने सिख सर्किट के लिए एक ट्रेन भी शुरू कर दी है। अब मेरी मांग है
कि स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से सिख सर्किट भी शुरू किया जाए, जिसमें हर राज्य में सिख धार्मिक स्थलों का विकास करके भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण हो, ताकि इन सभी धार्मिक स्थलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। इन सभी स्थलों को आपस में व मेट्रो सिटी से रेल, रोड, एयर के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि सभी श्रद्धालुओं को जो पूरे देश से दुनिया से आते हैं इन धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का लाभ मिल सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य जी, आपका समय समाप्त, अब नोट पर नहीं आएगा। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी। Thank you, Madam. Need to release funds under NFSA owed to Bengal. The Union Government has withheld the release of rupees 7,000 crore to a state of West Bengal to procure paddy under the National Food Security Act. The state government has successfully acquired 8.52 lakh tons of paddy for the central pool this fiscal year. The state aims to achieve 80% of its annual procurement target during the ongoing Kharif season, which extends until the end of February. Timely release of funds is crucial, otherwise the entire procurement process may be affected. The halt in funds to Bengal stems from the need for NFSA logos and the Prime Minister's pictures to be put up across all ration shops in the state. Madam, it is ridiculous that the Union Government is willing to jeopardize an entire state's food security over a delay in plastering the Prime Minister's image, which is a time-taking task. This is the Union's rationale to withhold the funds. So Madam, let me read out a quote from Prime Minister Modi from 2018, and I quote, "Federalism is no longer the fault line of center-state relations, but the definition of a new partnership of Team India," unquote. However, since the current government has come into power, there has been a systematic deprivation of states, pushing people into distress in regions where they are incapable of winning elections democratically. Madam, the Union Government has blatantly carried out anti-federal policies and engaged in fiscal federal terrorism, denying Bengal funds worth rupees 1 lakh crores under several schemes. Despite pleas from a chief minister, party leaders and beneficiaries, the union has chosen to remain indifferent. This goes against the very spirit of the constitution. This goes against the people of Bengal. I challenge you, fight us democratically, fight us in elections, but do not make crores of people suffer for your political vendettas. I urge this government to immediately reimburse rupees 7,000 crore for procuring paddy under the National Food Security Act. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री जवाहर सरकार जी। अनुपस्थित। श्री राकेश सिन्हा जी है? Yes. Huh? Madam, we had requested the Government of India to change the name of the state of West Bengal to Bangla. This has been pending from 2016. And the West Bengal Legislative Assembly has taken a unanimous resolution that if, say, the name of Odisha can be changed to Odisha. आप सब्जेक्ट पे बोलिए, आपका सब्जेक्ट ये नहीं है। डिमांड फॉर क्लासिकल इंग्रेडिएंट स्टेटस फॉर simultaneously, we have been agitating for the inclusion of Bangla as a classical language. We have taken a resolution on this score, and we have submitted a 4-volume research paper to the Government of India on this subject. We ask for consideration of the details submitted thereon to establish the antiquity of the language of Bangla in syntax, in grammar, and largely in alphabet from the 4th century BC. It is our humble submission that our case as to include Bangla as a classical language be considered positively. माननीय श्री एस
सिल्वागन वेथी, श्री ब्रिजलाल जी, स्टेट ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। उत्तर प्रदेश में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वहाँ पर शुरुआत में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन के बाद फुटफॉल 5 लाख पर डे था। एवरेज वहाँ पर फुटफॉल हो रहा है 3 लाख। और ये जो फुटफॉल है न केवल अयोध्या में, काशी में और मथुरा में, ये इतना फुटफॉल है कि इससे पर्यटन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। और उत्तर प्रदेश जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें $1 ट्रिलियन योगदान उत्तर प्रदेश का होगा और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा धार्मिक पर्यटन का। अयोध्या में के विकसित होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ का मैं भी रहने वाला हूँ, वहाँ के लोग विकसित होंगे। काशी में काफ़ी फुटफॉल हो रहा है। जब से वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का बनाया, जिस तरह से उसको ब्यूटीफाई किया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे पर्यटन में। उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में एक है बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट के जो 3 मुख्य स्थान हैं, 4 स्थान कहिए, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और हमारा जिला सिद्धार्थनगर है, जहाँ पर है कपिलवस्तु जन्म स्थान। कपिलवस्तु 1972 में खुदाई हुई। उसके पहले भी अंग्रेज भी वहाँ खुदाई करा चुके थे और वहाँ स्तूपा मिला। वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध महाराज के पिता सुशोधन महाराज जी का महल मिला और ये केमिकल एनालिसिस से ये प्रूव हो चुका है कि जन्मस्थल है। वहाँ उनकी अस्थि भी मिली थी जो दिल्ली में रखी हुई है। तो हमारा अनुरोध ये है कि भारत सरकार को ये जो बुद्धिस्ट सर्किट है, इसके विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ कि कुशीनगर में उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और ये जो जगहें हैं बुद्धिस्ट सर्किट भी है, वो अयोध्या और काशी, यहाँ के आसपास ये बुद्धिस्ट सर्किट हैं। और ख़ासकर मैं कपिलवस्तु के बारे में कहूँगा कि उसको हम लोग उतना कैश नहीं कर पाए। अभी वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, होटल्स नहीं है, रुकने के अच्छे स्थान नहीं है और केवल वहाँ पर जो रास्ता है केवल गोरखपुर से और वहाँ तक ट्रेन की उसमें, बस्ती से वहाँ तक बड़ी अच्छी सड़क बन चुकी है। तो मेरा अनुरोध ये है भारत सरकार के कि जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसको सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो बुद्धिस्ट। माननीय सदस्य संगीता यादव जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे भारत में किशोर लड़कियों और महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी राइट टू हाइजीन पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूँ। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है माननीय सभापति जी जो देश की 50% आबादी से जुड़ा हुआ मामला है। और 2017 से लेकर 22 तक जब मैं MLA थी तो मैं लगातार बड़े स्कूलों, जितने भी हमारे बच्चियां हैं जो 11 साल से ज़्यादा थी, उन सभी स्कूलों में और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थी उनमें मैंने फ्री नैपकिन हमेशा बांटने का काम किया 5 साल और जागरूकता अभियान भी चलाया। इसमें माननीय सभापति जी, गांव के हमारे प्रधान, पूर्व प्रधान, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका सबका सहयोग मिला। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में ये चर्चा का विषय भी ना, नहीं तो ये बंदिशों में ही हमेशा रहता था। और माननीय सभापति जी, हजारों महिलाओं और बच्चियों को हम लोगों ने गर्भाशय से जुड़े हुए अनेक बीमारियों से बचाया। तो मैं इसमें 0 आवर के माध्यम से मैं आपसे कुछ अपील करना चाहती हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मोदी जी ने भी लाल किले से इस मुद्दे पे चर्चा किया है और जब से पैडमैन मूवी आई तब से ये चर्चा का विषय और ज़्यादा विस्तृत तौर पे हुआ। लेकिन आज भी 5वें राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार, स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार केवल 36% महिलाएं ही सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं। बाकी आज भी अज्ञानतावश अस्वच्छ सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो माननीय सभापति जी,
ये इससे बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां बच्चियों में, महिलाओं में फैल रही हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही अपील करूंगी कि सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको मिशन मोड में करने की आवश्यकता है। एक तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगी कि इसको मिशन मोड में ले आया जाए, क्योंकि ये राइट टू हाइजीन देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी हमारी समस्या बना हुआ है। और यूट्रस कैंसर एक ऐसा कैंसर है माननीय सभापति जी, जो ज़्यादातर 4th स्टेज पे ही मालूम पड़ता है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। और भी बांझपन की समस्या हुआ, संक्रमण की समस्या है, सर्वाइकल कैंसर है, जो अभी बजट में भी हमारे माननीय मोदी जी ने रखा है, उसमें हमने चर्चा की है। लेकिन ये अगर इसमें हमने काम किया तो हमें ये अपनी 50% आबादी को बहुत सी बीमारियों से बचा पाएंगे। और 2 अपील और करूँगी माननीय सभापति जी आपके माध्यम से, कि इस काम के जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मिशन मोड में जो सरकार अभी कर रही है, उसको शामिल किया जाए, लोकल एनजीओ को शामिल किया जाए। धन्यवाद। क्वेश्चन और नाउ क्वेश्चन और प्लीज संगीता जी बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 ऑनरेबल श्री आर गिरिराजन प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। थैंक यू सर। Laid on the table of the house. Thank you. First supplementary. Please be brief in your question. Sir, in his answer, the Honorable Minister has said the price of CNG at Delhi has increased by just 1.30%. Sir, in 2021, the price of CNG was increased 4 times. Please question Mr. R. Rajan. Yes. That's why I'm asking. On February 8, 2021, the price of CNG was increased from 49.90 to 49.40 per kg. The highest CNG price was recorded in Mr. R. Rajan, please question. Question. Raised in 115. Sir, my question. CNG is considered to be an energy to rupees 50 per kg. And Thank you. And would like to know the total compressed CNG. Thank you. Please be brief in your question. माननीय मंत्री जी, जवाब भी briefly ही देंगे. Sir, I'm entirely in agreement with the honorable member that the government should encourage more consumption of compressed natural gas because it's relatively a cleaner fuel. Although there is a debate in the West whether even that's an entirely green fuel or not, but I won't get into that. It is for that reason, sir, the government has ensured the reference period in the question was the last 18 months. And the government has ensured that whilst global prices were witnessing turbulence, massive increases, shortfall. Honorable member just now in his supplementary referred to an earlier period than 18 months. There was a period when there was a lockdown, and lockdown prices don't reflect reality prices. For instance, during the lockdown, the crude price came down to $19.56 a barrel, and then it shot up to 128 and 130. Sir, we were able to do this for 2 reasons. We rationalized our system of calculating cost in April 23, and as a result of which, whilst the global prices were $53.51 in the Japan-Korea, I'm citing Japan-Korea because those are 2 large consuming markets, and China is also part of that. One market to the east of India, Japan, Korea, China. The other is the Western India market, which is west of India towards the Middle East. Both those prices were very high, $53.51 per million metric British thermal units. And the domestic gas price was much lower. It was 83% lower. The average price also was 69% lower. Yes, it is our constant effort to provide more gas available for domestic cooking purposes and, sir, for the transport sector. And we are committed to make the green transition. In fact, our trilemma is to ensure availability, affordability, and sustainability. And the increased gas which is being provided, we raise the gas available to the CGD sector and transportation sector by 2.5 times, 250%, sir. So I'm in agreement. We are making that, and we are ensuring that Indian gas prices are way below the market prices, global market prices. Thank you. Second supplementary. Please be brief. Sir, my second supplementary question. I would like to know from the Honorable Minister whether the government has initiated any drive for increasing the use of CNG vehicles in the country and to provide any incentive, concession, subsidy to encourage people to switch over to CNG vehicles from diesel. The total number of CNG vehicles in the country as of now
the number of CNG vehicles are expected to hit the road Thank you. before 2030. Thank you, sir. Sir, there is an autonomous process of transition taking place. If you look at the number of CNG vehicles, at the time when international CNG prices went up, there was an apprehension that people would stop buying CNG vehicles. That didn't happen. And the very fact that we can make gas available, natural gas available for the transportation sector at reasonable prices, not linked to market global prices, that itself acts as an incentive. The same is happening also with electric vehicles, but the issue of giving incentives, I think the most important incentive you can give is to make the energy which these vehicles consume available in plenty, and we are taking our overall use of gas in our energy matrix from 6% to 15%. So we are going down that, giving specific incentives, etc. Those are the subjects, I think, of other ministries. But I'm sure the honourable member is aware that that does not pertain to my ministry. Thank you. Dr. Sikandar Kumar. Dr. Sikandar Kumar. Thank you, sir. With your permission, I would like to know from the Honourable Minister of Petroleum and Natural Gas that is there any mechanism to decide the CNG prices? If yes, then what is that and how the CNG prices are determined? And secondly, what initiative the government has taken from time to time in order to stabilize the CNG prices? एक ही सवाल पूछना था, please, माननीय मंत्री. Sir, I'm quite happy to answer both because they are interlinked. Sir, the position prior to April 23 was that Indian gas prices were based on 4 hubs, namely US Henry Hub, Canadian Alberta Hub, UK NBP, and Russian gas market. And the prices used to be fixed over a 1-year reference period every 6 months. Now, the difficulty with that was that these were not aligned to the Indian condition. And out of these 4 hubs, 2 of them, sir, the UK NBP and the Russian gas market, stopped operating after the one after the Ukraine-Russia war, and the other one because of the North Sea oil difficulties. So we took some very far-reaching decisions, reforms. In the month of April 23, we decided to delink the Indian gas price from these 4 hubs, and we aligned them to the Indian crude basket. In other words, 10% of the Indian crude basket. And as a result of which, we were able also to fix the prices every month, and the price of oil now has a price of gas has now a floor and a ceiling. The floor is $4 MMBTU, and the ceiling is $6.5 MMBTU. This immediately resulted in the price in the month of March coming down from March price, the April price, because we took these decisions in April, coming down drastically. Sir, we are doing many other things. For instance, the number of CNG stations has increased from 738 in 2014 to 6,159, which is a growth of 735%, sir. Sir, the area covered by CGD, which is the domestic gas availability, that has gone up, sir, from 5.47% of the 508%, sir. The population covered by CGD in 2014 was only 12.81%. It is now 98%, and this is a growth of 665%. So whichever way you look at it, sir, the gas infrastructure, the pipelines we've laid, the amount available, all that is on the increase, sir. Thank you. Mani Shri Jawahar Sarkar. See. Mic is working नहीं पहले से mic काम कर रहा पूछने दे please. Mike, sir, I would like to ask the Honourable Minister how much the disturbances on the Red Sea route, the Houthi and other attacks on the Red Sea route, are affecting the West Indian market of gas and petroleum crude, since he has raised the issue of $19 per barrel. Thank you. Both of them. Thank you.
6 cents I should have added per barrel as the lowest point during the economic lockdown. I'm talking about the period of 2020, I think March to 21, 22. Because the global situation as a result of the pandemic was in a situation of chaos, there was no consumption, so the price came down to $19. Insofar as the developments in the Red Sea area are concerned, sir, I have been asked this question outside this august house, and my answer has always been, yes, we have a certain degree of anxiety because these are non-state actors affecting supply lines, and should those supply lines be disrupted totally. Just now, there is some rerouting taking place on account of that uncertainty, and that rerouting results in higher freight costs, higher insurance costs. But as it is, I say with my fingers crossed that we are reasonably confident that given the goodwill around, these factors making for anxiety will be contained, and we do not have an all-out escalation. Now, if an all-out escalation of hostilities takes place and there is a total supply line, I don't want to name the areas, it's very clear, then of course there would be a cause for concern. But so far the international community, their geopolitical equations and the marketplace has adjusted. When I last looked at the price of oil, it had come down, I think yesterday when I inquired, to $77 a barrel. My own feeling is that if the uncertainty in the Red Sea area, particularly the attacks by the non-state actors, if these were not to recur or not in that frequency, or most important, if they were not to escalate and exacerbate, I think this is a manageable situation. Thank you. Sri M. Thambidurai, Manyam M. Thambidurai. Deputy Chairman, sir. Minister, in his reply, he said regarding this natural gas infrastructure, in that he replied, they are going to put operational natural gas pipeline as increased. Because there is apprehension in Tamil Nadu farmers, they are opposing this kind of putting gas lines in the agriculture land because a lot of agitation taking place. Whether the minister aware that and come forward to solve the Tamil Nadu agriculture farmers must not affected put this kind of gas line through that land. Instead of that, there had been roads, national roads, they can bring that. You have put your question. Thank you. Sir, I am grateful to the honorable member for having raised this issue. Of course, he wants to inquire whether I am familiar with it. So I am not only familiar with it, I spend a large part of my waking day to resolve these problems. I just give him one example. I wrote a letter to the Honorable Chief Minister on 2nd October 2021. And this is just one letter I've written. Here, Tamil Nadu Chief Minister. Since you are asked a question on Tamil Nadu, I refer to them. And I said that the Kochi, Kutanad, Mangalore pipeline, KKBMPL project, was conceptualized as part of the ambitious national gas grid. This pipeline was planned to evacuate the regasified LNG from Kochi LNG terminal to transport to various consumers in the states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. GAIL has been entrusted to implement this. But you see, the fact that arises, the same pipeline, when it went through Kerala, 514 kilometers has been completed. It goes to Karnataka, 58 kilometers has been completed. And Tamil Nadu, 329 kilometers not completed. Now, whenever the state government is unable to implement a project in terms of the obligation it has, so we have been in constant touch with them. We received periodical assurances that they are attending to it. But as I said, sir, all the other states, Kerala done, Karnataka done, and Tamil Nadu, it's still under implementation, and we would... Please, thank you. Now I'm coming to that. Farmers... Thank you. Thank you. Now question number 17, Mani Sri Raghav Chadha. Mani Mantri ji. उत्तर सभा के पटल पर रख दिया गया। First supplementary, Mani Raghav Chadha ji. सर, मेरा पहला सवाल भारत देश के एमएसएमई सेक्टर में जो सिकनेस है उससे संबंधित है। सवाल बड़ा सरल है। वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग
13,000 MSME बंद हुई, जो पिछले 4 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है। हम ये अगर अनुमान लगाएं कि 50 लोग एक MSME में भर्ती होकर काम करते हैं, रोजगार लेते हैं, तो अगर 13,000 यूनिट्स बंद होती हैं तो लगभग 6.5 लाख लोगों की नौकरी चली जाती। और एक फैक्ट और देके मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 में भारत देश के जितने एक्सपोर्ट्स होते थे उसका 50% हिस्सा लगभग MSME सेक्टर से आता था। आज वो 50% से घट के 44% हो गया, यानी कि MSME के एक्सपोर्ट्स भी गिरते जा रहे हैं। सवाल मेरा माननीय मंत्री जी से ये है कि जिस प्रकार से MSME सेक्टर की ग्रोथ तो छोड़िए, जिसमें गिरावट देखी जा रही है, उसके क्या कारण है और खास तौर पे उसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है कि MSME के अंदर 19, 20, 21 और 22-23 से 3-4 सालों में GDP में गिरावट आई है, ये उसका कहना है। वैसा एक्सपोर्ट में भी, सर एक्सपोर्ट में 2 साल में कोरोना के कार्यकाल और GDP भी कोरोना के कार्यकाल में 2% से गिरा, बात सही है, 2% से, मगर 21-22 में फिर 29.1% वापिस इंक्रीज हुआ। अभी 22-23 में तो अबाउ 30% हो ही गया होगा। तो कोरोना के कार्यकाल में गिरावट हुई, मैं मानता हूँ। एक्सपोर्ट भी कम हुआ, वो भी मैं मानता हूँ, मगर अभी एक्सपोर्ट भी इसमें 45.83% हो गया है, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण कोरोना के कार्यकाल में देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने उस वक्त जो योजना अलग अलग दी, क्रेडिट गारंटी योजना जो उन्होंने चालू की, उसके अंदर MSME के ऊपर कम से कम 2,41,000 करोड़ जो MSME बंद हुई थी वापस चालू करने के लिए उनको पैसा दे दिया गया, लोन दे दिया गया। इससे अभी 45.83 हो गए है। अभी मैं मानता हूँ कि इसमें एक और भी है कि हमारा GST जो 19-20 में 5 लाख करोड़ था, 20-21 में कम हुआ, 4.7 लाख करोड़ हुआ था। अभी 21-22 में 5.3 अभी बढ़ गए है, पहले इतना ही हो गया, अभी इससे भी 2% एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। तो आपने कहा गिरावट हुई थी कोरोना के कारण, मगर अभी फिर MSME में अलग अलग योजना देकर वहाँ फिर जो उद्यमी बनते वो चालू हो गए और अच्छा उत्पादन दे रहे। उसका फिगर मैं GST के माध्यम से मैं कहा। सेकंड सप्लीमेंट्री ब्रीफली, सेकंड पहले मैं जरा एक सवाल सेकंड सप्लीमेंट्री आप सवाल मंत्री जी ने जो फैक्ट बोला वो गलत बोला है, तो मैं आप उसके लिए दूसरे रास्ते हमारे राघव चड्ढा जी आप सवाल पूछें। अच्छा मैं आगे चल, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आप सवाल पूछें। NPAs और लोन डिफॉल्ट्स की जहां तक बात है, इस MSME के सेक्टर में ये देखा गया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोन्स लिए गए, चाहे सरकार की किसी योजना के तहत लिए गए या बैंकों से लिए गए, वो लोन डिफॉल्ट हो गए सिंपली बिकॉज वो सेक्टर पूरी तरीके से गिरता जा रहा है पिछले 3-4 वित्तीय वर्षों में। खास तौर पे भारत सरकार एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी ECLGS। इसमें सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है कि एक अधिकांश हिस्सा जो लोन के माध्यम से MSMEs को दिया गया था वो NPA हो गया है, उस पे डिफॉल्ट हुआ। आपका सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो छोटा एंटरप्राइज होता है, जो गरीब लोगों को रोजगार देता है, उनकी बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और खास तौर पे इस NPA डिफॉल्ट से डील करने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं पहले कहा कि कोरोना के कार्यकाल में कई उद्यमी बंद हुए थे, कामगार भी चले गए थे। उस वक्त गिरावट जरूर थी GDP में,
अगर उसी तरह लोगों ने लोन भी रीपेमेंट न किया, एमपी बहुत सारे अकाउंट एमपी हो गए, इसलिए इमरजेंसी क्रेडिट योजना 5 लाख करोड़ देश के पंतप्रधान जी ने इस डिपार्टमेंट के लिए दिए। उसमें से 2,41,000 करोड़ ये उद्यमी के लिए, और जिन्होंने का एमपीए हुआ उनको भी वापस लोन देने के लिए उसका जो लिमिट था 1 करोड़ वो 5 करोड़ तक लेके गए, और उनको पुनर्जीवित करने का काम सरकार ने किया। इसलिए उत्पादन फिर बढ़ा, पहले इतना ही उत्पादन बढ़ा, कुछ घाटा नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ वो सभी इंडस्ट्री फिर चालू हो गए हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री एस सेलंगवेथी, माननीय श्री एस सेलंगवेथी, एस सेलंगवेथी, प्लीज। Honorable Chairman, sir, there is a survey has been conducted recently with input from 2,600 formal MSMEs from 5 states and Union Territory of Puducherry. One of the two surveyed MSME want an instant line of credit, but the non-availability of the short-term credit is the biggest hindrance for the MSMEs. So I would like to request our Honorable Minister to look into the demand and request of the MSMEs. Thank you. सर, सभापति महोदय, क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जो उद्यमी बंद हुआ उनके लिए लोन की भी व्यवस्था की गई, मदद भी की गई है। मैं समझता हूँ जहाँ भी और भी उद्यमी को दिक्कत है उनको हेल्प करने के लिए पीएमजीप से लेकर अलग अलग 8-10 योजना है, उनके माध्यम से हम मदद करेंगे। मगर इंडस्ट्री देश का एक्सपोर्ट बढ़ाते, जीडीपी बढ़ाते, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए मैं समझता हूँ जो भी करना इंडस्ट्री के लिए उसके लिए हमारे पंतप्रधान तैयार है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 लाख करोड़ इस डिपार्टमेंट के लिए इंडस्ट्री के लिए दिए है, उसमें हम उस जो हमारे सदस्य ने कहा उनको हम मदद करेंगे। माननीय शक्ति सिंह गोयल। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपके जरिए मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि जो रिटर्न आंसर दिया है उसमें कहा है कि एमएसएमई ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए इन ऑल इंडिया जीडीपी, वो जो आंकड़े दिए हैं 2019-20 में 30.5% था, 20-21 में 27.3% था, 21-22 में 29.1। इट मीन्स अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हुआ तो कोरोना की सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 19-20 में होनी चाहिए, तब तो 30.5% था। कोरोना की इम्पैक्ट उसके बाद नहीं हो सकती है 21 में 22 में, तो वो कम क्यों हुआ? और आप सिर्फ बड़े उद्योग की चिंता करेंगे तो लघु उद्योग का क्या होगा? धन्यवाद। प्लीज प्लीज। भाई साहब, लघु उद्योग की संख्या जो बंद हुई वो फिर सभी चालू हो गए, चिंता की बात नहीं, फिर सभी चाहिए। इसलिए उत्पादन में जो जीएसटी आपको पढ़ के बताया, आज भी 5.3 लाख करोड़ है, कम नहीं हुआ है। जो पहले 19-20 में था 5 लाख करोड़, वो अभी बढ़ गए है। और इसमें मैं कहता हूँ 20-21 में 27.2 वो कोरोना का कार्यकाल है, कोरोना का कार्यकाल। और जब भी कामगार फैक्ट्री छोड़ के भागे थे, छोड़ के गए थे, तो अभी फैक्ट्रियां चालू होने के बाद अभी 21-22 में वो प्रमाण जीडीपी का बढ़ गया है। और इसलिए बढ़ने के कारण अभी पूर्ववत परिस्थिति निर्माण देश में हुई है एमएसएमई के बारे में। Labor welfare and employee wellness in the MSME sector. धन्यवाद। Sorry, repeat. प्लीज प्लीज। माननीय कार्तिकेय शर्मा जी सवाल पूछें। I would like to ask the Honorable Minister about the steps taken to ensure labor welfare and the employee wellness in the MSME sector. Thank you.
सभापति महोदय, काफ़ी कदम उठाकर ये इंडस्ट्री को मैं फिर से चालू करने की कोशिश हुई। मैं सभी आपकी अनुमति हो तो मैं सभी पढ़ के बताता हूँ। आप ब्रीफली बता दें, ब्रीफली बताएं। निर्यात में एमएसएमई के हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम तहत व्यवसाय की सुगमता और संवर्धन और क्रेडिट की उपलब्धता में सुधार के विभिन्न पहल। माननीय मंत्री जी, प्लीज माननीय मंत्री जी, आप जो सवाल है कि प्लीज आप सवाल ये है कि वर्कर्स के वेलनेस के लिए, वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? क्या के लिए? वर्कर्स के वेलनेस और वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? माननीय सदस्यगण प्लीज। नहीं, आप सुनिए प्लीज सर, प्लीज सर, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ। वो उद्यमी चालू होने से वर्कर का प्रॉब्लम हल होगा। ऐसा नहीं विदाउट फैक्ट्री बंद रहेगी तो हल होगा ये प्रॉब्लम। वर्कर्स के वेलनेस वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है, आप माननीय सदस्य को बुलाकर बता देंगे प्लीज। ठीक, प्लीज बैठ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 19, श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार, नॉट प्रेजेंट। अच्छा, माननीय मंत्री जी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सप्लीमेंट्री। as per section 90 of the AP Reorganization Act 2014. It's question number 19. Let him ask, please. Do not interfere, Mr. Gokhale. Please take your seat. Take your seat. Please. Please, I will come to that. Yes, it's good. I'll come. Please. I'll come back. Please. Sir, as per section 90 AP Reorganization Act 2014, Polavaram irrigation project was declared as a national project. It will come back. Please, I'll come to 18. After this, I'll come to 18. Please. Please. Sir, from 2020 till today, no progress has taken place. And as per Polavaram project, how much time to complete the project it will take? Thank you. माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भारत सरकार ने बनाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन मैं माननीय सदस्य और सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसके निर्माण की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश की सरकार के पास में। निर्माण का काम करना, उस पर पहले खर्च करना, ये सारी जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश सरकार की है। भारत सरकार मात्र उसकी वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराती है। कार्य प्रगति पर है। और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो काम अब तक हुआ है, उस काम के अनुरूप अलग अलग जो 8 तरह के कंपोनेंट्स इसमें हैं, उन सब की जानकारी अब माननीय सदस्य को मैं व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दूं। One second. Said, honorable members, we will take question number 18, not an occasion to be agitated. Sometimes human error. Sir, one second. Supplementary hogi, sir. Question number 19, second supplementary. Sir, I'll come to question number 18. Would you please take your seat?
Would you please take your seat now? Ma'am, please, 1 second. It's a very good point that a question should not be skipped. Is there anyone in the House who has not heard once? We are here to make immediate rectifications. Question number 18 will be taken for sure. Let us first go through question number 19. Second supplementary, sir. Human error. 1 second. It was just it slipped through the computer. It went ahead. And I corrected it that I will come to 18. Please. I already have spoken, madam. Please. Please, ma'am, these will not go on record. Ma'am, your observations will not go on record. I'm so sorry. These are intemperate observations. Sorry, absolutely. Please, absolutely, no. House. कौन सी second supplementary? हो गई second supplementary श्री कनक मेडला. Sir, second supplementary. Supplementary, sir. Sir, the Honorable Minister has stated some... I'll come to that, ma'am. Nothing will go on record. Progress of the work is going on. But, sir, how much progress from 2022 till today taken place? How much is the amount invested for that purpose till today? Honorable Minister. Please. Madam, please, no cross talks. No, please. No, nothing will go on record. Nothing will go on record. Yes, Honorable Minister, please continue. Only what the Honorable Minister say will go on record. जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, Honorable Minister. और मैंने कुछ पहले सप्लीमेंट्री के प्रत्युत्तर में भी निवेदन किया था कि पहले खर्च करने की जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी टू मेक एक्सपेंडिचर्स is the onus of state government, and after spending the money on different components of construction, the state government raises the bill with PPAP, Polavaram Project Authority, and then it comes to the government of India. But for the sake of answering the question which has been asked by Honorable Member, I wish to submit that in 2021, 2,234 crores have been released to PPA, and the same amount has been released to Government of Andhra Pradesh as reimbursement by PPA. In 2021-22, 751 Mr. crores Shakti and Singh Gohil, 47 crores take your seat. Dipender Hooda, you are getting used to creating chaos unnecessarily. 1,671.323 crores have been released to PPA, and further PPA released the same amount to Government of Andhra Pradesh. Take your seat. In current financial year, What word are you using? 23-24, so far, No. I am surprised. 7 crore rupees have been You are released using these kind of words in this by house. Government of India to Polavaram These are Project expense. Authority, Expense. and a similar amount Sorry. has been transferred by Take your seat. Polavaram I'll come Project back. Authority. I'll come back to Government you of after Andhra this Pradesh. question is over. Please take your seat. I'll come back to you. I'll come back. Take your seat. Nothing will go on record. You are not her spokesperson. She herself is a very senior member. No, you don't have to support her. She's a very senior member. Sorry. Please continue. Honorable Minister. Doctor, 1 second. Take your seat. Take your. Would you take your seat? Should I name you? Mr. Dipender Hooda, I will name you. Please. No. What do you mean by it? Sit down. Honorable members, please take your seat. Rao Sahab, on your seat.
Take your seat. Take your seat. Take your seat. I have already indicated that after I am through with question number 19, I will take up this issue. When we will take up this issue, we will take up this issue in a composed manner, try to find a way out. Jaya Bachchan ji is a very senior member. If she has a sentiment that is bound to be very serious with me, let me go through question number 19, then I'll come to question number 18 and the concerns that are being raised. Please. Dr. C.M. Ramesh. Sir, I have gone through the answer. This diaphragm wall was damaged in 2020. Now we are in 2024. Have you not understood me? I can't help you. Sorry. Please continue. This is very important for Andhra Pradesh. When it will be completed, when the diaphragm wall details will come, only the diaphragm wall damage since last 4 years. The 4 years the project is stalled, sir. When it will be completed, when the diaphragm wall details, national agency, international agency, when they will give? Honorable Minister. जो माननीय सदस्य ने कहा है कि डायफ्राम वॉल 2020 के बाढ़ के समय में डैमेज हुई थी, लेकिन जब उस पर काम करना प्रारंभ किया था और ये विषय संज्ञान में आया, उसके बाद भारत सरकार के नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के जो है विशेषज्ञों ने जाकर के वहाँ इस विषय पर पूरा अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। 2 तरह के ऑल्टरनेटिव्स उसमें दिए गए थे कि एक जो एग्जिस्टिंग वॉल है उसी को रिपेयर किया जाए और दूसरा जो था कि नई डायफ्राम वॉल बनाया जाए, क्योंकि डायफ्राम वॉल किसी भी बांध की स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के जितनी इंपॉर्टेंट होती है। इस विषय में कहीं भी कोई, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी लिख करके दिया है कि जो कंसेशनर है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अगर इसको रिपेयर किया जाए तो ये बांध के भविष्य को लेकर के उचित होगा या नहीं। हमने इंटरनेशनल एजेंसीज को हायर किया है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की है। उसकी रिपोर्ट आने के साथ ही इस दिशा में, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है और इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी बांध के भविष्य को लेकर के एक जो है समस्या हो सकती है, इसलिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, is it true that the World Bank has come with a report that has indicated that by 2030 per capita water availability in India will shrink to half and push the country into water scarce category from the existing water stress category? Sir, in Marathwada, in Maharashtra, this is a water scarce area, and what measures are proposed to augment the regulation and storage capacity of the Jaikwadi Dam to alleviate the water scarcity in the Marathwada region and bridge its divide with the North Maharashtra? Honorable Minister. महोदय, हालांकि मूल प्रश्न पोलावरम से संबंधित था, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आज़ादी के समय में जितनी थी उससे घट करके निश्चित रूप से कम हुई और उसके अनेक कारण हैं। वर्ल्ड बैंक की जिस रिपोर्ट की माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उनके उसमें कितना तथ्य और उन्होंने किन विषयों के आधार पर या किस अध्ययन के आधार पर वो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मैं उसके विषय में नहीं जाना चाहता विस्तार से, लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जो है 2030 तक या 2050 तक भी जिस तरह की चिंताजनक स्थिति की कल्पना माननीय सदस्य ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर की है, वैसी स्थिति नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टिकोण से कि देश की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पानी की उपलब्धता को हम सुनिश्चित कर सकें और आने वाले समय में भारत जिस तरह से 2047 तक विकसित होने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, उसमें पानी की आपूर्ति कहीं बाधा न बने, इस दृष्टिकोण से पानी का विषय जो अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग विभागों में जो है निर्णय किया जाता था, उसको एक साथ मंत्रालय बनाया गया और पानी के परिप्रेक्ष्य में जितने तरह के जो है कंपोनेंट्स हैं उन सब पर भारत सरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग दिशा में काम कर रही है। उसमें अनेक उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। धरातल पर पानी रोकने के दृष्टिकोण से भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और भारत की सबसे ज़्यादा निर्भरता, विश्व में सबसे ज़्यादा निर्भरता जो है वो भूगर्भ के जल पर है। और मैं माननीय सदस्य के लिए और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह के एफर्ट्स पिछले
10 साल में लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार बार इस विषय पर चर्चा की गई। देश में इस तरह का वायुमंडल बना, पानी के रिचार्ज को लेकर के जो वायुमंडल बना, उसके चलते हुए मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि जो भूगर्भ के जल का स्तर निरंतर देश में गिर रहा था, हमने हर साल का अध्ययन करना प्रारंभ किया है। पिछले 4 साल से पहले वो स्थिर हुआ था और अब अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। जहां पानी की कमी हो रही थी हर साल, वहां अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में आखिरी रिपोर्ट आने तक, पिछले साल की रिपोर्ट में भी और इस वर्ष की रिपोर्ट में भी अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। हमारे सेफर ब्लॉक्स और ओसीएस कैटेगरी के जितने ब्लॉक्स थे उन सब में इंप्रूवमेंट हुआ है और 10% से ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे ओसीएस कैटेगरी से बाहर निकल करके सेफर जोन्स में आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यह संपूर्ण सफलता है, लेकिन जिस दिशा में हमने प्रयत्न किए हैं, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उसके परिणाम स्वरूप उपलब्धता, भूगर्भ के जल की उपलब्धता की दिशा में हम सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ पाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से सप्लाई साइड मैनेजमेंट के साथ साथ में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर पहली बार अटल भूजल योजना के तहत काम करना प्रारंभ किया है, उसके परिणाम भी अब दिखाई देने लगे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये, क्योंकि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकारों का विषय है, राज्य सरकारों को इस पर और अधिक गंभीरता और प्राथमिकता के साथ में काम करना पड़ेगा। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसके लिए सबसे बड़े उपभोगकर्ता कृषि क्षेत्र में हम पानी के उपभोग को किस तरह से कम कर सकते हैं, इस पर राज्य सरकारों को समन्वित दृष्टिकोण से प्रयास करना पड़ेगा। श्री GVL Narasimha Rao. Thank you, Chairman, sir. Sir, this question relates to Polavaram irrigation project in Andhra Pradesh. And a number of irrigation projects in Andhra Pradesh have been languishing, and what projects which state government was required to undertake have not been done for 60 years. I'd like to congratulate and compliment the government and Honorable Prime Minister Modi ji for sanctioning huge amount of funds for Polavaram irrigation project as a central project, national project. I'd like to ask the Honorable Minister the amount of money that has been released so far under Polavaram irrigation project, and I have requested in the past to name it as Pradhan Mantri Modi Polavaram irrigation project, because this project, every rupee on this project is being spent by the central government. So I would like the Honorable Minister to respond to my appeal to name it as Pradhan Mantri Polavaram irrigation project, and whether central government will take over the construction of the project, because the state government has not been moving fast Honorable enough Minister. in completion of the project. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि अब तक भारत सरकार ने इस पर कितना खर्च किया है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 2014-15 में जब इसे भारत सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी थी, तब से लेकर के अब तक 15,146 करोड़ रुपए की वित्तीय एलोकेशन भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में दे चुका है, जो आंध्र प्रदेश सरकार को भारत सरकार की तरफ से दिया गया। Honorable members, I'll now take question number 18, which could not be taken on account of certain technical situations. But I would like to reassert that we have in Harivansh ji a man of impeccable credentials, a man of great integrity. Human failure is something which is associated with all of us. If it has hurt someone, I take the responsibility, but I will indicate to all of you, think within, we could not have had a deputy chairperson with more sterling qualities, independence more than I have, and respect for all the members. It was slightly hurtful for me that some reflections came to be made about such a person. If there are some hard feelings, we need to forget about it. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde, question number 18. All right. I'll give floor to Jaya Bachchan ji. And I would request Jaya Bachchan ji. Thank you very much. Jaya ji, 1 second. You are a very senior member. Ji. Even otherwise in the country, whatever you say is looked up to and well regarded.
So you will cheer us, all of us. अच्छा सर मुझे बोलने तो दीजिए, आप ही बोले. And I am sure a great actor like you must have taken money retakes also. सर Money retakes. सर डेप्यूटी चेयरपर्सन के लिए बहुत रिगार्ड है और आज से नहीं बरसों से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ. उनके बारे में हमने कुछ नहीं कहा. ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है. आप कहेंगे हम बैठ जाएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन कहेंगे हम बैठ जाएंगे, मगर कोई और सदस्य हाथ हिला के अगर हमें बोले तो हम नहीं मानेंगे. दिस इज आवर राइट टू क्वेश्चन. यू टेल अस कि ये सवाल नहीं ले सकते. देयर आर प्रॉब्लम्स, वी विल टेक इट लेटर. वी अंडरस्टैंड, वी आर नॉट स्कूल चिल्ड्रन, बट ट्रीट अस रिस्पेक्टफुली. Point made. Thank you. Honorable members, I think no one will disagree with the sentiment. The House is under the control of rules and the person presiding. And I am sure everyone will follow. This is a good manner, this side or that side. The members must not exchange inter-se. Everything has to be through the chair. Question number 18, Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Not present. Honorable Minister. The table of the House. Supplementary, Saket Gokhale. Thank you, sir. So my question is, in the interim budget 2024 that was presented by the Honorable Finance Minister, allocation for the UDAN scheme has been slashed by 60%, 60%. Of the 1,300 valid routes allotted under UDAN 5.0, 501 routes have been cancelled already. So my question is, sir, why has the budget for UDAN been reduced by 60% from 1,244 crores to just 850 crores? And number two, what steps are being taken to revive the 501 cancelled routes which are allocated under UDAN 5.0? Honorable Minister. Question is on budget, but let me clarify. Where UDAN scheme is concerned, 529 routes are already operational. No route has been cancelled. There is a system in place by which the routes are allocated. And I'll state the system is as follows. There is a valid bidding that is done. Airlines are called to bid for a particular route. If an airline bids for a particular route, that route is allocated to it. Based on this, an underserved or unserved airport is made up in terms of whatever facilities are required by the AAI so that the flights can take place from that particular airport. Now, if that airline walks away from that route, the bidding takes place again in the next round of bidding. So there is no route which has been allocated, no route which has been cancelled. It all depends on bidding and the aircraft. Sir, will you please... Not a good... Please, let the minister complete. What is this? Mr. Gokhale, 1 second. Is it according to rules? You don't hear the minister out? Please. You must maintain some decorum. Let the minister complete. If you still have an issue, rules provide for a mechanism. Please. Honorable Minister. And there is no pre-allotment of routes anywhere. I'd like to underline that aspect. The airlines, if they walk away from a particular route, after a particular period of time, that route is bid again. An airline has 2 years to start a particular route. If it doesn't start a route, it goes into the next bidding. And therefore, that route remains unutilized till the time the next bidding takes place. Vandana Chauhan, please. Vandana Chauhan. Sir. Vandana Chauhan. Will you first take your seat? First, 1 second. Will you first take your seat? No, I am saying take your seat. First you take your seat. Is it the way to conduct proceedings? Sit down first. Sit down first and listen to me. If a minister responds to a question and if an honorable member, for one reason or the other, is not satisfied, that could be on several grounds. One, not understanding the perception of the minister, or the minister not responding adequately. In both the situations,
It is not the mechanism to jump on the chair. One second. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. You still don't understand. I'm sure senior leaders of your party will persuade you to maintain decorum. Vandana Chauhan. Thank you, sir. Sir, every airport is supposed to have proper maintenance and service delivery for its commuters, sir. I would like to raise the question, particularly in the case of Pune Airport, which I've raised several times in this House. So the Pune Airport has been seeing deteriorating quality, and the rank has been slipping down lower and lower. Now it is 17th position in a survey conducted by the Airport Council International. So I would like to ask the Honorable Minister, what are the steps being taken for such slipping down ranking airports, and particularly for the Pune Airport, which is still to see the light Honorable of the day, Minister. actually. We are still using the Air Force Airport. Overall question does not pertain to maintenance of airports and all other things. Nevertheless, I noted this point, and I'll convey to the member as to what action has been taken. Shri Rajiv Shukla. जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र राज्य में शिरडी नामक बहुत जो है धार्मिक स्थल है, जहाँ बहुत लोग जाते हैं, शनि सिंगनापुर के लिए भी जाते हैं। वहाँ की अभी तक जो है जो एयर सुविधा है, पहले तो थी नहीं, अब कुछ एयरपोर्ट बनाया, बहुत कम फ्लाइट की सुविधा है, जबकि लाखों लोग उत्तर भारत से वहाँ जाते हैं। तो शिरडी के लिए वो क्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, कृपया Honorable Minister करेंगे। चेयरमैन सर, दी शिरडी का एयरपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र सरकार के नीचे है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नीचे नहीं है। और जो भी फ्लाइट जितनी भी बनती हैं किसी भी एयरपोर्ट के लिए या किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो एयरलाइंस के ऊपर निर्भर करता है। एयरलाइंस कहाँ से कहाँ पर ले जाना चाहते हैं, अपने रूट को देखते हुए, अपने हवाई जहाज़ों को देखते हुए, अपने खर्चे को देखते हुए, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा कि मेंबर ने कहा है, उसके लिए अलग अलग एयरलाइंस को बोला जाएगा। अगर वो इसके अंदर और इजाफा करना चाहते हैं नंबर ऑफ फ्लाइट्स के अंदर, उनको बता दिया जाए। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। सर, मेरा सवाल पुणे से जुड़ा हुआ है और शिरडी को लेकर जुड़ा हुआ है। पुणे के ओल्ड एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल 5 महीने से तैयार है, पर उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, तो इसमें ये डिले क्यों हो रहा है? दूसरी बात, हमारी जब सरकार थी तब हमने एक नई बिल्डिंग प्रपोज की थी, उसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया। क्योंकि ये महाराष्ट्र का ही सवाल है, इसलिए महाराष्ट्र तक ही सीमित रख रही हूँ सर। शिरडी का भी अभी कहा गया कि वहाँ योर सप्लीमेंट्री सर, ये पुणे और शिरडी का कहा गया राज्य सरकार के अंतर्गत है, तो राज्य सरकार की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? सिविल एविएशन उनसे सवाल नहीं पूछ सकता? योर सप्लीमेंट्री सर, supplementary is this. Why is the new airport terminal all right, Honorable Minister. inaugurated? Why is it waiting for an inauguration for 5 months? पुणे के इनॉग्रेशन के लिए 5 महीने का इंतजार नहीं हो रहा है, वहां पर काम चल रहा है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, श्री सुजीत कुमार। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, उत्तर सभापति पर रख दिया गया है। सप्लीमेंट्री 1, श्री सुजीत कुमार। सर, टेक फॉर ट्राइबल करके एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव एमएसएमई मिनिस्ट्री ट्राइफेड के कोलैबोरेशन में शुरू किया था। सर, ये इनिशिएटिव जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका आईटी स्किल, उनका बिजनेस स्किल्स और सॉफ्ट स्किल बढ़ाने के लिए सर ये शुरू किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, ये इनिशिएटिव का प्रोग्रेस क्या हुआ है, कितने ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स इससे लाभ उठा चुके हैं और इसको आगे कितने सालों तक चलाएंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, विशेष रूप से इन्होंने जो बात की है बैकवर्ड उसके लिए एसटी के लिए, ये जितनी भी योजनाएं एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही हैं पूरे देश के लिए चलाई जा रही हैं, और विशेष रूप से पीएमईजीपी जो योजना है उस योजना के माध्यम से हम लोग जो छोटे छोटे लोग हैं उनकी मदद करते हैं। उस योजना के माध्यम से अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से हम लोग देखते हैं तो भारत में पूरे देश में जो हम लोगों ने सब्सिडी अगर गरीबों को दी है तो 2.4 हज़ार करोड़ रुपए दी है, और इसमें जो योजनाएं हैं वो करीब 65,000 योजनाएं हैं जिनमें हम लोगों ने मदद की है। और उसी तरीके से रोजगार अगर दिया है तो 5,52,000
लोगों को रोजगार दिया गया है। वो विशेष रूप से जो पीएमईजीपी योजना है सर, ये ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए इन दोनों में सब्सिडी का अलग अलग प्रावधान किया गया है। अगर शहरी कोई एरिया है और जनरल लोग हैं तो उसे 15% की सब्सिडी दी जाती है, और यदि वो ग्रामीण में है तो 25% की सब्सिडी दी जाती है। यदि कोई SC/ST है, यदि वो शहर में रहता है तो सर उसे 25% की सब्सिडी दी जाती है, और यदि वही ग्रामीण में रहता है तो उसे 35% की सब्सिडी दी जाती है। इस तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन पूरे गांव में, पूरे देश में किया जा रहा है। और इन्होंने विशेष रूप से जो पूछा है, आज हम उड़ीसा के बारे में जो हम लोग यहाँ सब्सिडी लेके आए हैं, करीब 69 करोड़ रुपए हम लोगों ने उड़ीसा में सब्सिडी दी है। और विशेष रूप से इस परियोजना में करीब 2100 परियोजनाओं को हम लोगों ने क्रियान्वित किया है, और करीब 17,500 लोगों को इसमें रोजगार मिला है। सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल पूछा था सुजीत कुमार। सर, मैंने सवाल पूछा था टेक फॉर ट्राइबल्स जो स्कीम है उसके बारे में, पीएमईजी के बारे में नहीं पूछा था सर, लेकिन मैं उनसे बाद में आंसर ले लूँगा। सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है सर, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का एक रिपोर्ट आया था 2022 में। उस रिपोर्ट में सर दर्शाया गया है कि जो MSMEs हैं उनका सर क्रेडिट गैप है 20 से 25 लाख करोड़ रुपया। और सर ये तो जनरल सर MSMEs के लिए, ट्राइबल लेड MSMEs या ट्राइबल लेड एंटरप्रेन्योर्स, इनका क्रेडिट गैप सर क्लोज टू 90% है। तो सर मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी सर अवेल करने के लिए क्या क्या स्कीम सर? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से ट्राइबल जो हमारे लोग हैं उनकी मदद के लिए, और पूरे देश में जो हमारी MSME की योजनाएं हैं वो पूरे सभी के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से हम लोग देखें तो आज हम लोग TC बना रहे हैं, पूरे देश भर में टेक्निकल सेंटर बना रहे हैं। वो करीब 53 टेक्निकल सेंटर हैं, वो 20 नए बना रहे हैं, जिससे 125 करोड़ की लागत से पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग देखें एक्सटेंशन सेंटर बना रहे हैं, 100 करीब वो 10 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 6000 करोड़ का बजट रखा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारी विश्वकर्मा योजना है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को लागू की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लागू की है, उसके लिए भी गरीबों के लिए है। ये उन गरीबों के लिए है जो छोटे छोटे लोग हैं और 18 प्रकार के ट्रेड में जो घर बैठे काम करते हैं, उनके लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो करीब 88 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और आगे भी ये रजिस्ट्रेशन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी हमारी सारी चीज़ें हैं, EDP योजना, स्फूर्ति योजना, SC/ST हब, ये सब गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उनके लिए ये काम कर रहा है। डॉक्टर शांतनु सेन। Sir, through you, my supplementary question on MSME to our respected minister is, though as per national record, West Bengal ranks second in MSME, where we are having nearly 90 lakhs of MSMEs and we have created nearly 136 lakhs of employment through that. My question is, instead of getting proper cooperation, these non-BJP ruled states, why they are being looked after with stepmotherly attitudes? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये योजनाएं पूरे देश में चलाई जा रही हैं। जो भी योजनाएं हों, चाहे हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, चाहे हमारी जो प्रधानमंत्री अभी विश्वकर्मा योजना हो, और जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजना का क्रियान्वयन बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। इन्होंने अपने बात की है, वेस्ट बंगाल की बात की है, विशेष रूप से वहाँ जितने भी हैं उन्हें सारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में वेस्ट बंगाल में PMEGP के अंतर्गत जो लाभ इन्हें मिल रहा है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, चूँकि पश्चिम माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न जो है ओडिशा का है, ये डिटेल सब मांगा है ओडिशा का।
एमएसएमई के बारे में अलग अलग स्कीम का इन्होंने डिटेल मांगा है। ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, तो बंगाल के लिए वो अलग प्रश्न पूछे, हम डिटेल में इसके बारे में आंसर देंगे। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, given the initial challenges faced by MSMEs in setting up digital assets and ensuring cyber security, it is essential for them to enhance understanding and integration of cyber security measures. MSMEs, sir, are facing capital constraints, struggle with a shaky technology base, hindering growth and recognition. In addressing these issues, what measures does the ministry propose to make MSMEs more reliant on technology and overcome growth bottlenecks and add to the economy in full potential? Question hour over. Bills for introduction. Further discussion on the motion moved by Mrs. Kavita Patidar on 2nd February 2024 and the amendments thereto. Sri Swendu Shekhar Ray. Thank you, sir. At the outset, I would like to respectfully submit that in the address to the both houses of Parliament by the Honorable President of India, I have found after Ek Bharat, Shrestha Bharat and Atmanirbhar Bharat some new coins like Viksit Bharat used at least 6 times and Amrit expressed for about 10 times, such as Azadi Ka Amrit Kal, Amrit Kal of our independence, Amrit Kalash, Amrit Sarovars, Amrit Mahotsav twice, Amrit Batikas, Amrit Bharat Station, Amrit Bharat Train, Amrit Generation. So, चारों ओर सिर्फ अमृत ही अमृत है। जो लोग ये अमृत पी रहा है, उनका बात छोड़ दीजिए। जो लोग हलाहल पी रहे हैं, जो लोग हलाहल यानी कि जहर पी रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सोच की बात है कि ये अमृत लोक में बास कर रहे हैं, ये अमृत लोक में जीवित है या दूसरा कोई परलोक में तो नहीं चले गए। अमृत लोक सुनते सुनते उनका परलोक का याद आ रहा है। सर, it is a make-believe situation. How it has been coined like Amrit Kal everywhere, every sphere of life of the society, I do not understand. Anyway, it's a prerogative of the government. At page 3 of the pointed booklet, it is said, quote, last year my government has given government jobs to lakhs of youth in mission mode, unquote. So it is not in the distant past we heard about that 2 crores of jobs will be given to jobless per year. And by this time, the number ought to have been 20 crores because this government has already spent 10 years in power. Now the question is, when it is said that lakhs of jobs, the natural question comes as how many lakhs? There is no mention about this. How many jobless were there? And out of how many jobless were given, how many lakhs of jobless were given jobs? And how many remaining
These are the pertinent questions which have not been addressed by the Honorable President, which has a speech which has been prepared by this government. So, should we take it as another Jumla? Yes. Sir, it is said in page 4 of this speech that government enacted important legislations with the cooperation of all parliamentarians, including that draconian law, Nyaya Sanghita, which according to me is a Nyaya Sanghita. Anyway, but this claim that all parliamentarians supported the bills when it was introduced and discussed, this is not true. This is incorrect information. Why? And as a keen reader of history, it reminds me to a situation in the year 1933 when Hitler in Germany, he brought one enabling act which will enable his cabinet to legislate instead of the parliament, and for which no presidential assent will be required. And what happened? The law was passed. It is called enabling law. It was passed in Hitler's regime in Germany in 1933 after sending 106 parliamentarians to concentration camp. Thereafter, the bill was passed. Here we have seen that after suspension of 146 parliamentarians, these bills were passed. And the number 146, suspension of 146 parliamentarians in Indian Parliament, is the highest ever in the history of parliamentary democracy around the world so far. Therefore, the statement made in the Honorable President's speech, I should not say that it is far from truth, but it is incorrect and purposefully given by the government to create a confusion in the minds of the people. Sir, in page 6, paragraph 9 of the speech, Niti Aayog claimed that about 25 crore countrymen have been lifted out of poverty in the last 1 decade. That is during this Amrit Kal. My question is that out of how many poverty-ridden people 25 crore have been lifted out of poverty as claimed by Niti Aayog? What was the exact number of poverty-ridden people when they came to power in 2014? And out of which, when they say the 25 crore have been lifted out, how many remaining? These questions have not been addressed. Therefore, all these are half-truths. I'm sorry to say. In this way, a series of lofty claims have been made in this report card of the government to carry out disinformation campaign on the eve of the Lok Sabha election. Reality is altogether different, sir. Madam, I would like to refer to Article 39 of the Constitution, Clause B. It says categorically, it is under the directive principles of state policy. The state shall, in particular, direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. And Clause C says, you are aware, madam, very much. Clause C says that the operation of the economic system
does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment, unquote. Now, what is happening? What is the scenario of Indian economy? Inequality has gone to what extent? I may kindly be permitted to refer a few points from the Oxfam report 2023, which was released in January this year, 15 January this year. Government does not accept that report, but we put very much reliance on this report because of the practical situation in the country. Number one, the richest 1% in India owns more than 40% of the country's total wealth. Number two, the bottom half of the population shares just 3% of the national wealth. Number three, Indian government recently cut taxes on corporation while introducing a centralized tax system, that is GST, that led to increased indirect taxation of households. A one-time 2% tax on billionaires' entire wealth would support to rupees 40,423 crore for malnourished individuals for the next 2 years, and you are giving concessions to the corporates. Next, female workers earned only 63 paisa for every 1 rupee a male worker earned. Scheduled caste and rural workers earn significantly less than advantaged social groups. This is very much pertinent, madam. This point, billionaires in India witnessed a 121% surge in wealth since the pandemic began. Until November 2022, this is going on, the surge of their wealth. And during pandemic, it was 121% surge. One particular Indian billionaire, whose portfolio includes energy companies, has seen his wealth soar by 46% in 2022. 64% of the total GST came from the bottom 50% of the population in 21-22. Total number of billionaires in India increased from 102 in 2020 to 166 in 2022. India's 100 richest combined wealth reached $660 billion, that is, in Indian currency, 54.12 lakh crore. This is the economic inequality which must be resisted as per the dictum of the Constitution as enshrined in Article 39 B and C. In India, 72 TV channels reaching over 800 million people are owned by one particular billionaire. In India, a one-off tax on unrealized gains from 2017 till 2021 from just one billionaire would have raised $21.95 billion, enough to employ more than 5 million Indian primary school teachers for a year. Such a huge economic inequality, and we are chanting the mantra of Amrit Kal, Amrit Mahotsav, and Amrit, Amrit, Amrit. Sir, madam, forget about Oxfam report, because government does not believe in that report. But UNDP report in regard to Asia Pacific Human Development Report of 2024, released on 15th of January this year, what does it say? Only 3-4 bullet points. In India, income distribution has become more skewed, with the top 10% of the population getting 57% of national income, UNDP report. The top 1% get 22% of the national income, indicating one of the most unequal income distribution. Top 10% of the population control 65% of the nation's total wealth, highlighting significant wealth inequality. Growing evidence
of a strong rise in wealth inequality, particularly in the post-COVID period. Finally, from a UNDP report, women constitute only 23% of the labor force, and certain groups like informal workers and interstate migrants are at greater risk of falling back into poverty. My submission is that unless this huge inequality is removed on war footing, one cannot rule out the possibility of social unrest or upheaval. Now, the rural wage rates and inequality. Agricultural labor real wage rate increased by 4.6%. The real wage rates of non-agricultural and construction workers are lower at the end of the period, that is 2014 till 2022. Non-agricultural workers form the majority, and they are 68.9% in all agricultural laborers, are they among the employed in rural India. For approximately 35% of India's workforce, real wages have not grown since 2014. For long 10 years in Amrit Kal, for 10 years of Amrit Kal, no rise in the real wages of 35% of India's workforce. Even in sectors with an increase in real wage rates, the growth rate is overshadowed by the overall per capita income growth. So this mismatch must be looked into by the government. There is no murmur, no whisper about how this problem will be solved by the government in the Honorable President's speech. Now, after even the Labour Bureau report. What is Labour Bureau report? Labour Bureau report, it says, Labour Bureau report, 3 and 4, sorry, I have already mentioned about this workforce, so I am not going to repeat the Labour Bureau report. Now the question of federalism. The question of federalism. When this government came to power, everybody listened again and again, repeatedly, that this government believed in cooperative federalism. Cooperative federalism. Now it is not being mentioned because it has already become non-cooperative federalism. The glaring example of federalism is that every state which is ruled by opposition parties, their leaders are being hounded by the central agencies. Never in the history of India this happened. Double engine government we require. Therefore, these the opposition ruled governments are to be dislodged by hook or crook. And this is going on every day. Even a Dalit chief minister has not been spared. The one nation, one election call comes from where? Is it in our constitution? No. Has it been recommended by the election commission? No. And surprisingly, the retired president of India has been appointed to head a committee, and that committee is now started discussing on war footing that it is to be implemented as soon as possible. Our Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, has already written to the committee, and she is also coming to attend the meeting tomorrow. That nothing will be accepted by our state at least on this issue. I sincerely believe the other opposition states, they will also not accept,
Because this is going to be a serious, there will be serious ramifications, serious consequences. It is draconian. Our constitutional scheme is altogether different. We are a parliamentary democracy, not a presidential form of government like USA. But this will open the door for presidential form of government, I apprehend. That is why I totally oppose to this idea of one nation, one election. There is a consistent tendency to erode the fiscal and economic policy space of space government. Resources transferred to states have been subject to regressive conditions, and a significant portion is kept out of the Finance Commission's ambit, allowing central control over their issue. Why this government is not following the recommendations of Sarkaria Commission? And what about the second commission, Unchi Commission, on center-state relations? In 2010, Justice Punchi Commission submitted its recommendation to the then government, and we are in 24. 14 years elapsed. No murmur about that recommendations. 14 years are not enough to finalize the recommendations of the center-state relations recommended by the Punchi Commission. Why the government is avoiding? Because the constitutional heads of the states, their heads will be rolled down if the Commission's recommendations are given effect to. Because the Punchi Commission has categorically stated, while appointing governors, the state governments must be consulted and their concurrence is must. They must not act as agents of the central government as it is happening now. Madam, rampant misuse of central agencies I have already mentioned. Now my driving points to my state about how this federalism is being respected. Only 1 or 2 points. 4 minutes. Center has resorted to fiscal terrorism in Bengal. Fiscal terrorism going on in our state by the center. How many central teams were sent to Bengal? More than 100. 156 teams were sent to Bengal to look into the implementation of the centrally sponsored schemes. And wherever the deficiencies or defects were found, each and every deficiency and defects were removed, intimated, even though in the entire country, West Bengal has been singled out and all dues to the extent of 1,16,000 crores, central government has stopped. It is economic blockade. They want to kill the poor people. Terrorism. It is fiscal terrorism. That is why. Because they thought that by suspending the release of the fund, it will have good effect for them in the ensuing election. No. People have understood what is what. Now, therefore, our Honorable Chief Minister on the other day, 3rd February, she announced the state government from its own fund will give the dues of the workers, 21 lakh workers who could not get the wages. They will be paid out of state funds. We are not depending upon the central funds. But we'll definitely take out the issue to the people, and the people of Bengal will give a befitting reply for such fiscal anarchy. Yes. There are other points also, Manreka, but my time is limited. Almost only 2 minutes. Yes. So to conclude, I would like to respond in reference to paragraph 37 of the President's speech. I don't like to mention, because paucity of time, what he said there, but everybody knows that is the concluding paragraph. I would like to quote from Rabindranath Tagore, a few lines from his Bengali poem, written 123 years back,
The name of the poem is Deen Dan. Deen means poor, Dan means gift. Quote, few lines. There is no God in that temple, said the saint. The king was enraged. No God? Oh, aren't you speaking like an atheist? On that throne, studded with priceless gems, beams a golden idol, and yet you proclaim that it is empty. It is not empty. Rather, it is full of royal pride. You have bestowed yourself, O king, not the God of this world, remarked the saint. And it continued, in the very year in which 20 million of your subjects were struck by a terrible drought, the desperate masses without any food or shelter came begging at your door crying for help, only to be turned away. They were forced to take refuge in forest caves, camping under roadside foliages, derelict old temples, and in that very year, when you spent 2 million gold coins to build that grand temple of yours, that is the day God left that temple of yours and joined the poor. Your mundane temple is hollow. It is just a bubble of wealth and pride. The enraged king howled, "Oh, you sham cretin of a person, leave my kingdom this instant." The saint replied very calmly, "To the very place to which you have exiled the divine, vanish now the devout too." Thank you, madam. Before we go to the next speaker, honorable members, the discussion on motion of thanks on the President's address will continue after the introduction of the bills. We now take the bill, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. Shri Arjun Munda to move for leave to introduce the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित किया जाए। We now take the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. Shri Arjun Munda to move for leave to introduce the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. उड़ीसा राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Arjun Munda ji may please introduce the bill. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उड़ीसा राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित किया जाए। Yes. Another bill for introduction.
Shri Ashwini Kumar Chaubeji to move for leave to introduce the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का एक और संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. No, I did hear the ayes. I request the Honorable Minister to introduce the bill. माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरस्कृत करता हूं। Honorable members, we now resume the discussion on motion of thanks on the President's address. Shri Tiruchi Shivaji. I think you have 29 Thank minutes. you, Madam Vice Chairperson. At the outset, I would first thank the Honorable President for having pleased to deliver her address to both the Houses of Parliament, and also for having read the document of the government without fracturing it, unlike some of those appointed by her in various states. This government is, ma'am, anti-federal, anti-secular, anti-poor, pro-rich. It's anti-women. It is anti-MSc, ME, anti-CPSUs, pro-corporates, anti-farmers and anti-labor, pro-center and anti-regional. See, why I am telling all these things, not it's an evasive accusation against the government or alleging them without any base. In the recent days, after this government has taken over power, there's a blatant attempt to undermine the regional parties and the local issues. There's a stepmotherly attitude we witness and we experience. Take, for example, the devolution of revenue shares. The Finance Commission, 14th Finance Commission recommended to 42%, whereas what we are getting is not that much. It was 34%, then 31.3%, and only now 25%. It was in 21-22, 1.70 lakh crore. Next year it came down to 1.40 lakh crore, and now it is 1.24 crore. Tamil Nadu is the largest contributor of direct taxes to this country, whereas for 1 rupee we pay to the union government, the Tamil Nadu government is getting 29 paise. Whereas the UP, if they pay 1 rupee, they get 2.73. 2 rupees and 73 paise. What is this disparity? Why this discrimination? You say the country is one. You say everything, all are equal. But why this sort of treatment? By way of this GST regime, the Tamil Nadu government has lost estimated to around 20,000 crore rupees. It was a hasty implementation of GST. We have experienced a lot. And other thing, legislations are not able to be carried over in the assemblies. The elected government, which is in the assembly, do know the needs of the people and they legislate laws. But the Raj Bhavan stand as a stumbling block, and many of the bills that have been passed in the assembly have not been accorded sanction or assent from the governors, and because of that, many state governments are limping, especially the opposition ruling parties. The opposition ruling parties, wherever which states or wherever they are ruling, they are being treated in a manner the central agencies enter in and arm twist the government as well as functioning of the governments.
And moreover, very importantly, recently there was a very bad flood in Tamil Nadu, the torrential rains. Before that, there was a cyclone. Chennai and southern districts were affected too much. We demanded immediate for relief 5,000 crore. We were given only 450 crore, not even 10%. And later, overall estimate, say the defense minister came to the spot and he had an overall view of what happened there. And the Prime Minister was met by the Chief Minister of Tamil Nadu and he gave an estimate of 37,000 crore rupees demanding for immediate relief. Nothing happened. Then a delegation of all party members of parliament came and met the Home Minister, which delegation the Home Minister assured that it will be done. Nothing has been done. So even at the time of distress, they just witness how the states which are being ruled by opposition parties are suffering. This is not the way a union government has to treat a state government under a federal system. That is why I say it is anti-federal. It's not just an accusation against them, but it is the fact because of that. Take, for example, my neighboring state, the Andhra Pradesh. I have been hearing them for the past 10 years, cutting across all the political parties. After the Andhra Pradesh Reorganization Act in 2014, they are demanding for special status to Andhra Pradesh. Polavaram project, it is very much acquainted to us. Nothing has been taken care of because it is not ruled by BJP. For 10 years they have crossed by. They have asked for a special status and are still demanding it. It has not been acceded to. So this is the way states are being treated by the union government. We say it is not fair. Why I say it is unsecular? I would like to remind about the Citizenship Amendment Act. That act was brought, of course, apparently it seemed that India is very genuine and very generous of accommodating those who have been persecuted in the neighboring countries by way of religion will be given citizenship. But that bill that later on which became act very clearly said 3 countries were selected: Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. And from there only 5 religions, selective. Hindus, Christians, Parsis, Sikhs and Buddhists will be accorded citizenship who have registered before 2014. Our question is, while you are so generous of giving citizenship to people who have been persecuted, why Muslims have been deleted in the list? When you have taken 3 countries, why have you not taken about another country which is a neighboring country, Sri Lanka? Sri Lanka, Tamils, 1.5 lakh Tamils are in India without citizenship. The torture they are undergoing because of lack of citizenship cannot be described, and we have represented many a time it has not been taken care of. So when I gave an amendment that religious as well as ethnic persecution, so also include Sri Lanka, include Muslim community, that amendment was defeated by this government. So also the triple talaq. When triple talaq was brought, they said it is in favor of Muslim women. Everyone said, oh, it could be. But actually it is to victimize Muslim men. It is a protective measure a government should take, not a punitive approach. And why I am telling that, I brought a private member resolution for legislation for the welfare of the widows. Ma'am, 4.5 crore widows are in India. And in Brindavan alone, 1.5 lakh widows are there. And those are 20 to 60 years age, nobody takes care of them. They are there begging, they are there pulling rickshaws, they are being exploited by some other people, and some NGOs are taking care. I brought a resolution. We need a legislation because government of Tamil Nadu has given so much of schemes for widows. For your kind information, I would like to remind the House also that resolution was defeated. When you say that you are fighting for women's cause, you say triple talaq is brought for the Muslim women, but it is not so. The undercurrent is to punish the Muslim men. Whereas, had you been the same intent, you would have supported the women's
widows' welfare resolution also. So they take a double standard. So also women's reservation bill. They say we have fulfilled the long wish of political empowerment to women. When? After census, after delimitation, after reservation, it is far-fetched. It is like extending a carrot before a horse and making it to run. They give an impression to the women that the government has passed a women's reservation bill, but it is not so. May I suggest to the government, if at all you want to empower women, don't go for that. Again, I would like to cite my state as an example. We are giving 40% reservation to women in employment. Why don't you give that? My private member bill for that also is pending, which has not been taken into consideration. So it is anti-women, it is anti-secular, it is partisan towards some religious people. See, everyone should feel secured in this country. I have repeatedly said, when India partition took place, Muhammad Ali Jinnah said, all the Muslims come to my country, Pakistan, which will be for Muslims. The Islamists in this country said, yes, we are Muslims, but India is our country. And they stayed here and they sacrificed for the country. So many of them are in the military. So many have done in, take for example, Dr. Abdul Kalam. How many have done that? But why you should treat them in this manner is our simple question. Everyone should feel secure, but it is not so. We have to think about all these things. So when I say you are anti-secular, it is all with base and reasons. When I say anti-women, it is also based on what has happened to women community by way of this government's approach. Again, I said it is anti-poor. My colleague, Mr. Sukhendu, quoted many things. The per capita income in India for a person compared to China is 1/4 of it. Whereas in population, China and India are one and the same. I would like to say another thing, very shocking. I am very unhappy to say about my country's situation here in the parliament, which will go across the world. But the government's handling of situations is not in the right manner. I have to tell that. It's our responsibility as a citizen, as a member of parliament, and as, of course, in the interest of the country. India ranks 139th place in the per capita income in the world. Hunger index. And in the G20 countries, you are so proud that you have been successful in conducting G20. The lowest per capita income among the G20 countries is India. But you are climbing high that you have conducted the G20 summit very successfully. 22 crore people are suffering from poverty. That also was mentioned. Even the President address said, Garibi Hato was once a slogan, but now we have uplifted 25 crore of people from poverty. Where comes? 22 crore people are still below poverty line. And what is the index? What is the parameter of below poverty line? For a rural person, for a rural family, it is 27 rupees per day, 816 rupees per month. For one who is in the urban, it is 33 rupees, 1,000 rupees per month. One can imagine how can a family survive with 1,000 rupees and 800. But the President address says, on behalf of the government, it says that, oh, we have uplifted poverty and people from poverty. And India ranks 5th in the global in economic power. Soon we will be in the 3rd place. All because of the corporates. You are anti-poor and you are pro-corporate. That is what we are telling. 10% of our population get 57% of the nation's income. 10% of the population enjoy 65% of nation's wealth. Whereas only 3% of the nation's wealth is possessed by 50% of the population. Let them please explain to us that you have uplifted poverty, people from poverty line. This is the condition of the poor. The Manrega, earlier the number of people who were benefited was 4.14 crore. And now it has increased to 6.16 crore. After the COVID impact, how many things were affected? Have they been restored? Has it been brought to the position? No. The government was concentrating on other things. The oligopolistic conglomerates,
Some have a control over all the substantial parts of economy and even policy matters. I don't want to tell who it is. Everyone knows where Parliament whole session was taken away by that. Some people who own everything controls the entire economy of the country. It is all private business people. So also, the MSME, very important sector. A question was raised in the morning. It provides 20 crore employment to 20 crore people. Next to agriculture sector, MSME is the only sector which provides more employment. It contributes contribution to GDP is 29%. And in the exports, its parts is 45%. I am the chairman of the Committee on Industry. I know very well how we are patronizing. Ma'am, you know very well, being a part of it. So that MSME is not patronized to the extent. How many units fell sick and went out of it? How many people came to the streets? One MSME unit gives employment to 5 persons. But it is not taken care of. Let me tell, 2,300, just 2,300 individual enterprises, companies, their loan default is 2 lakh crore. 2,300 business people's loan amounts to 2 lakh crore people. And Indian banks have written off 5.3 lakh crore to corporates only. Whereas the NPA of the MSME, comparatively, I said 2,300 equal to 2 lakh crore. The numbers are very big. 18.65 lakh units of MSME. Total MSME units in our country are around 6 crore. Whereas the NPA are only 18.6, maybe 19 lakh units. But the total amount is just 16,341. This 18 lakh or 19 lakh units employ 1 crore people, and their loans to the bank's NPA that has not been repaid is only 16,000 crore, and whereas only 2,300 business people have got 2 lakh crore not repaid, and so also their loans have been waived off for 5.3 lakh crore. It's all alarming. What is happening? This government says maximum governance, minimum government. But minimum achievement, more trumpeting. They have spent 4,880 crore towards advertisement. That is public exchequer money. What about agriculture? One can recall all my colleagues in the House, how the farm bills were passed in the House. You can be proud to say that we have passed so many legislations. As many other members have pointed out, after having sent out to the opposition parties who will raise voice against or point out the errors of the government, they were all suspended, sent out, and you have passed legislations. So also scrutiny of the bills are also not like that. In 2014, what they point often, the UPA government, 71 bills were referred to Parliament Committee scrutiny. But now it is only 17%. Why? 71% and now 17% means they are not depending upon the scrutiny. In the House, it will be 2 hours, it will be 1 hour, it will be 3 hours, members' time will be 3 minutes, 2 minutes, whereas in the committee, it will be an elaborate debate. The stakeholders can appear. The government is bound to come and reply and make alterations, and the recommendations will be considered seriously, whereas all the parliament committees have become insignificant. And this is the way they are. Budget for agriculture coming down year by year. Before, budget for other things have been increasing. Home Department, defense, okay, that's all okay. But why agriculture budget is coming down? Agriculture is the spinal cord of India. I say, one can call the 2008 economic recession, when the whole world was suffering under it. It emerged from the Europe and affected the whole of the world, but not India, only because of the public sector units and the agricultural sector. But you are killing both. The farm bills were brought with what intent? To encourage some corporates.
And it was passed when the house was not in order. And when the whole country, the farmers came to the road and agitated, it was taken aback. And so also the budget is coming down. And the exports of farm produce, banned wheat in May 2022, broken rice in September 22, and onion in December 23. Farmers are not encouraged. Their produce are not allowed to export. They are not patronized. Fertilizers price is going on, increasing, and input costs are increasing, whereas the price of the agriculture produce are not being proportionate to the expenses. The government promised that we will double the income of. Nothing happened. Again, we would like to say, like how you said, 2 crore employment will be generated. So far, only 7 lakh employment has been generated. But the need is 7 crore. And you said 15,000 rupees will be deposited in everybody's account after 15 lakh, sorry. I am coming, 15 lakh rupees will be deposited in every person's account after unearthing the black money. And someone said, no, we didn't say like this. If at all we unearth the black money, that would be equivalent to 15 lakh rupees in every account. Have you unearthed? Have you deposited? No. So all are election jumla, as they themselves have said. So the farm bill was brought in that manner. The Article 370's abrogation happened in that disorderly manner. Business are being not conducted in the manner it should be. So many silence. When Manipur, everybody knows, northeast states, which you say that you are taking too much of care. Manipur, what happened? The whole world was watching. The clash that happened between two groups, it totally stagnated everything in the country. How women was treated, everybody knew. What we demanded? Just an explanation from the government. What for is a parliament? It's a debating forum. We have to debate, we have to deliberate, we have to decide. The government is accountable to the parliament. The parliament is accountable to the people. When the members of parliament come to the house and demand an explanation from the government, there was only silence. When there was a no confidence motion in the Lok Sabha, even then explanation was not given. So Manipur, nothing has been resolved so far, no explanation from the side of the government. 2%, despite the security we have here, we were not allowed to discuss about it. No explanation from the government. We asked something, nothing out of the way. What is happening in the country, we want to know, and the government is accountable to the parliament. You come here and explain to the parliament, which will be told to the people. But it is not so. So I considering my time, and I have to give way to my colleague, my sister, to some areas also for her to deal with. Because this government has spoiled this country in many areas, but something has to be left to her. And very importantly, I have to tell, as I said, a finance minister has come, kindly take care of the states about the devolution of funds which are reducing every year by year, which we are very much concerned about. And so also take care of the Tamil Nadu government's demand that flood relief and cyclone fund we have been asking for, but we have not been accorded so far. And right thing, at least he has come. Take care of the states which are being ruled by opposition parties also. And ma'am, to conclude, I will say, Mahatma Gandhi envisaged a village India. Pandit Nehru built a modern India. Lal Bahadur Shastri aspired for a Kisan India. V.P. Singh created a social justice India. Manmohan Singh, a globalized India. Honorable Narendra Modi ji is taking defederalized India. We are very sorry to all these things. 10 years have been given to you. In these 10 years, what is the net result? The progress report shows more poverty, more poor people, more unemployment. Small-scale industries are being crushed. Many corporates are having their hands upon them.
MSME has to be taken care of. All these things, when we say, we can just remind them one thing, remind of the IPC World Cup series which happened. 10 matches, Indian cricket team won like anything, and a much hype was made for the final match. Even the Prime Minister went and everyone was. So also you might have secured 2 Lok Sabha elections, you have won. You might have won the by-elections, but 2024 elections will be the IPC World Cup series to Indian cricket team will be to the present one. I'm not IPL, sorry. Thanks. Thank you very much. IPL. And again I say, not because of just we are not here and they are there, not able to tolerate someone who is in power. We have witnessed, we have experienced, we have suffered. Uphold federalism. We have to be secularist country, and states have to be protected, and youth have to be taken care of, labor have to be taken care of. Anti-labor policy should not be, we should be India in its own form. Since you have not done it, the 2024 elections, the India Alliance will win and bring back India to its original place. Thank you very much. Thank you. Thank you, Tiruchuji. Shri Sandeep Kumar Pathak. धन्यवाद ऑनरेबल चेयर मैडम। मुझे आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ। आप सबका भी, मेरी पार्टी की तरफ से भी, और उन सभी जनों का जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। ऑनरेबल चेयर मैडम, आप अगर अभिभाषण को पढ़ेंगे तो पहले पन्ने के पहले ग्राफ में ही 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। सबसे पहला है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके बाद लिखा गया है अमृतकाल, और फिर तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बिलीवर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। मैं इन तीनों बातों को आधार बनाकर अपनी बात को आपके सामने और देश के सामने रखना चाहूँगा। ऑनरेबल चेयर मैडम, हम सब राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से ही आए। हम सारे अपने अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्र में थे। हमने जीवन में सब कुछ छोड़कर राजनीति में आने का कारण ही यही था कि हम इस राष्ट्र को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस सदन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति या किसी भी सदस्य और उस पूरे देश में किसी भी व्यक्ति के मन में संदेह होगा कि इस देश को कोई श्रेष्ठ बनाना नहीं चाहता है। प्रश्न यह है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है कि इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति में समानता हो, भारत ऐसा बने कि पूरी दुनिया में गौरवान्वित हो, श्रेष्ठ बने। प्रश्न यह है, ये प्रश्न नहीं है कि हम सब इसको मानते या नहीं मानते, हम सारे मानते हैं, इसीलिए सब कुछ छोड़ के राजनीति में आए हैं। प्रश्न यह है कि क्या इस देश को एक और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम पर्याप्त काम कर रहे हैं। दूसरा, अमृतकाल, बिल्कुल सही बात है। अमृतकाल की संभावनाओं के बारे में भी किसी को कोई संदेह नहीं है। इस पूरे देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज उपस्थित है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे देश में हैं, सब कुछ संभावनाओं को दर्शित करता है। तो अमृतकाल की संभावनाएं अपार है। जिस तरीके से हमारे पास संभावना है एज एन ऑपोजिशन पार्टी, एज ए मेंबर ऑफ दिस कंट्री, उसी प्रकार से सरकार के पास भी संभावनाएं हैं कि अमृतकाल की संभावनाओं को वो कैसे इस राष्ट्र के देश में परिप्रेक्ष्य में उकेरते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि अमृतकाल अभी है या नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या अमृतकाल की संभावनाओं को हम वास्तविकता में बदलने के लिए पर्याप्त काम कर रहे हैं। ऑनरेबल चेयर सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी होगा ना जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ शिक्षा मिले। एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा मिले। एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब सभी व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब सबको बराबर की सुरक्षा, रोजगार, पारदर्शी गवर्नेंस, राजनीतिक स्थिरता और नैतिक दायित्वों का निर्वहन होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी बनेगा जब देश के हर एक व्यक्ति को समानता हो और उसके श्रेष्ठ बनाने के, उसके आगे बढ़ने के सभी व्यवस्थाएं पूरी हो। मैं इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी
और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का पक्षधर हूं। मुझे ये लगता है सारी चीजों को देखते हुए पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, ये पूरा काम एक पैच वर्क का काम दिखता है। कहीं भी मुझे एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं दिखता है जिस इंस्टीट्यूशन को उठाकर पूरा फोकस उस इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करने में लगाया हो। ऐसा लगता है कि सारा का सारा एक पैच वर्क है और पैच वर्क में थोड़ा सा पैसा इसमें डाल दो, थोड़ा पैसा इस पे डाल दो, थोड़ा पैसा उस पे डाल दो, आज अगर ये हो गया तो इस पे पैसा डाल दो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा सब कुछ करने के चक्कर में मुझे लगता है जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। और अगर इंस्टीट्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो देश विकसित होना बहुत बहुत दूर की बात है। ऑनरेबल चेयर सर, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो 3 आधारभूत परिप्रेक्ष्य हैं जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। आंकड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक व्यक्ति की कमाई कितनी है, क्या उसकी कमाई में बढ़ोतरी हुई। दूसरी चीज होती है उस व्यक्ति को अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए खर्च कितना करना पड़ता है, क्या उसमें महंगाई में कोई बढ़ोतरी हुई। और तीसरा है इन सब के बाद कि वो बचत कितनी कर पा रहा है, तो इनकम कितना है, खर्च कितना करता है और सेविंग कितनी हो रही है। इन 3 बातों को ही अगर हम देख लें हर व्यक्ति के जीवन में तो पता चल जाएगा मोटा मोटी के अर्थव्यवस्था की ओवरऑल स्थिति क्या है। आज अगर हर व्यक्ति की कमाई को हम देखें तो G20 और ब्रिक्स देशों में सबसे नीचे है, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से भी हम नीचे हैं। अगर आप देखें कि प्रति व्यक्ति आय में जो बढ़ोतरी 145% के आसपास थी पिछले दशक में, इस दशक में जो अभी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसमें लगभग 67% की बढ़ोतरी है। मैं ये नहीं कहता कि बढ़ोतरी नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पिछले साल इतना था इस बार इतनी। आपको बढ़ोतरी को पूरे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रख के देखना पड़ेगा कि कितनी बढ़ोतरी हुई। अगर पिछले दशक से और इस दशक में अगर कंपेयर करें तो जो बढ़ोतरी हुई है वो 50% कम हुआ है। दूसरा, अगर एक्सपेंडिचर को देखें सर, एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे होगा जब महंगाई इतनी ज्यादा है। हर व्यक्ति के थाली में क्या सेम सामान सभी अन्न खाद्यान्न आ सकते हैं? क्या हर व्यक्ति उसी प्रकार से बराबर खा सकता है? आज की परिस्थिति में तो नहीं खा रहा है। तो जिस दिन इस देश का हर व्यक्ति समान भोजन करने की स्थिति में पहुंचेगा उसी दिन ये देश श्रेष्ठ भारत बनेगा और एक भारत बनेगा। महंगाई अगर देखें तो फूड इन्फ्लेशन 9 से 10% के आसपास रहा है। वेजिटेबल में देखेंगे 30% का इंक्रीज रहा है। दाल के भाव 20% बढ़ गए, अनाज के भाव 10% बढ़ गए, तेल के भाव रिफाइंड ऑयल 70 रुपए हुआ करते थे 2014 में, अब लगभग 200 के आसपास पहुंच गए। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो खाना बनाने का गैस होता है 3 गुना उसके भाव बढ़ गए, 400 मिलते थे 1200 होने लगे। बहुत सारे ऐसे आंकड़े। मैं सिर्फ मूलभूत बात यह रखना चाहता हूं कि जब तक इन चीजों को व्यवस्थागत तरीके से एड्रेस नहीं किया जाएगा ये महंगाई दूर नहीं होने वाली है। आपकी कमाई तो थोड़ी बढ़ी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आप ओवरऑल ये देखिए कि पिछले दशक में एक व्यक्ति कितनी बचत करता था और इस दशक में कितना बचत कर रहा है। यही एक मूलभूत और बड़ा सिंपल तरीका है ये देखने का कि क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था और क्या बढ़ी है और क्या लोगों का जनमानस का जीवन स्तर ऊपर उठा है। बहुत सारे और आंकड़े हैं, लेकिन इनके अलावा अगर मैं इंस्टीट्यूशंस पे बात करूं, इंस्टीट्यूशन, आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, 10.5 लाख करोड़ का हम राइट ऑफ कर रहे हैं। आप कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत बनेगा कैसे? अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम, अमीर एक, तो मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे हम? कर्जा की बात अगर मैं कहूं तो पिछले 14 प्रधानमंत्री हुए हैं 67 साल के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़, 3 गुना ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। तो कर्जा का हमने देख लिया, बैंकिंग का देख लिया। बैंकिंग की सेक्टर की हालत खराब है। आप अगर विदेशों में हमारे प्रति क्या भावना है दुनिया की, यह देखना है तो उसका सबसे सही आंकड़ा होता है कि FDI कितना हुआ है, बढ़ रहा है, घट रहा है। और ये बढ़ रहा है, घट रहा है पिछले साल, इस साल, पिछले हफ्ते से नहीं,
ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रिलेटिवली हमारे कितने बढ़े कितने घटे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम तुलना कंपटीशन अपने आप से नहीं कर रहे। आज हम बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जिससे हमको पछाड़ना है, उनको पीछे करके आगे लेके जाना है, हमें श्रेष्ठ बनना है। तो ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो का जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है। आप सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग होती है, एक क्रेडिट रेटिंग होती है। जैसे गांव में आप जाओगे, किसी को उधार देने से पहले से कहते हैं कि भाई इसको उधार मत देना क्योंकि ये तो वापस ही नहीं करता है, इसको उधार मत देना, इसके पल्ले 4 पैसे नहीं है। एक आदमी होता है बोले हाँ इसको उधार दे दो, ये आपको वापस करेगा। वो एक क्रेडिट रेटिंग होती है। आपके क्रेडिट कार्ड की भी रेटिंग होती है, देश की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग जिस तरीके से स्टेगनेंट है पिछले दशक में, ये स्पष्ट दर्शा रहे हैं हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन जाए, तीसरी इकोनॉमी बन जाए, पर विदेशों में हमारे अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत ज्यादा लोगों में उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही है। आप डेप्रिसिएशन अगर देखें तो $1 मोदी जी के आने के पहले 58 रुपए के आसपास, 54-58 रुपए के आसपास हुआ करता था। आज ये 80 रुपए पार कर गया है। हम बार बार कहते हैं कि विदेशों में हमारा मान बढ़ा है। भाई विदेशों में मान कैसे बढ़ता है? विदेशों में मान 2 ही तरीके से बढ़ते हैं। एक तो होता है हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, जो हमारे कलेक्टिव व्यवहार जो है उसके कारण परिलक्षित होती है विदेशों में, और दूसरा होता है पैसा। कितना पैसा है आपके पास, कितने बिजनेस करा सकते हो आप उनको, आपको आपके पैसे से ही वो रेट करेंगे। तो अगर डॉलर के हिसाब से अगर रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक बार कहा था जब रुपया का वजन गिरता है विदेशों में तो देश का मान गिरता है। मैं सहमत हूं उनसे। तो देश का मान निश्चित रूप से गिरा है। झप्पी डालने से, गले लगाने से वो मोमेंटरी बेनिफिट दिखता है कि गले लगा लिए, 2 बार गले लगा लिए, 3 बार, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन वो फंडामेंटली इस बात को नकारते नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। इसके अलावा ऑनरेबल चेयर सर, सीएजी के रिपोर्ट पे पहले बहुत बात होती थी। सीएजी के रिपोर्ट पे आपको याद होगा कि सरकारें गिर जाया करती थी। सीएजी कहती है कि सरकार डेटा कंसील कर रही है। 2021 और 22 के आप देखेंगे सीएजी में तो बहुत सारे डेटा को कंसील करने की बातें आई हैं। अगर मैं रोजगार के पक्ष में बात करूं तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ के आसपास रोजगार देंगे। रोजगार कहां गया? 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है? मनरेगा एक स्कीम होती थी, मनरेगा के पैसे होते थे, मनरेगा में आपने पैसे घटा दिए, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, शूट अप कर गया। तो ये पैच ऑफ वर्क करेगा नहीं, हमको फंडामेंटली इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। मैंने इसी सदन से प्रश्न पूछे थे कि क्या सरकार ने पिछली 10 सालों में कितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी? उत्तर आया सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि जो आप 9.5 लाख के आसपास खाली पद है, कब तक भरने का प्लान है? उत्तर आया सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में। कुछ भी प्रश्न पूछो आपका उत्तर यही है, सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में काम चल रहा है। मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, आपके समक्ष ये रखना, या तो सरकार के पास इसका उत्तर नहीं है या उत्तर है तो छुपाना चाहती है। तो फिर कैसे हम श्रेष्ठ बनेंगे? जब उत्तर छुपाने लगेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? अमृतकाल की संभावनाओं का क्या होगा? ये पैच ऑफ वर्क से काम नहीं चलेगा। हरियाणा में अभी इजराइल में कुछ लोगों को नौकरी के लिए भेजा गया। वहां के मुख्यमंत्री और वहां की जो भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक के कह रहे कि हमने इजराइल भेज दिया। इजराइल, अरे भाई इजराइल में लड़ाई चल रही है, अपने बेटे को भेजेगो क्या इजराइल? अपने बेटे को भेजोगे नौकरी करने? वो इजराइल नौकरी करने जा रहा है क्योंकि उसके देश में उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वो खुशी से नहीं जा रहा है। तो इस पे हमें खुश होनी, हम कैसे श्रेष्ठ भारत बनाएंगे? ऑनरेबल चेयर सर, भ्रष्टाचार की तो बात ही छोड़ दें। मैं एक ही शब्द में यही कहना चाहूंगा कि काला धन लाने की जो बात कही गई थी उस पर कुछ हुआ नहीं, बट वो जुमला था, हमें बता दिया गया, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। एक इंडेक्स होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने 93वां नंबर हमें दिया है। आउट ऑफ 180 कंट्रीज वी वर रैंक्ड 93। भूटान वाज रैंक्ड 26, वे अबव देन अस। इंडिया, आप बाकी को तो भूटान को छोड़ दो, तुनीशिया, रवांडा और घाना जैसे देशों से भी नीचे। कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? स्लोगन ना बन के रह जाए। हमको श्रेष्ठ बनना है, हम सबको मिलकर काम करना है, पर ऐसे कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? कैसे अमृतकाल की संभावनाओं को प्रखर करेंगे? रेलवे की बातें होती है। ऑनरेबल चेयर सर, रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। वो एक बच्चा होता है ना कि स्कूल में वो गणित जब उससे बनता नहीं है तो वो मम्मी को कहता है, मम्मी मुझे गणित नहीं बनाना है, गणित में बस पासिंग मार्क लाना है, मैं दूसरे विषय पढ़ूंगा, मम्मी मुझे गणित नहीं। ये कोई भी डिपार्टमेंट जो कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, उसको रिफॉर्म करना कठिन हो रहा है,
तो इस सरकार की ये नियति बन गई है, आदत सी बन गई है कि इसको रिफॉर्म मत करो, इसको पीछे रखो, 4-5 नई चीजें शोकेश में ले आओ। तो रेलवे को रिफॉर्म करने के बजाय आप नए रेल ले आए, फलाना ढिमका, ये वो, बाकी सारी ठीक है, बनना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, सारी चीजें लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटायर रेलवे डिपार्टमेंट। आपने उस इंस्टीट्यूशन का कचरे का डब्बा बना दिया है पिछले कुछ सालों में, और 4 जगह ट्रेन का आप यहां पे फ्लैग ऑफ कर रहे हो, वहां हमारे इंस्टीट्यूशन का क्या हुआ रेलवे का? पिछले 9 साल में 11 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए, 2014, 2016, 2017, 2020, 2022, 2023, 2023 में 4 एक्सीडेंट हुए। कैसा देश है? कैसी इस सदी में आकर अगर रेल में अरे हम कोई 500 किलोमीटर पर आवर स्पीड से नहीं चल रही हमारी ट्रेन, 100 किलोमीटर मुश्किल से टच कर रही है, उसमें डिरेल हो रहा है। अगर सीएजी की रिपोर्ट आप देखेंगे इस पे डिरेलमेंट पे, तो सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जो रेल की पटरियां हैं वो पुरानी हो गई है, बदलनी पड़ेगी। रेल की पटरियां पुरानी हो गई है, बदल नहीं रहे, रेल में जो मेंटेनेंस होनी चाहिए ट्रैक पे वो नहीं हो रहा है। आई विल टेक सम मोर टाइम। 63% जो है सर रिपोर्ट वो टेबल ही नहीं होते। ऑनरेबल चेयर सर, आप विमेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे देश विमेन और माताओं के सम्मान के लिए अग्रणी रहा है, माना जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त त्राफला क्रिया। अगर आप महिलाओं का और नारियों का सम्मान नहीं करेंगे तो सारे किए अच्छे कार्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहां पर हमारी रेसलर बहनें प्रोटेस्ट कर रही है, उनके प्रधानमंत्री जी के पास जब वो जीत कर आते हैं तो उनको सुनने के लिए आपके पास समय है, लेकिन जब वो समस्या में है, जब दुख में है, तो उनके पास जाके, मैं नहीं कह रहा कि किसकी गलती है, वो कोर्ट तय करेगी। सर मैं क्लोज कर रहा हूं, मैं क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू मिस्टर पाठक। सर, ऑनरेबल चेयर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस टाइम। आप एजुकेशन सेक्टर ले लो सर, आप हेल्थ। थैंक यू। If there had been a request from the party for extension of time, I would have given that. I'll just give you, sir, 2 minutes. I'll just close. Thank you very much. Okay. Just 2 minutes. Okay. Thank you. देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुझे लगता है राम राज्य की परिकल्पना को हमें धारण करना पड़ेगा। राम राज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने और महाकवि वाल्मीकि ने भी लिखा हुआ है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। ऐसा देश बनाना है जहां हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति संपन्न हो, कोई किसी के हिस्से में दुख ना हो। पर राम राज्य की परिकल्पना सिर्फ किताबों में रह गई है। दिल्ली की सरकार इस पर काम कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। नेहरू जी ने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए, बहुत अच्छी बात थी। अटल बिहारी जी ने इस देश को एथिकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइज किया, एथिक्स को बड़ा करके अटल जी ने दिया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने काम की राजनीति को, स्कूल और अस्पताल को राजनीति में लाके इंस्टीट्यूशन किया। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी के पास सब कुछ करने की अपॉर्चुनिटी है, उनके पास इतनी ब्रूट बहुमत है, आप सारा कुछ कर सकते हो। अमृत काल की संभावनाओं का उपयोग करिए। श्रेष्ठ भारत बनाने में सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, कोई अकेला कर नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच सर, इतना समय देने के लिए। थैंक यू मिस्टर पाठक, थैंक यू। सप्लीमेंट्री डिमांड्स for grants 2023-24, Srimati Nirmala Sitharaman. Thank you, sir. I rise to lay on the table a statement both in English and Hindi showing supplementary demands for grants 23-24. Supplementary demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir 2023-24, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, I rise to lay on the table a statement again in English and Hindi showing the supplementary demands for grants in respect of the Union Territory of Jammu and Kashmir with legislature for the year 2023-24. The interim budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, I again rise to lay on the table statements in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure 24-25 of the Union Territory of Jammu and Kashmir and statement under Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2006 in English and Hindi. Thank you. Dr. Prashant Nanda. धन्यवाद महाशय। गृह उपस्थित सबू सभ्य मान को मोर नमस्कार, जय जगन्नाथ।
31 जनवरी को सुबह 11 बजे सारा देश में सब लोग उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे सुनने के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण। उत्सुकता इसलिए था कि कोरोना के जो 2 साल गुजर गए उसमें लोगों को ये लगता था कि हमारा पोजीशन क्या है। 2 साल तो हम ढकेल दिया कोरोना ने हमको, अभी उसके 2 साल के बाद अभी हमारा पोजीशन क्या है, हम कहाँ किस स्थिति में है। और राष्ट्रपति जी ने इसके बारे में सुना दिया डिटेल, जिसमें रहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोले, वुमेन रिजर्वेशन के बारे में बोले, डिजिटल इंडिया के बारे में बोले, 4 पिलर्स के बारे में, यूथ पावर, वुमेन पावर, फार्मर्स पावर एंड पुअर, उसके बाद एक्सपेडिशन ऑफ वर्क अंडर जल जीवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, सब सारे का सारे बोल दिए। बड़े खुश हुए होंगे सारे हिंदुस्तान। खुद को अच्छा लगता होगा कि चलो इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये भावना सबके मन में आता है। इसीलिए मैं पहला राष्ट्रपति जी को धन्यवाद अर्पण करता हूं। सर, इसमें ये भी बोलना चाहता हूं कि जो 2 साल धकेल दिया सारा देश को पीछे, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरीज और ये सेंट्रल गवर्नमेंट सभी ने कोशिश किया कि हम वो 2 साल को भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं। और ये सब स्टेट के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में अभी गवर्नर बजट सेशन उनका होगा, उसमें बोलेंगे। तो एक शाबाशी राष्ट्रपति के मुंह से हर स्टेट को, हर यूनियन टेरिटरीज को देना एक हक बनता है उनका, और मैं यही बात पहले रखना चाहता हूं। अभी आते हैं पूरा डिटेल के बारे में। पहले भगवान से स्टार्ट करें। सालों साल भारतवासी सोचते थे कब रामलला का प्रतिष्ठा होगा, और 22 तारीख को वो सपना पूरा हो गया। सपना पूरा होने के बाद जो मन में खुशी सबका मुंह में था, और उसी को राष्ट्रपति जी के मुंह से हमने सुन लिया। राष्ट्रपति जी उड़ीसा से आते हैं, और हमारा ये इच्छा था उनके मुंह से सुनने के लिए, जो उनके कुलदेवता है, जो जगन्नाथ जी है, उनका भी पूरे तरह से परिक्रमा, और जो परिक्रमा प्रोजेक्ट है वो परिक्रमा प्रोजेक्ट 17 तारीख को हुआ। और 1500 साल की ढांचा जो पूरी था, उधर उसको तोड़ मोड़ करके एक सुंदर जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए जो वादा किए थे उनका परम भक्त नवीन पटनायक जी, वो कैसा है, कम से कम रूपाला जी हमारे माननीय मंत्री, उन्होंने देख कर आए हैं जगन्नाथ जी कितना बढ़िया हुआ है। और ये भी बात है कि 1 पैसा डोनेशन के लिए नहीं लिए, 1 पैसा डोनेशन के लिए नहीं लिए। इसलिए जगन्नाथ जी बोलते हैं, अरे देने वाला तो मैं हूं, तू क्या मुझे देगा। और 26 तारीख को पश्चिम ओडिशा में समलेश्वरी मंदिर जो है उसका भी परिक्रमा प्रतिष्ठा किया। तो राम मंदिर होके जो टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, उसमें हर स्टेट भी इस पे काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बालाजी को देखो, या केरल का कार्तिकेयन के देखो, इधर हिमाचल प्रदेश को देखिए, इधर उत्तराखंड देखिए, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैं सोचता था कि हमारे राष्ट्रपति के मुंह से अगर जगन्नाथ जी के बारे में ये 2-4 शब्द बोल देते तो बड़ा खुश होते उड़ीसा वासी। अगर नहीं बोले हों कोई बात नहीं, जरूर दिल से बोलते होंगे, उनका दिल को सलाम करके मैं आगे बढ़ता। उन्होंने भित्ति भूमि का विकास के बारे में बोला, बहुत बढ़िया, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। अरे कहाँ है विमान सेवा, देखिए जो 74 था वो आके पहुंचा किधर,
149 में पहुंच गया, बहुत बढ़िया हुआ। पर राष्ट्रपति जी का अपने जिले में राजगोविंदपुर एक एयर स्ट्रिप है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से है, उसको अगर कर लेते तो 150 हो जाता, वो नहीं हो पाया। रेल के बारे में क्या कहूं, 25,000 किलोमीटर बना दिया रेल मंत्री ने और वंदे भारत ट्रेन 39 चला दिए। बहुत बड़ा है, अच्छा लगता है सुनने को, हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन वही राष्ट्रपति जी के अपने जिला, उनके रायरंगपुर से भुवनेश्वर आने के लिए अभी तक एक भी ट्रेन नहीं है। तो ये भी बोलना जरूरी है कि बढ़ेंगे तो सबको साथ लेकर बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर बढ़ने से सबको अच्छा लगेगा और ऐसा माहौल होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी बोलते हैं आपके उन्हीं जिलों में और क्या क्या है, मैं बोलता हूं उसी मयूरभंज जिले में, राष्ट्रपति जी के जिले में भारत सरकार 15 साल पहले रूपसा बांगीरपोशी रेलपथ जो है उसका गज परिवर्तन किया था, उसको ब्रॉड गेज बनाया था। 2011 से रूपसा बांगीरपोशी रेलवे बूढ़ामरा से खड़गपुर टाटानगर मेन लाइन तक चाकुलिया तक 55 किलोमीटर लंबा नया रेलपथ संयोग के लिए प्रस्ताव है। प्रकल्प निर्माण में 700 कोटी जरूरत है, जबकि प्रति साल 1,000 रुपया उसको मिलता है। वो कितना साल लगेगा कंप्लीट करने को? तो ठीक है, भित्ति भूमि का विकास है, बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोला, उनको बहुत अच्छा लगा राष्ट्रपति जी को, हमने एशियान में 100 मेडल ले आए, पूरा सेंचुरी करा दिए। बहुत बढ़िया है, शाबाशी देना चाहिए। और एक शाबाशी भी इधर आना चाहिए जिस मुख्यमंत्री ने अपना राज्य में हॉकी विश्व कप किया, उनको भी हक बनता है ना उसमें से। दो बार, एक बार नहीं, दो बार उन्होंने इधर किया, उसका उनका भी हक बनता है। जी देखिए, मेरे कहने का मतलब और है कि अब तो ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଦେଶରେ 4 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସରକାର 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକ୍କା ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। 1 ମିନିଟ୍ ସାର୍, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଦେଶର 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ 7 ଲକ୍ଷ ବାସଗୃହ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି? मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर देना है पूरा, ये फेडरल स्टेट है, सबको भी दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। खाली अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा भारत भूखंड को लेकर बढ़ेगा। अगर भारत भूखंड को लेकर बढ़ेगा तो भारत भूखंड का हर जगह का जो है उन सबको लेना चाहिए। और सारे बात कहना है, लेकिन समय तो नहीं है। फिर भी आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूं, मुझे बोलने का मौका दिया है। और मैं मेरे आदरणीय धन्यवाद और माननीय प्रशांत माननीय नंदा जी, राष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद। मैं अपना धन्यवाद माननीय प्रशांत नंदा जी। अब माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी। Thank you, Deputy Chairman, sir. On behalf of my party, YSR Congress Party, my party beloved leader, YS Jagan Mohan Reddy Garu, I thank Honorable President for addressing the Parliament. Sir, this year, the address by the Honorable President of India is very significant, very significant because immense progress that India has achieved after 2014 to till now has been compared with that of the misrule of Congress party between prior to that till 2014. That is 2004 to 2014, the dark rule of Congress party. Sir, the Congress party
Sir, I am referring to this because the Congress party has done irreparable damage to Andhra Pradesh, which I would like to bring to the notice in my next paragraph, sir. Sir, the Congress party may try to whitewash the past history and make their decades of misrule appear to be positive. But people of this country will never forgive the Congress party and its misrule and its cheap and dirty tactics and politics, sir, particularly in Indian National Congress. Sir, the Andhra Pradesh is the biggest victim of the misrule of the Congress party. They have subjected Andhra Pradesh to the violent and unscientific bifurcation that has ruined the socio-economic fabric of the state, which can never be forgotten, which can never be forgiven. And people, I am telling you, sir, people of Andhra Pradesh will never forgive Congress party, and it is only the Congress party has gone into the history books, and it will never be able to come back to power in Andhra Pradesh, sir. Sir, the Andhra Pradesh Reorganization Act, I would like to make a mention here, sir, about how the AP Reorganization Act, my friend Jairam Ramesh is not there, unfortunately, but he is supposed to be the author of the Andhra Pradesh Reorganization Act. Please. Reorganization Dr. bill, Amantaya, Reorganization bill was listed for consideration and passing in Lok Sabha on 18th February 2014. Madam, please note down the dates and all. Sir, during the discussion in Lok Sabha, many MPs from Andhra Pradesh, including Congress MPs, have raised the voices of concern on three major issues. One is water sharing, second is electricity sharing, and third is revenue distribution, and fourth was the capital. These four issues have never been addressed by the Congress party, and the bill has been passed amid din. Sir, instead of giving a concrete reply for the discussion, these problems, the Congress steamrolled the bill. In fact, they have brushed aside everything. And even the concerns that have been raised by their own MPs, Congress MPs, have been brushed aside. And unfortunately, it has gone into the annals of the history. During that Congress rule, all the doors of Lok Sabha have been closed and cut off. Live telecast has been cut off. And the house has been sealed. And the bill has been passed amid din. So this is how they have ruled the country, and this is how the bills have been passed during 2004 and 14, which can never be forgotten, and it is there in the history, sir. Numerous demands, sir, in the course of discussion, numerous demands for division. Many members of Congress, own Congress party, have asked for division. And that has not been accepted by then the Speaker. The bill was passed in just 1.5 hours. Such an important bill, which has decided the fate of Andhra Pradesh, has been passed within 1.5 hours. That is the debate, what has taken place in Lok Sabha, sir. Sir, after the Lok Sabha has passed the bill, it has reached Rajya Sabha on 20th February 2014. Madam, on 20th February 2014, various demands have been made for the granting of special category status. Many members in this August House have raised the demand for special category status, including the then Vice President of India. And he was the leader of the House at that point of time. And he also demanded special category status from BJP. He also demanded special category status for a period of 10 years for the residual state of Andhra Pradesh. Sir, the granting of for the successor state of Andhra Pradesh to boost the development in the region, sir. In response to these demands, the then Prime Minister of the Honorable Prime Minister of the country, Sri Manmohan Singh Ji of Congress Party, has categorically and unequivocally promised,
I'm emphasizing this, sir, unequivocally and categorically emphasized and promised special category status for the residual state of Andhra Pradesh for a period of 10 years. Sir, I would like to bring it to your notice, the verbatim, the speech of the then Honorable Prime Minister, Sri Manmohan Singh ji, sir. Quote, sir, first, I would like to make a few further announcements in this regard. First, the purpose of central assistance, for the purpose of central assistance, special category status will be extended to the successor state of Andhra Pradesh, comprising of 13 districts, including 4 districts of Rayalaseema and 3 districts of North Coastal Andhra Pradesh for a period of 5 years. This will put the state finance on firm footing. Unquote, sir. This is the promise what the then Honorable Prime Minister has been made in this August House, sir. Sir, my question to the Congress Party, is, Congress Party could have amended the bill. It was not there in the bill. It was the promise that has been made by the then Honorable Prime Minister on the floor of this August House. Why Congress Party has failed to amend the bill? They could have sent back the bill to the Lok Sabha, got it amended, and give a constitutional or legal sanctity to the promise that has been made by the Honorable Prime Minister. Why did they not do it? They are rather blaming now the present dispensation, ruling dispensation, and also YSR Congress Party, some of their members, including Manik Chand Tagore, some member from Lok Sabha, from Tamil Nadu, who is in charge of Congress Party. He is talking nonsense every day, day in and day out. Sir, when they have failed to grant special category status for the residual state of Andhra Pradesh, where is the necessity for the Congress Party to blame other political parties, including YSR Congress Party? Sir, this is because the promise that has been made by the Congress, the then Prime Minister of this country, on the floor of this August House, is a mere eyewash. I have no hesitation to say that the promise was a mere eyewash, sir. Congress Party has deliberately failed to include special category status in the reorganization bill. Then it would have been legally binding on the successive government, BJP government, to implement it, sir. And it is their failure, and because of their non-implementation, the Andhra Pradesh is suffering now, sir. Sir, the Congress Party, Madam, 30 minutes, Honorable You Deputy speak Chair to has me. given 30 Chair minutes पर to me. बैठकर ना बोले comment. I No am not comment. yielding. Not And fair. Please. You have spoiled Mr. the Andhra Reddy, Pradesh. you speak to the chair. You have Please. done enough to Andhra Pradesh. Mr. Reddy. And your misrule can never be You forgotten. address to the chair. Chair. Sir, the Congress Party, बैठकर ना बोले. the Please. Congress Party was so insensitive to the needs of the people of Andhra Pradesh and aspirations of Andhra Pradesh. It could have easily enforced, INC could have easily enforced the special category status by incorporating in the bill, reorganization bill, which they have failed to do so. When they have failed to do so, they can't blame the others for that. Sir, after reorganization bill was assented by the President on 1st March, Madam, please note down, 1st March 2014, the Congress Party had 3 full months, 3 entire months to pass Union Cabinet resolution for special category purpose, status, which they have, in fact, it has been incorporated and Cabinet has passed a resolution. Then what happened? The resolution has been sent, the Cabinet resolution has been sent to the Planning Commission. Where was the necessity? In the past, when the other states have been bifurcated and other states have been granted special category status, Congress Party has never sent the proposal to Planning Commission. This is the first time. It means that the Congress Party has no real intention to grant special category status for the state of Andhra Pradesh. It is only delayed tactics. Sir, they failed to do so because Congress Party
special category status was just an electoral issue. They thought by offering special category status, this bill would be passed and then pass it smoothly, and then they'll come to power in Telangana. That is what they have expected. And people of Telangana have taught a lesson to them. Congress party has not come to power in Telangana, even after bifurcating the state. Now they have suffered. Now, after 10 years, they have told so many lies, and then they have come to power in Telangana. Please. It is only a matter of time, sir. The government is going to fall. Your government in Telangana is going to fall. It is only a matter of time. Sir, it is the hypocrisy. It is the hypocritical attitude of the Congress party and Congress politicians are now, including, I am particularly referring to Manikyam Tagore. Every day, he is, I think, from Tamil Nadu. Every day, he claims to be the in charge. He claims to be the in charge of Andhra Pradesh. We'll see. See, I can confidently say, let Manikyam Tagore come on to the public debate. We'll examine. I can tell more about Andhra Pradesh than Manikyam Tagore. Please, sir. And for Ajit, and he is blaming YSRCP, Manikyam Tagore, with the support of other political Congress leaders, local state leaders, blaming YSRCP for not demanding the special category status from BJP, which is factually not correct. I'll come to that point also, sir. Sir, that is what the hypocrisy of the Congress party. Sir, Congress party, I have no hesitation to say the Congress party is the real culprit when it comes to the Andhra Pradesh, when it comes to the damaging the interest of Andhra Pradesh. Sir, mere pointing the finger will not change the reality. They have to realize that. Sir, YSRCP has always been at the forefront for demanding the special category status even after BJP has come to power. Sir, our Honorable Chief Minister, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, has met Honorable Prime Minister more than 8 times, Honorable Home Minister more than 12 times, and asked for special category status. I will tell you, I will address that. See, when BJP has got 303 seats in 2019 elections, where was the necessity for them to, when you have failed to do so, when you had an opportunity to do so, when you had an opportunity to grant the special category status, you have not done that. When BJP got 303 seats in Lok Sabha in 2019 elections, and where was the necessity for them? Ultimately, eventually, who is at the loss? It is the state of Andhra Pradesh, it is the people of Andhra Pradesh whose interests have been damaged. Sir, I am telling you now, in this platform, last 2019 elections, BJP got 300 and odd seats, and now cephalogists say that BJP is going to get more than 350. Where is the Congress party? BJP will never heed to any other political party if they get 350 in the ensuing next elections. Congress is going to get less than 40. And their own alliance partner says that they will get only less than 40. It is not me. It is on record. You verify the record. Yes, I read you address to chair. Please. Sir, MPs, member of parliaments of our own party, YSR Congress party, not only our Chief Minister has met the Honorable Prime Minister and also Honorable Home Minister, our own MPs on countless times raised this issue, including myself, on the floor of this House as well as on the floor of the Lok Sabha. But we couldn't do anything. BJP has never heeded our request, and we have agitated, we have requested them, we have begged them, we have pleaded with them. Nothing. There was no use. When they have not done that, when they had an opportunity, BJP also is not doing it. When they are in a position to do it, eventually Andhra Pradesh is the victim. Sir, by making hollow promises in the parliament, Congress had made mockery of our parliamentary democracy. This is what the conclusion is, sir. Sir, the next point,
Sir, another 15 Yes, minutes. you have time. I have an opportunity to criticize them another 15 minutes. Please. Sir, at the time of bifurcation, the Congress government has been in power for 10 years. I've told you, sir, 2004 to 2014. And they have done the damage. See, sir, in fact, I draw your kind attention to the manifesto of Congress party, which they have released in 2004. In 2004, in their manifesto, they have promised separate Telangana. Suresh Reddan. They have promised in 2004, they have promised separate Telangana in their manifesto. Please. So, it was the Congress manifesto which has stated separate Telangana. Sir, they had full 10 years, the whole decade to create Telangana in a rational, they could have done it in a more rational and scientific manner. The bifurcation could have been more scientific and more rational. They have not done that. Why they have not done that? They wanted to take only electoral benefit. Their real intention is not to benefit the people of Andhra Pradesh or not to benefit the people of Telangana. It is only for their electoral benefits. They have done it and they are suffering, sir. Sir, they could have constituted, I'm telling you, you could have constituted second state reorganization committee for this purpose. They have not done that for reorganization to ensure that bifurcation is done in a more planned manner. They have not done that. Sir, the Congress party has been sleeping for 1 decade, one full 10 years. Why did Congress party choose a shortcut method for bifurcation? Shortcut method. You wanted, for everything you wanted shortcut method, sir. Just in 10 days before the notification of 2014 elections, they have taken the shortcut method and they have completed the process. This is what the Congress party is. Sir, it is because of Congress. The bifurcation was never about the welfare of the two successor states. It is not their concern. The welfare of the people is not their concern. The Congress party has done is just a sheer electoral opportunism. There is nothing else, sir. Sir, they knew. Sir, in fact, please go back to the electoral records of the composite Andhra Pradesh, sir. During 2004 and also during 2000 elections prior to 2014, during UPA 1 and UPA 2, composite Andhra Pradesh has contributed maximum number of MPs. It is because of composite Andhra Pradesh and contribution from composite Andhra Pradesh, they have come to power at the center. And they have, in the other states, they have got nothing. They have almost got out of 42, they got almost about 39 from the composite Andhra Pradesh. 37, UPA formation, UPA 1, they got 37, and UPA 2, they got 33. That is the contribution. Because of AP, composite AP, they have come to power in UPA 1 as well as UPA 2. However, in 2014, sir, since their chances, they have realized, they have completely misruled the state, composite state of Andhra Pradesh. And they have realized that they are not going to come to power. At least they thought by bifurcating the state, they could come to power in Telangana and at least leaving behind Andhra Pradesh. That was their idea, and the bifurcation of state to generate favorable electoral result in Telangana. The people of Telangana also have taught a lesson to them. That's a different issue, sir. Sir, the Congress was the main villain. They are the villains. Congress was the main villain in this entire episode of special category status and also bifurcation. They took the division of the state and the people merely to serve their own political motives, merely to serve their own ulterior motives, merely with the ambition to come to power in Telangana. Sir, I would like to say one thing, sir. The non-Congress governments have created, whenever they have created new states, it is only Congress specific, sir.
whenever new states have been created by the non-Congress state governments, like Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand, all these states have been bifurcated and carved out from the main other states in a most peaceful and scientific manner, which they have not done. They couldn't do it. Why? Because of their ulterior motives. Then evil intentions to stay back in power by whatever means and bounds. Sir, Congress party has failed in regard to two aspects, sir. They have failed to arrive at the consensus for AP Reorganization Act at the state level. At the state level, they have failed. They were in the power. They were ruling the state. Congress party was ruling the Andhra Pradesh. And they have failed to create consensus. And your own government and your chief minister, the then chief minister, Mr. Kiran Kumar Reddy, the then chief minister, Mr. Kiran Kumar Reddy, you have failed to arrive at consensus. You have failed to create consensus within the state. Sir, the second thing, sir. They have failed to get their own party people to unanimously agree for the bill. Sir, they have, in fact, their own Congress members have opposed the bill. Shame to the Congress party. Their own members on the floor of this house as well as in the house of the Lok Sabha, they have opposed the bill tooth and nail. They have failed to arrive at the consensus. They have failed to unanimously to bring unanimous consensus, agree among the members to agree on the bill, sir. Sir, these points are very important, sir. The last points about the Congress party, and I pray God that the Congress party should be punished for the misrule, injustice what they have done to the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, in the light of all these betrayals, by the Congress party, the people of AP have now learnt never to trust spineless Congress party. I have no hesitation to call them as spineless Congress party. And I'll put a step forward, sir, and if you permit me, I call them as Dhokebaz party. Permit within the parliamentary words. Yes, please. You are playing politics, family politics. See, family issue. Don't bring family issues into the political arena. Vijay Sai Reddy ji, address to the chair. That is the reason why. Please, seat पर बैठ कर ना बोले. See, this is the reason why. That is the reason why your dirty tactics and dirty planning. Vijay Sai Reddy ji, keep in mind parliamentary words. And intervening in the family affairs. Please. That is the reason why people have taught a lesson to you. That is the reason. Sir, important, sir. सीट पर बैठ कर ना बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, सिर्फ विजय साई रेड्डी जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है. Please. I am not yielding, madam. Please. Sir, this is the reason why the vote share of Dhokebaz party in Andhra Pradesh in 2019 election was less than Nota. See the percentage what they have got in Andhra Pradesh. Percentage of votes polled to the Congress party in 2019 elections in Andhra Pradesh by Congress party is less than Nota votes. Shame. The Congress party, which has ruled the state, which has ruled the country for so many decades, has got less number of votes they have polled when compared to the even less than Nota votes, sir. Sir, even at the national level. So leave about Andhra Pradesh. It is only one state. I'll come to the national level. Sir, at the national level, the downfall of Congress party is very clear. Sir, very visible. Sir, in 2014 elections, Congress party has won
44 seats with a vote share of 19.31%. 19.31%, they have won 44 seats. This is the worst ever performance of the Congress party, Dhokabaz party, in the general elections. Sir, in धोखेबाज ये सारे शब्द पार्लियामेंट्री हैं नहीं, it will be examined. Please. Sir, in 2019 elections, 4 more minutes are there. 2019 elections, Congress party has won 52 seats. From 44, they have slightly gone up to 2052, 44 to 52, with a vote share of 19.46%. 19.46%. Sir, even their own allies, India, they call it India, INDIA. Their own. Please speak to the chair. Even their own allies of Congress party are saying that Congress will not even get 40 seats in 2024. The next elections, which are going to be held in April 2024. Sir, last year, the cephalogist, I'm not an astrologer. माननीय वी विजय साई रेड्डी जी. Last year, their beloved leader, Rahul Gandhi ji, lost in Amedi. This time, he will lose from wherever he contests. Rahul Gandhi ji will be losing. He will not win. He will not be able to become a parliamentarian. Please. Sir, whether it is Andhra, Kerala, or anywhere in the country, let him contest. He will not be able to win. But in 2029, sir, Madam, please, India, very important for you, very important. In 2029, sir, in 2029, India will be Congress Mukt Bharat. Congress Mukt Bharat. That is the status. The status of Congress party will change from grand old party to grand extinct party. Grand old party will become grand extinct party, and the Congress party will not be there. And 2029 also I'll be here, and I'll see Congress party is extincting, sir. Sir, conclusion, sir. And 2 more minutes are there. Sir, in this 77 years of independence, years of independence, Congress has been in power for more than 50 years. Out of 77, more than 50. And India has grown only in the remaining 27 years, not in the 50 years. Only in the remaining 20 years, India has grown. The development, what we are able to see, what we are able to achieve, it is not during their 50 years of rule, it is only in the remaining 27 years of rule, sir. India's growth has not been because of the Congress party, but despite it, sir, very important, madam, whenever Congress party has been in power, India has prolonged period of backwardness. Whenever these 50 years, whenever they are in power, and we have seen the prolonged backwardness. Sir, very important, sir. Very important. This slogan has to be remembered by the Congress party, and they have to put it on their party walls on the party, sir, in the party. There is no doubt in anyone's mind that India grows only when Congress sleeps. India grows only when Congress sleeps. I am repeating it, sir. India grows only when Congress sleeps. Sir, the people of Andhra Pradesh, once again I am telling, will never forgive the Congress party. The Congress party has gone into the history in Andhra Pradesh. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Dr. Sudhanshu Trivedi. माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण पर जब हम उसका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं, तो एक अभूतपूर्व और अलग अनुभूति होती है, क्योंकि यह इस नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण है। यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूर्ण होने के बाद राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण है,
और गणतंत्र का अमृत महोत्सव प्रारंभ होने के बाद का पहला अभिभाषण है। और अधिक सुखद संयोग यह है कि यह उस संसद भवन के नए परिसर में हो रहा है जिसका श्री गणेश चतुर्थी को हुआ था और जिसमें पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था। और वहां पर देश की पहली महिला अनुसूचित जनजाति के वर्ग से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इस अभिभाषण को प्रस्तुत करना और भी सुंदर सुखद संयोग बनाता है। और अधिक संयोग बेहतर इसलिए हो जाता है कि जब यह संसद भवन में प्रारंभ हुआ उससे पहले भारत चांद के अछूते कोने को छूने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रख दिया था, अर्थात स्त्री शक्ति का उद्भव भारत में वनवासी क्षेत्रों से लेकर विधानसभा और संसद से लेकर चंद्रमा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का यह सुखद संयोग बना, जो मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में भारत की उभरती हुई और आकाश छूती हुई एक नई शक्ति का प्रतीक। परंतु यह अमृत काल आया है तो यह आत्मसम्मान का एक नया स्वरूप भी लाया है। अब किंग जॉर्ज की जगह इंडिया गेट के सर्किल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। एक नहीं, सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय है। साहिबजादों की स्मृति में, जिसका उल्लेख किया है महामहिम राष्ट्रपति जी ने, वीर बाल दिवस भी है। बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के ऊपर जनजातीय गौरव दिवस भी हुआ है, संविधान दिवस भी है, विभाजन विभीषिका दिवस भी है। अर्थात भारत की समस्त स्थितियों को संवैधानिक स्थिति देकर यह सुखद संयोग आया है। देश की अर्थव्यवस्था आज तेजी से बढ़ रही है। G20 में हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 5G रोल आउट करने में हम पहले देश बन गए हैं और ब्रिटिश काल का किंग्सवे कांग्रेस के शासनकाल में राजपथ से होते हुए अब कर्तव्य पथ हो गया है। अब रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग हो गया है। इंडियन पैनल कोड भारतीय न्याय संहिता हो गई है और मुगल गार्डन भी अब अमृत उद्यान हो गया है। और इस बात की स्वीकारोक्ति सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ बॉर्ज ब्रेंडे ने कहा है कि इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विद पीस एंड नो कॉन्फ्लिक्ट. Investment in R&D and infrastructure is going in such a way that can make India a $10 trillion economy in a decade. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ कहते हैं। और बिल गेट्स ने ये कहा है कि जो इंडिया ने डिजिटल सिस्टम स्थापित किया है वो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। चैथम हाउस थिंक टैंक ने एक आर्टिकल में कहा है कि G20 showcases the power of new emerging India. और तो और हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी देश माने जाने वाले चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भी मान लिया आखिर में 2 जनवरी 2024 को अपने एक आर्टिकल में यह स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के आने के बाद भारत में अर्थव्यवस्था और विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जितनी भी रेटिंग वाली एजेंसीज हैं, फिच, मूडी, IMF, वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये सब 6.7 से लेके 7.8% तक भारत को बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट दिखा रही है। इन सब के अनुसार भारत इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रमुख इकोनॉमीज में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा अब तो इस नए संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर हैं वो भी नई आभा से दिखाई लगने लगे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से विरोधी कोर्ट चले गए थे कि शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए था कि शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे। परंतु अब संसद भवन में एक ऐसा शेर बैठा है जिसकी वजह से अब किसी की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। जो इस भाव में विश्वास करते हैं, न विक्रमार्जितो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो भारत की जो मृगेंद्रता है वो उठकर सामने आ रही है। परंतु मैं माननीय सभापति जी कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 16 मई 2014 को जिस दिन इस देश में सरकार बदली, उस दिन जनादेश जो मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत में हमें मिला, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं था, विचार बदलने के लिए था और व्यवस्था बदलने के लिए था। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा लंदन का संडे गार्डियन, जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, उनके अखबार को कोट करता हूं। वो 18 मई 2014 को लिखता है अपने एडिटोरियल में, इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी।
और आगे वो लिखता है 16 मई 2014, यानी वो दिन जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, शुड बी known in Indian history as the day on which Britishers finally left India. और आगे वो कहता है कि उसका कारण यह है कि आजादी के बाद लंबे समय तक उन विचारों का शासन रहा जिनके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत का प्रभाव था, परंतु पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, हमारे हाथ में पूर्ण सत्ता आई है, जो अपने इंसेप्शन और इंस्पिरेशन दोनों में पूर्णता भारतीय है और ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई उसका मतलब नहीं है। और ये बदलाव वहां पे दिखा जब नीति आयोग बना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने अपनी पहली जो बैठक की, उसमें कहा कि बहुत दिन भारत विदेश से आयातित आर्थिक विकास के मॉडल्स को लेता रहा। कभी हम रूस की कॉपी बनते रहे नेहरूवियन सोशलिज्म मॉडल में, तो कभी अमेरिका की कॉपी बने, पर पहली बार नीति आयोग ने अपने रेजोल्यूशन में कहा कि नाउ वी विल नॉट बी बोरोइंग अपॉन एनी मॉडल फ्रॉम आउटसाइड, वी विल सर्च फ्रॉम ओरिजिनल भारतीय मॉडल। और आपने देखा उसके बाद उसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई। इस देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचा, वो अंत्योदय के विचार से प्रेरित थे। सभापति महोदय, जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो हम लोग कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यह इंश्योर किया जन धन योजना लाके कि गरीबों के पास अकाउंट होने चाहिए, और आज 54 करोड़ अकाउंट हैं, तो थके पंछियों के परों में सीधा वह रक्त पहुंचे जिसमें ना कोई कट हो ना किसी अन्य प्रकार की चीज। फिर चाहे 11 करोड़ लोगों को शौचालय देना हो, 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास देना हो। और इसके द्वारा बढ़ते हुए हमारे कई विरोधी लोग कहते हैं कि साहब रोजगार और व्यवसाय में स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाता, कोई कर्मचारी बनेगा तभी अपना भविष्य निधि खाता बनवाएगा, क्योंकि वो भी पैसा डालेगा और उसका एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा। 2014 में 11 करोड़ थे, आज 27 करोड़ है। तो इसका मतलब 16 करोड़ लोग ऐसे हुए जिनके की खाते इस दरमियान बने, तो उसमें एम्प्लॉयर भी है एम्प्लॉय भी है। इसका मतलब रोजगार के सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थिति आने वाले टाइम में आई। और हमारे तिरुचि शिवाजी कई बार कह रहे थे डेट के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं भारत दुनिया की समस्त अर्थव्यवस्थाओं में डेट टू जीडीपी रेशियो में सबसे बेहतर स्थिति में है। आप चाइना, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, किसी से भी तुलना कर लीजिए, हम डेट टू जीडीपी रेशियो में सबसे बेहतर स्थिति में है। पर्सनल डेट में हम सबसे बेहतर स्थिति में है। 73% लोग ऐसे हैं भारत में जिन्होंने कोई पर्सनल डेट नहीं ले रखा है। तो इसीलिए IMF ने हमारी अर्थव्यवस्था की वह तारीफ भी की है। परंतु ये सारा आर्थिक विकास सभापति महोदय तब तक बेमानी होता है जब तक उस विकास के साथ राष्ट्र के आत्मगौरव का भाव भी उसमें ना हो। क्योंकि आप विकसित होकर भी विश्व के सामने अपनी क्या तस्वीर रखेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सभापति महोदय, ये 5 साल के बाद आने वाली सरकार का, जो दोबारा भी आने वाली है, सिर्फ 5 साल के बाद आने वाली सरकार का अभिभाषण नहीं था, उस कालखंड का अभिभाषण नहीं था, 500 साल के बाद आने वाले भगवान राम के आगमन के उस अलौकिक अनुभूति के कालखंड का भी था। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, देखिए इस देश में भगवान राम, उनके जीवन ने इस राष्ट्र और समाज को जो प्रेरित किया, वो राम मंदिर के समय में किस रूप में हुआ मैं बताना चाहता हूं। अगर भगवान राम का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था, तो अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु उससे धर्म नहीं स्थापित होता। इसलिए पहले राजा राम को वनवासी राम बनना था, उसके बाद निषाद राज का सम्मान, उसके बाद माता शबरी का सम्मान, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन दूर के कोनों में खड़े हुए लोग जहां तक किसी की दृष्टि भी नहीं जाती थी, सबको संगठित किया और संगठित करके तब जाकर उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को उन्होंने परास्त किया। अर्थात समाज के हर वर्ग को सम्मान स्थान देकर तब जाकर राम का राज्याभिषेक हुआ था। और आज आप देखिए, चाहे 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है और 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले हैं, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर मिला है, वो तो है,
परंतु ये भी एक सुखद संयोग देखिए जो लोग हमसे कहने का प्रयास करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो 9 नवंबर 1989 को हुआ था, उसकी पहली ईंट जो पूरे शास्त्रीय विधान से हुआ था, जिसको सम्रांगण सूत्रधार कहते हैं उस ग्रंथ के अनुसार, पर पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी, जो आप लोगों के अनुसार सो कॉल्ड लोअर कास्ट में आते हैं। हम किसी को हायर और लोअर कास्ट नहीं मानते। और फिर संयोग देखिए, जब जजमेंट आता है 2019 में, तो उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे, जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे। और आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। और उस प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मुझे लगता है जो राम के काल में हुआ था, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। परंतु एक फैक्ट मैं और यहां पे कहना चाहता हूं। कई बार हम लोग उस समय छात्र जीवन में थे और ये कहा जाता था कि साहब ये मंडल के जवाब में कमंडल आया था। तो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं, ये पूरी तरीके से भ्रांति है। जो उस समय वीपी सिंह की सरकार मंडल लेके आई थी, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। हमारा आंदोलन 1984 से चल रहा था, 86 में ताला खुल गया था, 9 नवंबर 89 को शिलान्यास हो गया था। आज मैं सारे प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, मंडल कमीशन किस दिन लागू हुआ? 7 अगस्त 1990, सिर्फ 8 दिन बाद 15 अगस्त था। इतना बड़ा निर्णय जो उस सरकार ने आकर 8 महीने तक नहीं लिया, जो 8 घंटे में होने वाला निर्णय था, क्यों 15 अगस्त को नहीं हो सकता था? मैं बताता हूं उसका कारण बहुत स्पष्ट रूप से। के राजा कुरुप्पु स्वामी की किताब में श्री स्वर्गीय शरद यादव जी ने लिखा कि वीपी सिंह से उनकी बात हुई और वीपी सिंह ने कहा कि मैं 15 अगस्त को इसको ऐतिहासिक अनाउंस करना चाहता हूं, मगर क्या करें, 9 अगस्त को देवीलाल जी की रैली थी और उन्हें इस बात का डर था कि देवीलाल जी की रैली के बाद जनता दल में विभाजन न हो जाए, बहुत से नेता न चले जाएं। उन्हें इस बात का डर था कि शरद यादव जी भी चले जाएंगे। उस समय कृषक वर्ग में बहुत सी ऐसी जातियां थी जो आज ओबीसी में है, उस समय नहीं थी। तो देवीलाल जी की रैली 9 अगस्त को थी, इसलिए 7 अगस्त को करना पड़ा। अर्थात उनका मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, समाज के वर्गों के लिए उत्थान नहीं था, अपनी पार्टी के अंदरूनी समीकरण और उस राजनीति को साधना था। क्योंकि उद्देश्य पवित्र नहीं था, इसलिए न वो पार्टी बची, न उन नेता को सम्मान मिला। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर देखें तो हमने ईमानदारी से उस वर्ग के सभी नेताओं को, जैसे श्री कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब तो मंडल के राज से पहले ही के दौर में आ गए थे। और उसके बाद अगर आज हम देखें तो जो लोग आज हमसे कहते हैं पिछड़े वर्ग की बात, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी पट्टी में हमने 5 मुख्यमंत्री बनाए। कल्याण सिंह जी मध्य प्रदेश में, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव, और हमने 8 डिप्टी सीएम बनाए। केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में, सुशील मोदी जी यहाँ सदन में हैं, तारकेश्वर जी, रेणुका देवी जी, और हमने अभी अरुण साव जी छत्तीसगढ़ में, सम्राट चौधरी जी बिहार में। 8 और 5 13, और यदि प्रधानमंत्री जी को मिला लें तो 14। उस वर्ग के 14 लोग हमने बनाए, इसमें 11 लोग अलग अलग जातियों के हैं। ये होता है सबका साथ सबका विकास। और जो लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अपने परिवार के अलावा एक योग्य व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता है। जिस दिन सत्ता देने की बात आती है तो वर्ग तो छोड़िए, अपनी जाति में भी एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। केवल अपने परिवार को सब कुछ चाहिए, यानी जाति का चूरन देना है, परिवार को संपूर्ण सत्ता पूरन लेना है। ये उनका उद्देश्य, और हमारी सोच इस मामले में बिल्कुल अलग रहती थी। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा। राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक और बात कही गई। हमारे बहुत से लोग कहते हैं इसमें सीता जी का नाम नहीं लिया। भाई मैं बताना चाहता हूं, अरे आप लोग थोड़ा सा सहज बुद्धि का प्रयोग करिए। ये तो राम जन्मभूमि है, ये तो रामलला है। विराजमान विवाह 5 वर्ष के हैं। जहां राजा राम होंगे तो वहां सीता भी आएंगी। अभी तो रामलला ही है, तो जय श्री राम ही होगा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता भी होती है जब वो ये बात कहते हैं कि सीता जी का नाम होना चाहिए। तो मुझे ध्यान आता है कि दुनिया में कोई दूसरी संस्कृति नहीं है जो ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान देती हो। सिर्फ हमारी संस्कृति है। हम सीताराम भी कहते हैं, राधे श्याम भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, गौरी शंकर भी कहते हैं। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो हम दोनों को याद करते थे।
सभापति जी, मैं बालक के रूप में गया था उस रैली में, मुझे आज तक याद है, हम कहते थे जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। फिर हम कहते थे इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज आप देखिए वो सौगंध पूर्ण हुई, उसकी शुरुआत माननीय अडवाणी जी के समय में हुई थी और संपूर्ण मोदी जी ने उसे करने का कार्य किया है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक थोड़े इस विषय के ऊपर। माननीय खड़गे जी ने कल एक विषय कहा था कि साइंटिफिक होने की बात करनी चाहिए। जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है ना, उसमें एक बड़ा साइंटिफिक एंगल आया है। वो क्या है कि रामनवमी के दिन उनके मस्तक के ऊपर सूर्य तिलक होगा। अब इसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, जो प्लैनेटरी पोजीशन थी कि अर्थ का जो एंगल होगा सूर्य के साथ उस पर्टिकुलर दिन कैसे होगा, तो इसमें 3 इंस्टीट्यूट ने काम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने, जिसने उस पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को सटीक ढंग से किया। दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिसने कि उसकी व्यवस्था बनाने का काम किया। और तीसरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वो कॉन्वेक्स लेंसेस के थ्रू कैसे वो अंदर आएगा और ठीक उसी बिंदु के ऊपर उस दिन केंद्रित होगा, ये व्यवस्था की है। मगर मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, आज तो एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट है, आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था। यही तो अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, उसमें भगवान के चरणों के ऊपर पड़ती है। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है महाराष्ट्र में, उसमें 3 दिन के लिए इक्विनॉक्सेस आते हैं तो देवी के मस्तक से लेकर चरणों तक चले जाते हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी में जो मंदिर है उसमें 12 महीनों में अलग अलग सूर्य की गति पड़ती है। पूछिए साहब, अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हुआ जो आज इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स के बाद होने की बात आई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसके लिए हमें इस विचार पे धर्म और संस्कृति के साथ इस विज्ञान पर भी गर्व करना चाहिए। वैसे मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इसमें विज्ञान का एक और गहरा, आप सबको ध्यान हो कि उसमें 84 सेकंड का मुहूर्त था, पर वो शुरू कहां से होता है? अगर आपने कभी भी उसको सुना हो, लोग को तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे, द्वितीय परार्ध ब्रह्मा की आयु मतलब 155 ट्रिलियन ईयर्स। वैसे बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 14 बिलियन ईयर पहले दुनिया बनी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में जो नई फाइंडिंग की है उसमें बहुत सी गैलेक्सीज ऐसी आई हैं जो 14 बिलियन से आगे की आ रही हैं। तो नाउ दैट थ्योरी हैज बिकम डिबेटेबल। फिर वहां से आते हैं श्वेत वाराह कल्प यानी 1.97 बिलियन ईयर्स, फिर आते हैं वैवस्वत मनवंतरे, फिर आते हैं कलयुग यानी 5125 ईयर्स, फिर आते हैं विक्रम संवत में 2081 साल, फिर आते हैं वर्ष में, वर्ष के भाग में, उत्तरायण सूर्य में, फिर आते हैं महीने में, और उसके बाद वार नक्षत्र होते हुए 84 सेकंड तक। मैं कहना चाहता हूं ये भारत की सनातन यात्रा है जो 155 ट्रिलियन ईयर से लेकर सटीक कैलकुलेशन 84 सेकंड तक का करती है। मुझे लगता है दुनिया में कोई धर्म संस्कृति ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार का करने की क्षमता रखती हो, वो सिर्फ हमारे यहाँ। मगर उसके बाद भी माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कुछ लोगों को, और इस बारे में दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सैगन, जिसने फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट वॉयजर जो सोलर सिस्टम के बाहर गया है उसका जो मैसेज है कंपोज किया है, उसने लिखा है, उसका वीडियो कोई जाके चेक कर सकता है, नाउ ओनली द एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन, कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। मगर एक बात मैं यहां पे राजनीतिक भी कहना चाहता हूं। मान्यवर बहुत से लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है, मगर मैं कहना चाहूंगा उन सारे लोगों को देख लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है, इसका मुहूर्त कैसा था, जरा इस पे विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जहां से चले हैं, पहले वो चले असम से तो देवड़ा साहब मुंबई में अलग हो गए, वो बंगाल की तरफ उठे तो ममता दीदी ने अलग स्टैंड ले लिया, उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अलग स्टैंड ले लिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, बिहार पहुंचे तो गठबंधन ही पलट गया, आज वो रांची में है। साहब सरकार तो बच गई पर वहां भी मुख्यमंत्री चला गया। तो जरा विचार करना चाहिए उन लोगों को
कि उन्होंने ये कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया है, परंतु उसके उपरांत जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, तो उसके लिए जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा। आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। और यह भी एक संयोग देखिए कि कल माननीय खड़गे जी के मुंह से निकल गया था 400 पार, और शाम को दीदी ने कह दिया कांग्रेस को तो 40 की दरकार। मतलब आप ये सोचिए कि यहां पे विषय आया 400 पार, वहां आया 40 की दरकार, और गठबंधन में मची हुई है ऐसी मारामार कि प्लीज प्रमोद जी, मान्यवर, प्रमोद जी आज गठबंधन के अंदर जिस प्रकार की मारामार है, तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के लोगों के दिल में तो ये विचार आ रहा होगा, आपको मौका आएगा, बोलिएगा प्लीज। कि ये रश के जन्नत मुझे कोई आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपको मौका आएगा तो आप बोलिएगा। अच्छा चलिए, ममता दीदी ने तो कहा ना 40 की दरकार, इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि 40 भी नहीं मिलेंगी। तो महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आज जिस ढंग की गठबंधन में मारामार हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वो गठबंधन के सदस्य लोग कह रहे होंगे कि ये रश के जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था है मेरे परवरदिगार। और एक बिंदु मैं और कहना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से आज हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि साहब वो SC ST OBC के आरक्षण को लेकर, उनकी जनगणना को लेकर बहुत कंसर्न है। यदि उस आरक्षण के लिए इतनी वेदना है, चाहे वास्तविकता में वेदना है या वोट के तराजू पर तौल कर, सियासत के माहौल को खोल कर, तब देखा जाता है कि किस आरक्षण का कब इस्तेमाल करना है। अगर ये सच था, तो क्या ये सच नहीं है कि इन्हीं लोगों के शासनकाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC ST OBC का आरक्षण समाप्त हो गया, कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। 81 में फिर इंदिरा जी की सरकार लाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर क्वैश कर दिया, 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार फिर लेके आई। कहां चला गया, कहां चला गया? इसलिए कि वोट बैंक पे तौला जाता है कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, फिर उसके लिए बोला जाता है। जामिया में खत्म, जम्मू कश्मीर में SC ST OBC का आरक्षण नहीं, क्यों नहीं? और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं समाज के उन वर्गों के लिए, जम्मू कश्मीर इस देश का एक ऐसा इकलौता राज्य था जहां वाल्मीकि समाज के प्रतिभाशाली बच्चे चाहे कितना भी पढ़ जाएं, सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते थे। जब 370 हटी है, उसके बाद वो बराबरी मिली है। आप इस सीमा तक दबा के रखते थे, और हमने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। यह दर्शाता है मोदी जी की सोच और आपकी सोच में कितना बड़ा अंतर है। और फिर इतना ही नहीं है माननीय सभापति महोदय, बाकी तो छोड़ दीजिए, ये लोग तो अगर इनके नेता के घर पर भी अटैक हो जाए और लगे कि वो दूसरा वाला वोट बैंक ज्यादा तगड़ा है, चुप्पी साध लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के एक MLA थे, 2018 या 20 की बात है, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, अनुसूचित जाति के थे, उनके घर पर अटैक हो गया और अटैक करने वाले लोग जला के फूंक दिए। उसके बाद भी लोग शांत रहे, उन लोगों को बेल भी मिल गई, वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट गए बेल क्लैश कराने, अब तो खैर पार्टी भी छोड़ के चले गए। तो ये तो वो है कि वोट बैंक की सियासत के लिए अगर घर फूंक तमाशा देखना हो तो वो भी देखने के लिए तैयार रहते हैं, इनको उसमें भी किसी भी प्रकार की। और फिर मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, वो कौन था ये बताइए। अगर इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने, मान्यवर सभापति जी, सबकी कोई बात अगर इस देश में बोले प्लीज प्लीज, अरे सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में किस प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? आपने तो नहीं कहा SC ST OBC और गरीब का होना चाहिए। हमारे मोदी जी ने कहा गरीब का पहला हक है, वंचित का पहला हक है, किसान का पहला हक है, महिला का पहला हक है। यह दिखाता है कि आपकी हकीकत क्या थी, दिल में क्या है और सामने क्या है। फिर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये हकीकत जो बोली थी मनमोहन सिंह जी ने, ऐसे ही नहीं थी। कर्नाटक की सरकार ने एक आदेश निकाला है, जिस समय चुनाव लड़े थे तो कहा था कि हम सबको जैसे 2000-3000 की जिस प्रकार की छूट देंगे, चुनाव में आ गए,
फिर आदेश निकाला कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग 4 व्हीलर खरीदना चाहेंगे तो सरकार 50% पे करेगी। यानी अगर 4 लाख का होगा तो 2 लाख पे करेगी, 6 लाख का होगा तो 3 लाख पे करेगी। यह है असलियत। एक वोट बैंक के लिए 2 और 3 हजार और दूसरे के लिए 3 लाख। मान्यवर, इसलिए जो पहले था वही आज भी है। और फिर मैं और बताना चाहता हूं, आपस में बात ना करें। हमारे पश्चिम बंगाल के लोग, माननीय सभापति जी, अभी पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार को तलब किया है। किस बात के लिए तलब किया है? क्योंकि उन्होंने 81 जातियों को जोड़ा ओबीसी में और उसमें 73 मुस्लिम थे। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हुआ? साहब अभी तक उसका सही जवाब नहीं दे पाए। और मोस्ट बैकवर्ड के लिए उन्होंने 87 जातियों की रिकमेंडेशन की, उसमें 80 मुस्लिम थी। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा है और मेरी जानकारी के अनुसार 8 फरवरी को उनके चीफ सेक्रेटरी को, वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया हुआ है। यह मैं देश के सामने रखना चाहता हूं, यह है असली हकीकत। ऊपर से खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। इसलिए हम ईमानदारी के साथ, पूरी संवेदना के साथ सभी, हम समाज के सभी वर्गों में किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर ईमानदारी से उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। और ये वैसे विचार हमारे मित्र लोग अन्यथा न लें, ये उन लोगों की आदत, माननीय सभापति महोदय, पुरानी है। अगर इन लोगों को कोई आपत्ति हो तो मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में अपने भाषण में कहा था, और किसी को समस्या हो तो डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन 2014, उसके वॉल्यूम 17 और पार्ट 3 में वो पूरा भाषण है, जिसमें वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि नेहरू जी को माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति कुछ बहुत ज्यादा लगाव है और इसलिए वो दलितों के हितों की अनदेखी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, परंतु दलितों की कीमत पर मिले, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और मैं उनका वर्ड कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी पिछले 20 साल से इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2000 से अधिक भाषण दिए होंगे और उसमें उन्होंने अनेक बार मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, मगर दलितों के लिए उनको वो देखने को नहीं मिलता। और उनका जो वर्ड है कि मैं मुस्लिमों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा विचार है, परंतु मुस्लिमों को दलितों की कीमत के ऊपर आनंद करवाया जाए, यह मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि दलितों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। ये डॉक्टर अंबेडकर के स्पीचेस में लिखा हुआ है। और आज वैसे एक और बात बता दूं मान्यवर, आज ये लोग अपने हिसाब से कैसे बदलाव करते हैं। मान्यवर, मैं देश के समक्ष ये कहना चाहूंगा कि जातिगत आइडेंटिटी की बात आती है तो इस देश में एक ही नेता है जिसकी जाति, उपजाति और गोत्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, क्योंकि तब उनको लगता है कि उसका फायदा हो सकता है। और इतना ही नहीं, जनेऊ भी दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी तब लगा कि शायद इसका फायदा हो सकता है, मगर फिर जब लगा कि कुछ और होना चाहिए तो बदल गए। सिर्फ 5 साल के अंदर बदल गए। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं मान्यवर, जब ये लोग जातिगत विषय की बात करते हैं तो ये भी एक संयोग, इसको अन्यथा न ले। ऑन द लाइटर नोट मैं कहता हूं, इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी जातिवाचक संज्ञा अपने नाम के आगे लगाई। हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा था, मगर एक ही पंडित जी हुए भारत की राजनीति में, यानी तब उसका फायदा था तो उस चीज को आगे करना है, आज दूसरा फायदा है तो दूसरे को आगे करना है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार इनका सामाजिक न्याय का समीकरण बदलता रहता है, यह मैं देश को बताना चाहता हूं। जबकि हमारी सोच पिछले 70 सालों में कभी भी किसी भी प्रकार से बदली नहीं है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, इनके एक नेता थे, कल माननीय खड़गे जी ने एक विषय की बात कही, जिस विषय की उन्होंने ट्वीट की बात कही, वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया था और यह भी बता दिया गया था कि वो गलत ट्रांसलेशन था, मगर शायद उनको रिसर्च देने वाली टीम ने ध्यान नहीं दिया। वो जिस सीएम के बारे में बता रहे थे वो जानते हैं किसका ट्वीट लिख रहे थे? वो उसी के पहले सीएम गोपीनाथ बारदोलोई जी के द्वारा ट्रांसलेटेड का वो सीएम वो लिख रहे थे और उसका ट्रांसलेशन गलत हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, वो आप इस सीएम की बात कर रहे थे या उस सीएम की बात कर रहे थे। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि
कि उस विषय की जानकारी आधी अधूरी होने के कारण यह समस्या आती। मगर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे, आवश्यकता होगी तो मैं जगह का नाम, वर्ष तो बता ही देता हूं, 2018 में विधानसभा चुनाव में, और इसका न्यूज भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, मोदी जी का नाम लेके हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, ये इनकी जाति क्या है पता है आपको? इनको हिंदू धर्म के बारे में पता है। फिर उमा भारती जी का नाम लेते हैं, फिर हमारे और ओबीसी नेताओं का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं इनको कुछ पता होता है, फिर अपनी जाति का नाम लेते हैं, ये सिर्फ हमको पता होता है। मान्यवर, इस ढंग की बात मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी भाजपा के नेता ने बोल दिया होता तो जैसे वो एक गाना था ना, आरा हिले छपरा हिले, ये दिल्ली मुंबई नहीं लंदन न्यूयॉर्क हिल गया होता, दुनिया के समुद्रों में सुनामी आ गई होती, पर आपने उनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। यह मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मौके पर परिस्थिति के अनुसार ये अपना समय बदलते रहते हैं, और इसके बाद अगर आवश्यकता हो तो ये चीज जाकर वेरीफाई की जा सकती है। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ये विचार कांग्रेस पार्टी का आज जो है ये हमेशा से था। आज कितने संयोग की बात थी कि जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, तो आपको ध्यान है, शायद हमारे बहुत से लोगों ने ध्यान हो तो मैं बता दूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए थे, तो उसकी सबसे पहली गवाही किसने दी है? यानी जो लाइट दिखी थी वो बताई थी एक यूपी पुलिस का सिपाही था अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत ने यह गवाही दी है कि उसे दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी, और उसके बाद जब वो दिव्य रोशनी हटी तो वहां श्री रामलला विराजमान थे। और जो पैरोकार था इकबाल अंसारी बाबरी पक्ष का, देखिए उसको भी इनवाइट किया गया और वो आ भी गया। अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई मगर इनको रोशनी अभी तक नहीं दिखी। इकबाल अंसारी जो था वो आ गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, उसका तो इकबाल बुलंद हो गया, इनका इकबाल नहीं बुलंद हो पाया, जमींदोज रह गया। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस आधार के ऊपर ये निर्णय लेते हैं। वैसे इसमें भी इनको कोई नई बात नहीं है मान्यवर, ये इनकी समस्या पुरानी है। 24 अप्रैल 1951 को पंडित नेहरू जी ने जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो सौराष्ट्र के राज्य प्रमुख थे, लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ टुडे, उनको लेटर लिखा था सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पे कि मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि हमारे कुछ मंत्रिमंडल के सहयोगी जा रहे हैं, और मैं, उन्होंने कहा कि आई एम ट्रबल्ड बाय दिस रिवाइवलिज्म, ये वर्ड है, यानी मैं इस पुनरुत्थान से बहुत दुखी और समस्या में हूं। मगर साहब, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो होना था वो हो गया। और मगर यह दर्शाता है कि जो आज की यह प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति गांधी जी की नहीं थी। गांधी इस देश की धर्म संस्कृति को मानते थे, नेहरू जी की सोच अलग थी। तो मैं कह सकता हूं कि आज की कांग्रेस गांधी जी की सोच से ज्यादा नेहरू जी की सोच के ऊपर चलती है, इस कारण से यह समस्या आती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण और कोट करना चाहता हूं मान्यवर, ये भी सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 में है। 1959 में उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, किसी को समस्या हो तो मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं। ललित कला अकादमी में वो भाषण देते हुए कहते हैं, मिस्टर हुमायूं कबीर रिफर्ड टू द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ साउथ एंड ताजमहल, बट वेन एवर आई गो टू साउथ टेम्पल्स ऑफ साउथ, इन स्पाइट ऑफ देयर ड्यूटी आई कैन नॉट स्टैंड, आई फील सप्रेस्ड। और दूसरी तरफ कहते हैं, बट जब मैं ताजमहल देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी लगती है। सेम उसमें, और ये ऑल इंडिया रेडियो के जो टेप्स अवेलेबल हैं नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में, उसमें भी अवेलेबल है 1959 के उस टेप्स में। ये सिर्फ मैंने बताने का प्रयास किया कि ये सोच इस प्रकार की थी जो भारत की वास्तविक शक्ति और सत्ता को उभरने न देने के लिए थी, और इस कारण से इनकी सोच ऐसी रही। हमारी सोच क्या थी, मैं एक छोटी सी बात कहूं, प्रधानमंत्री जी ने उन सारे श्रमिकों का सम्मान किया, उन पे पुष्प वर्षा की, और ताजमहल के बारे में क्या कहानी है कि श्रमिकों के हाथ कटवा दिए गए थे। और मुझे आश्चर्य है कि जो लोग सर्वहारा की सिद्धांत की बात करते वो उस कहानी को जुलाइज करते थे, और सोचिए हमारे दिमागों में कैसे बैठा दिया गया कि हमें वो सही लगने लगा कि वो एक अच्छी बात थी। यानी एक प्रधानमंत्री
जो एक मंदिर निर्माण में जुड़े हुए श्रमिकों का सम्मान कर रहा, उस पर पुष्प बरसा रहा है, वह तो गलत था और हाथ कटवाना सही था। मुझे लगता है वो महिमा मंडन करने लायक था, उसे देखने में आनंद की अनुभूति होती थी। मुझे लगता है कि यह समस्या सोचनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात और मान्यवर, ये लोग कहते हैं भाई जातिगत जनगणना कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पहले तो बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी, किसका निर्णय था ये 1951 में नेहरू जी का निर्णय था ना, और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि चुनाव तो 52 में हुए। और फिर हमने बचपन में सभापति महोदय सुना, इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या था, 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आजकल आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे, जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था? तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। एक और मैं बात कहना चाहता हूं मान्यवर, एक और विषय, माननीय खड़गे जी ने कहा था कि देश की साक्षरता दर और एक इनकलाब आएगा, 1951 में 18% थी। मैं कहना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, इनकलाब आएगा नहीं, इनकलाब आ चुका है। जो जो साक्षरता दर बढ़ती चली गई, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला गया। मैं आपको सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की 1991 में, हम मुख्य विपक्षी दल बन गए। इंडिया की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हो गई। 2001 में साक्षरता दर ने क्रॉस किया 60%, हमारे नेतृत्व में गठबंधन की सरकार आ गई। 2011 में 70% क्रॉस किया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार आ गई। 2021 में 80% क्रॉस करेंगे, 400 के बहुमत की सरकार आएगी। क्यों? जो समाज शिक्षित हो रहा है, सत्य का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेगा उसके मन में कोई कंफ्यूजन या संशय नहीं रहेगा। और भारत की युवा पीढ़ी उसको देखकर पूरी तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। एक और आरोप लगाया जाता है कि साहब ईडी और सीबीआई का बड़ा उपयोग हो रहा है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज हम लोग 2024 में बैठे हैं। आज दो दलों का नाम सबसे ज्यादा आता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल, बिहार और झारखंड का। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग बचपन में देखते थे, फिल्मों का बड़ा फेमस डायलॉग होता था, 20 बरस पहले की बात है। आज मैं कहना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है, 1994। सिर्फ वो उदाहरण दे रहा हूं जो कोर्ट से प्रूव हो चुके हैं। एकमात्र केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह प्रूव हो गया कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिस समय झारखंड के जेएमएम के सांसदों ने नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार बचाई। ये तब क्या मोदी जी थे क्या, अमित शाह जी थे क्या, भाजपा थी क्या? भाई, आप तो उस जमाने से ऐसे चलते चले आ रहे हैं, आज खामखा में हम पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए, हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और आज कहते हैं कि साहब वो तो 2014 के बाद प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूं 1994 में भी ये साथ साथ थे जेएमएम कांग्रेस वाले, और आज भी साथ साथ हैं। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, एक पुराना गीत था ना, तो उसको थोड़ा परिवर्तित कर दें कि शायद ये दोनों दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, इसलिए आज आप जिस प्रकार का विभाजन, और मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे विरोधियों को कोई आपत्ति है तो मैं विनम्रता से कहता हूं 1990 के बाद की एक लोकसभा बता दें जिसमें इन दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे हो। श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने से लेके मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकारों के जमाने में। तो भाई, अगर आपका तो ये भ्रष्टाचार से याराना बहुत पुराना है और इसके लिए सिर्फ मोदी जी पर इल्जाम लगाना है, मैं तो ये बात सही नहीं मानता, ये यथार्थ है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार को कवर अप करना होता है तो कैसे कवर किया जाता है मान्यवर? मैं एक बात कहना चाहता हूं, करप्शन को
एक सी से नहीं, कई सी से कवर किया जाता है। उसमें कास्टिज्म भी लाना है, उसमें कम्युनलिज्म भी लाना है और उसमें क्रिमिनलिज्म भी लाना है। इस ढंग से कवर अप किया जाता है करप्शन के लिए। तो जब जरूरत होती है तो देश के अंदर विभाजन की बात करो, ताकि मुद्दे से ध्यान हट जाए, करप्शन से बात हट जाए। तो कोई क्षेत्र की बात करेगा, कोई वर्ग की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर, इन्होंने जिस प्रकार के डिवीजन की बात कही, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि आपने, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। आज एक हमारी सोच, इनकी सोच में क्या अंतर है, जो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब अमृतकाल आ गया है और हमें इस प्रकार के सभी प्रभावों से अपने को मुक्त करना है और उस प्रभाव से मुक्त होकर हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ना है। यहां पर एक और बात कही थी हमारे विपक्षी दलों के लोगों ने, वो कहते हैं हम तो बहुजन की बात करते हैं। मान्यवर, ये वास्तविकता में कहते तो बहुजन की बात है, पर करते सिर्फ परिवारजन की बात है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं चलते, परिजन हिताय परिजन सुखाय चलते हैं। मगर इनकी सोच और हमारी सोच में अंतर यह है कि मोदी जी कहते हैं यदि आप बहुजन की बात करेंगे तो भी कुछ जन तो छूट जाएंगे। तो मोदी जी उस विचार से प्रेरित हैं जो कहती है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबको मिलेगा, जो सरकार की नीतियां होंगी, सरकार के लाभ होंगे, वो सबको मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव हमारी तरफ से नहीं किया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक और आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं होता। माननीय खड़गे जी ने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण अटल जी के प्रधानमंत्री का नहीं था। वो जब वो विदेश मंत्री बने थे तो विदेश मंत्रालय में जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो लगी थी, वो हटा दी गई। तो उन्होंने कहा नहीं, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जहां जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। ये हमारा संस्कार है और मोदी जी ने उसको कितना आगे बढ़ाया। सरदार पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना दी। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके कालखंड में संघ पर प्रतिबंध लगा था, मगर अफसोस की बात यह है कोई भी आज तक गया नहीं है। अब ये बताइए, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें भारत रत्न मिला। प्रणब मुखर्जी जी कांग्रेस के नेता थे, उन्हें भी भारत रत्न मिला। क्या पद्म अवार्ड तरुण गोगोई जी को नहीं मिला? क्या एससी जमीर जी को नहीं मिला? और अभी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। यह ईमानदारी है हमारी सरकार की। समाज के जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस महापुरुष ने जो जो योगदान दिया, हमने ईमानदारी से किया है। और इनके यहाँ ये सम्मान की बात करते, इनके यहाँ तो ऐसा था मान्यवर, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपने अंदर गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इन्होंने अपने नेताओं को नहीं दिया, हमने सबको दिया। ये मोदी जी की विराट सोच और इन चीजों के बारे में हमारा जो नजरिया है वो उसको दर्शाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये उदारता मोदी जी कब दिखाते हैं, जब उनके लिए क्या क्या शब्द नहीं बोला जाता है। मतलब मृत्यु का प्रकार से लेके अनेक प्रकार की बातें, कब्र खुदेगी वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या चीजें हैं। मगर उससे अविचलित रहते हुए, जैसा मोदी जी ने एक बार कहा था कि लोगों ने उनसे पूछा कि आप साहब छुट्टी भी नहीं लेते, इतनी ऊर्जा कहाँ से पाते हैं? तो उन्होंने कहा था रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उसके बाद उसी से ऊर्जा पाकर पुनः आपकी सेवा में लग जाता हूं। आप सोचिए, आज डिजिटल डाटा का जमाना है। जितने अपशब्दों का प्रयोग माननीय मोदी जी के लिए किया गया होगा, इतना कभी किसी के लिए नहीं किया होगा। इसके बावजूद विपक्ष के जितने नेताओं को सम्मान दिया गया है, इतना भारत के इतिहास में कभी किसी को नहीं दिया गया होगा। इसलिए वो ऊर्जा पाते हैं जो समाज को बदलाव करने में एक महती भूमिका निभाती है। और उस नई सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां अंत में मैं एक विषय ये कहना चाहूंगा कि वो नई सोच क्या थी, एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हमारी सरकार आई, इस देश में 2 हिस्सों में बहुत बड़ी समस्या थी। देश का पूर्वी हिस्सा है, वहां पर पानी बहुत गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है, बिहार से लेके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। जो पश्चिमी हिस्सा है, राजस्थान और गुजरात, वहां पानी कम गिरता है, इसकी वजह से सूखे की समस्या रहती है। अब मोदी जी ने आने के बाद जो एक नई सोच के साथ सोचा, तो जहां पर पानी कम है तो वहां सौर ऊर्जा की अधिकता है, तो सोलर एनर्जी के अंदर उसके पे एक नया स्वरूप शुरू किया गया। और जहां पर पानी की अधिकता है वहां नदियों के पाट को ड्रेजिंग करके और गहरा किया गया और इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत की गई।
यानी जो समस्या है उसके अंदर से कैसे एक नया रास्ता निकाला जा सकता है वो देखा। और सोलर एनर्जी में हम वहां पर पहुंचे कि आज दुनिया में हम 5th स्थिति में है सोलर एनर्जी में, जो हमने 2022 में अचीव कर ली है। तो हम 4थे नंबर के देश हैं दुनिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में क्लीन एनर्जी के फील्ड में खड़ा हुआ है। हम 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, हम 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, हम 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दुनिया में नंबर 1 है। और सभापति महोदय, डिजिटल ट्रांजैक्शन में 2022 में भारत ने 46%, दुनिया का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुआ, जो इसके बाद के 4 देशों से मिलाकर उससे ज्यादा था। अर्थात एक नई सोच, सोलर एनर्जी, इनलाइन वाटरवेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत को एक नई दिशा में ले जाने में सफल रहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नई सोच के साथ इस अमृत काल में हमें आगे बढ़ना चाहिए और ईमानदारी से एक यथार्थ और स्वीकार करना चाहिए। महोदय, हमारे देश में क्या कोई ऐसी घटना हुई, अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक डूब गया, हमारे यहां कोई बैंक डूबा क्या? चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डूब गई, हमारे यहां कोई डूबा क्या? चाइना के सबसे बड़े उद्योगपति जैक मा मतलब अघोषित रूप से गायब हो गए, वहां के सबसे बड़े जो बैंकर हैं बान फाओ, वो भी 1 साल से गायब है। इसके बावजूद, और अगल बगल क्या हो रहा है वो तो छोड़ दीजिए, जो पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है, इसके बावजूद इन परिस्थितियों में से जिस ढंग से मोदी जी ने इसको निकाला है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको उनका साथ देना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। ये काम इतना आसान नहीं था, और आज स्थिति सिर्फ इतनी नहीं बनी है, आज हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो 2 परस्पर विरोधी देश हमको समान रूप से सम्मान देते हैं। अमेरिका कहता है कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और रशिया कहता है कि इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल पार्टनर। यह स्थिति जो मोदी जी के नेतृत्व में आई है, ये दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मोदी जी की तरफ से, कि पत्थर पिघलाने का हुनर मुझे आता है, पत्थर को यूं पिघलाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूं कि समंदर मेरे घर आता है। और मैं अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि आज भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम एक बिंदु बस और कह देता हूं, उसके बाद समाप्त करता हूं। आज हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में हमको जैसा कोऑपरेशन मिल रहा है और भारत की तरफ जिस ढंग की आशा भरी निगाहों से देखा जा रहा है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। मुझे याद है माननीय सभापति महोदय, हम लोग बच्चे थे, राम मंदिर आंदोलन समय कहा जाता जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज हकीकत क्या है? आज भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बन रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है, कॉरिडोर भी बन रहा है। G20 समाप्त हुआ तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुके व्यापार पे बात करने के लिए। आज हमारा सऊदी अरब के साथ व्यापार हो या जो भी व्यवस्था हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और वैसे जो लोग साइंस में, टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, उन्हें पता हो कि अब तेल की टेक्नोलॉजी का समय 20-25 साल का ही रह गया, वो भी खत्म होने वाला है। तो इसलिए अगर आप देखें कि यदि कोई दृढ़ता के साथ काम करे तो क्या कुछ किया जा सकता है, जो हमारी सरकार ने किया है विश्व में इस विपरीत परिस्थितियों में, उसको मैं कह सकता हूं कि यह इतना आसान काम नहीं था। यह वैसा था जैसे टूटे हुए तार से कोई संगीत बजाना हो या पत्थर पे कोई पौधा उगाना हो, मगर वो भी करके दिखाया है मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने। और अब इस अमृत काल के उषा काल में एक नई स्वर्ण रेख भारत के लिए दिख रही है। तो मैं अटल जी की इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं, जो मोदी जी के एफर्ट्स के लिए एकदम सही उतरती है कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। यानी अरुणिमा की रेख मतलब एक गोल्डन लाइनिंग इन द स्काई। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो इस मेरा मानना है, चुनाव में खूब लड़िए, ऊंचे स्वर में हमारा विरोध करिए, पर भारत के विकास के इस गीत को आप भी स्वर दीजिए। इसी अनुरोध के साथ अपना निवेदन समाप्त करते हुए राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद। एक मिनट माननीय प्रमोद जी। माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, पार्टी ने आपको 20 मिनट दिया था, आपने अतिरिक्त लगभग 30 मिनट 22 सेकंड बोला, जो पार्टी ने पहले से सूचित किया था। पार्टी के समय से ये समय घट जाएगा। अब मैं एक मिनट में आ रहा हूं माननीय जी। जो सूची पहले से थी उस सूची में एक परिवर्तन था। श्री वी विजय साई रेड्डी जी के बाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का नाम था, फिर माननीय दिग्विजय सिंह जी का। मैं आग्रह करूंगा आपसे बोलने के लिए। इसके पहले प्रमोद जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कुछ कहना चाहते हैं क्या? पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस रूल के तहत? 238 देख लीजिए। तो आपको तो सब याद रहता है, मुझसे आप बताएं। अरे आपको तो याद रहता है। जी आप बताएं। माननीय सदन में जो कुछ बोला जाए वो सत्य पे आधारित हो, और अगर सत्य पे आधारित न हो, तथ्य हो, तो जो सदन की कार्रवाई है उसे तोड़ मरोड़ कर नहीं रखा जाएगा। नेता विरोधी दल ने शुक्रवार को बोलते हुए कहा था कि नारा तो लग रहा है 400 सीटों का, पर ये 100 भी नहीं आएंगे। अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 400 सीटें, वो बात की 100 भी नहीं आएंगी, रह गया ये तथ्य गलत कोट। अभी धन्यवाद इकट्ठा दे लीजिए। धन्यवाद। एक बात और हो गया। नहीं धन्यवाद हो गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने मंत्री पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है ये। प्लीज आपने स्पष्ट कर दिया। माननीय दिग्विजय सिंह जी प्लीज, आपने बोल दिया। प्लीज हो गया। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आपने बता दिया। प्लीज माननीय दिग्विजय। माननीय सभापति महोदय, अभी विद्वान हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो अपना भाषण दिया वो मूल रूप से उसी विचारधारा पर केंद्रित था जिस विचारधारा से वे आते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर इस देश पर राज किया, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में जिस प्रकार से फूट डालो और राज करो की बात कर रहे हैं, उसी पर उनका पूरा भाषण केंद्रित था। मैं तो उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, उन्होंने 500 वर्षों बाद भगवान राम को उन्होंने स्थान दिलवाया। 500 वर्षों बाद। नरेंद्र मोदी जी इतने महान हैं कि 500 वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए, लेकिन नीरव मोदी जैसे लाखों करोड़ रुपए लेकर भागे हुए लोगों को वापस नहीं ला पाए। ये लोग कहां है? वो लोग जो आपने वादन वापस लाएंगे, भगोड़ों को वापस लाएंगे, कहां है वो आप? बात वही है। इन्होंने केवल अपने पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब भगवान राम के भक्तों को आप बांट रहे हैं। ये मैं आपसे कह देता हूं, मैं आपसे कह देता हूं। सीट पर बैठ कर ना बोले। सभापति महोदय, अब मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर जहां बाबरी मस्जिद तोड़ी वहां नहीं बनाया। वो जहां कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिकृत की थी और जहां शिलान्यास कराया था, वहां मंदिर का निर्माण कराया है। इनका वही मंदिर वहीं बनाएंगे का कारण ये था कि जब तक मस्जिद नहीं टूटेगी तब तक इनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यही भारत जोड़ो यात्रा हम लोगों ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर राहुल गांधी आज यात्रा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमेशा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, बाद में जोड़ा सबका विश्वास, और अब कह रहे हैं सबका प्रयास। मैं तो आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हर पहलू पर मोदी जी विफल हुए हैं। हां, इन्होंने बहुत सारी सफलताओं का उल्लेख किया है, लेकिन वो सारी योजनाएं जिन पर ये सफलता का श्रेय ले रहे हैं, ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रारंभ की जा रही योजनाएं थी, जिनको अलग अलग नाम दे दिया गया। जनधन की बात की, जनधन का नाम बदला गया, लेकिन छोटे छोटे खातेदारों का खाता खुलवाने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बात सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं,
लेकिन सर ये कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का विश्वास, ये कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का विश्वास, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये बड़े नतीजों की बात करते हैं, 200 पार, 300 पार, लेकिन प्रतिशत वोट 40% से कम आते हैं। इसलिए कहां से कह दिया सबका साथ, सबका विश्वास? विश्वास माननीय सभापति महोदय तब होगा जब इस देश के हर वर्ग, हर धर्म के पालन करने वालों लोगों का ये विश्वास अर्जित करेंगे। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक बिल्कुल असत्य बयान दिया है। उन्होंने कभी नहीं कहा जिस बारे में इन्होंने उनका उल्लेख किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं, 3 हथियार हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के उनको भी उसका समिति का सदस्य बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया और उन्होंने यहां से बिल पास करा लिया। जब सारे विपक्ष के संसद सदस्यों को उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया था। और क्या किया कि प्रधानमंत्री जी के अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत मंत्री भी उसका सदस्य होगा। इसका मतलब कि 3 सदस्यों में 2 जब प्रधानमंत्री जी द्वारा होंगे तो उससे क्या उम्मीद की जाए? और यही नहीं है, आज ये बात साफ हो गई है कि बीईएल के अंदर 4 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति किनकी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। सभापति जी महोदय, हमारी मांग क्या है? आज कंप्यूटर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारा जो मकसद है वोट डालने का, क्या वो उसका निर्णय हमको मिलता है क्या? आज सॉफ्टवेयर निर्णय करता है कि आपको मशीन क्या नतीजा देती है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि माननीय चुनाव आयोग को वो सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। हमारी क्या मांग है? ये मेरा अधिकार है, एक वोटर के नाते अधिकार है कि मैं जिसे वोट चाहूं उसको वोट पड़े। महोदय, कि इस पूरे विश्व में केवल 5 देश ऐसे आज हैं जहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है। उसमें से ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो पब्लिक डोमेन में है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल से, क्या कारण है कि वो सॉफ्टवेयर बताने में क्यों इतने परहेज करते हैं? क्या डर है उन लोगों को? आज जब मांग उठ रही है जनमानस में चारों तरफ से कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, उस समय पूरे देश में ईवीएम का प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग प्रदर्शन कर रहा है। अरे, हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी बात इतनी सी मान लीजिए, या तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी रेजोल्यूशन में अपना मत रखा था, उस पर हम आज भी कायम हैं। और यदि आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है
तो आप हमारे हाथ में वीवीपैट स्लिप जब नीचे गिरती है तो उसको हमारे हाथ में दे दीजिए और हम जाकर मतपेटी में डाल देंगे। इसमें क्या ऐतराज होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय? मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि दूसरा हथियार इनका धर्मांधता का है। धर्म से इनका कोई नाता नहीं है। हिंदुत्व एक आइडेंटिटी थी, सावरकर जी ने जिसको नाम दिया था, और उन्होंने खुद ने कहा था इसका कोई धर्म का लेना देना नहीं है। लेकिन बिना धर्म का उपयोग करे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में चुनाव में नहीं जा सकती। और यहां तक कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी खुद उन्होंने वहां पे आम सभा में कहा, बजरंगबली का नाम लो और कमल के फूल पर बटन दबाओ। चुनाव आयोग माननीय सभापति महोदय, मेरी आपत्ति इस बात की है कि अगर छोटी मोटी बात भी अगर कोई और अन्य दल का कर देता उसको नोटिस मिल जाता, लेकिन खुले रूप से नरेंद्र मोदी जी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन किया है। अब इसमें सेक्शन 123(3)(3)(a) का, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? आज भी पूरे देश में धर्म के नाम पर ये व्यवसाय कर रहे हैं। वो राम मंदिर का निर्माण जो कि नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट को सौंपा था, चारों शंकराचार्य और स्वामी रामानंदाचार्य के रामनिषाचार्य जी, 5 लोगों का रामालय ट्रस्ट बनाया, उसके हाथ में क्यों नहीं दिया? किसको दिया? विश्व हिंदू परिषद के हाथ में। और विश्व हिंदू परिषद के हाथ में देकर निर्मोही अखाड़ा जो पूरे तरीके से 10 मिनट नहीं 5 मिनट अतिरिक्त हो गए जो हमारे पास सूचना थी, वो 10 मिनट के लिए। सर देखिए, आपने देखिए मेरे इस बारे में सर, मेरी आपसे 5 मिनट का समय और दीजिए, 2 बातें मुझे और करना है। आपको 5 मिनट दिया गया था, ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट समय तय था आपके लिए। देखिए बात यह है, बात यह है हमारे अब कोई समय ही नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का समय हमारे इसमें नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। अभी जो नियम तय है उसी के अनुसार चलेंगे। प्लीज आप कंक्लूड करें। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन हो रहा है, उस पर कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज तीसरा हथियार इनका है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए का। इसमें मोदी जी को कहते हैं मेरी गारंटी, मोदी गारंटी का एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। भोपाल के अंदर उन्होंने भाषण में कहा कि मेरी मोदी गारंटी, ये महाराष्ट्र के नेता, उन पर 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको मैं जेल भेजूंगा। लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ सभापति महोदय? जेल भेजने के बजाय उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। देवेंद्र फडणवीस कहते थे दादा चक्की पीसिंग, आज दादा जेल में नहीं, महाराष्ट्र के मंत्रालय में बैठकर मोदी जी गारंटी कर पीसिंग कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दल एंटी पुअर है, शुरू से रही है, कोई नई बात नहीं है। पूरे कॉर्पोरेट्स के पक्ष में इनका पूरी रही है पूरा। और इसीलिए कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में असमानता दूर करने का निर्णय था, उससे अलग अमीर और गरीब का असमानता बढ़ती चली जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके बहुत सारी बातें हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पूरे देश में जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, वो लोग हैं, उनको जेल भेजा गया। I'll take 2 minutes more. No, sir. 2 minutes. Please, 2 minutes more. Sir, 2 minutes. I've already given you please, 12 minutes. Conclude. Sir, I had spoken to chairman, sir. Sir, मैं उसके तहत ही समय दे रहा हूँ already. Please, I'll take 2 minutes. Conclude. No. Only 2 minutes. Please conclude. Only 2 minutes. I'm concluding. Conclude. Sir, पूरे देश में एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, इनको अपराध लगाकर बेल नहीं दिया गया। क्या भीमा कोरेगांव के हो, सीए एनआरसी के हो, जेएनयू की, इनके सब के खिलाफ कार्रवाई की। मैं आपसे अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, इस देश एनडीए के अलायंस पार्टनर्स, बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके लिए मेरी एक जो कविता 1940 में लिखी गई थी, उसमें पढ़ के वो उसी में खत्म करें। वो पेस्टा मार्टिन न्यूमन ने लिखी थी,
First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Thank you. Then they came for communists. I was not a communist because I was not a communist, so I did not speak out. Thank you. Then they came for Jews. I was Thank not you. a Jew, so I'll I did call not speak now out. Mani But when Shri they came for me, K.R. Suresh there Reddy was ji. no one left for... Mani Shri K.R. Suresh Reddy, please. मानी K.R. सुरेश रेड्डी, अब आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी. आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है. अब आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है K.R. सुरेश रेड्डी. Sir, he's talking, sir. A chief minister बात कर रहे हैं. Well, sir, my respect for the senior member, that's why I had to wait. Yes. Sir, on behalf of the BRS party and myself, thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to express my gratitude to the Honorable President for address to the joint session and to express my views on the motion of thanks. Chairman, sir, Deputy Chairman, sir, the President's address started with the new Parliament building and its magnificence and ended with the hope the Parliament would strengthen the aspirations of creating a new and healthy India. I would like to dwell on this particular subject, Deputy Chairman, sir, as Parliament is the fulcrum of our democracy, and more so being the 75th year of our republic. And with you being in the chair, it inspires me more to speak on its functioning, sir. So as the most acceptable form for diverse and acquiring and aspiring new nation, the Parliament was formed in the summer of 1952, and the journey began. And today, when we look back to what our founding fathers conceived for a nation and for Parliament, it doesn't really augur well for us today, sir. The Honorable President's advice to create a new and healthy tradition says it all. These statistics confirm our concerns and bestows upon us to work to stop the deterioration, lest I have not the slightest doubt that this Parliament will be treated by the public outside with utter contempt, unquote. Sadly, sir, the functioning and the statistics are literally getting us there. The functioning of the Parliament, if we see, the first 5 years, we worked for 130, the first 5 years, 130. Today, in 2023, we had the shortest budget session since 1950. Budget session of 2023, sir, 75% of the budget session passed without discussion. And if you look at the monsoon session of 2023, 43% of the scheduled time was utilized. Sir, I'm speaking on this subject, stressing more on this subject because from this very chair, I have seen the Honorable Chairman, the then Honorable Chairman, Shri Venkaiah Naidu Garu, expressing his anguish. We saw him breaking down. We saw his anguish in his tears. So more the reason, and also our present chairman, who has been inspiring us, guiding us, and his words, if I may quote. He said, our present chairman said, the legislature is the most impactful platform for reflection of all shades of opinions. Therefore, there is a need to be receptive to the other points of view. Consideration of the points of difference is essential, is what our chairman sir has been guiding us. The temples of democracy meant for dialogue, deliberations, debate, and discussions are these days hotbeds of disturbance and disruptions. As a consequence, Parliament and legislatures are fast surging into irrelevance. Sir, now this is an anguish expressed not only here. You have been the Deputy Chairman, sir. We have seen the presiding officers conference happening every year. The presiding officers of various state assemblies have been expressing similar sentiment. So the Honorable Speaker Lok Sabha has very explicitly said that the matter cannot be left only for a discussion there, but action should be taken. So it is a time for legislative reforms, parliamentary reforms, and like I said, more so in the 75th year of our republic, the reforms which would come in, I would treat that as India's republic moment.
because this house has to stay alive to the needs and aspirations of our people. So I have a few suggestions, sir, in this regard. The suggestions, Chairman, sir, यहाँ बहुत गर्मी होती है क्योंकि वक्त कम रहता है. हर कोई मुझे वक्त कम है, मुझे वक्त कम है, मुझे वक्त कम है, ये शिकायत आपको काफ़ी सुनाई देती है, सर. So why don't we increase the number of days? The working days of parliament, the working days of legislatures, let it be increased क्योंकि diversity है, regional parties more and more are coming in. So for them to reflect their ideas, the number of working days should be increased, sir. I was told that in some matured parliaments, the opposition decides the agenda for a day. वो भी आप मौका दीजिए. Let the opposition come and set the agenda for a day. That will be something innovative, creative, and also responsibility lies even on that side equally to ensure that the conduct of the business for the day would be completed, sir. या तो आवाज नहीं है ना हमारा. Abhi right, sir, private members bill. Private members bill is not just laid so easily. There is a lot of work which the MP's office goes through. बहुत तकलीफ से, बहुत जो constituencies में फिरते, देश में फिरते, संसद, when they acquire all this information, which is not there, which would be good for the country, they come in the form of private members' bills. Earlier, there were instances of private members' bills being accepted. There were instances, I would not like to quote all, but there are instances, sir. So I would suggest that private members' bills may be taken seriously, let them be debated, let the ruling party not stand on prestige. If something good is coming from this side, kindly accept it. Sir, I mean, a matured democracy like the UK, I was told that they have what they call it a free bill, a free voting on a bill. This was suggested by one of our former chairman, Ansari Saab. He said, other than money bills, other than bills relating to toppling the government, let there be a free will, as it is happening in the UK, where there's no whip issue. The members can debate on the bill. The ruling party should be free enough without a whip to express their opinion against the bill given by the minister. So this way, the bureaucratic dependence of the government will start reducing. The realistic approaches and the real needs of the people could be reflected through the bills in the parliament, sir. If this is accepted, this could be a very good norm for discussion. Then we look at the committees, sir. Now the committees, jab baar jaate, everybody says these are mini parliaments. I would say they are major parliaments. Kyunki wahan kuch dissidence nahi rehta. There is a very good consensus. There's a very free flow of opinion. So where the subject is the criteria. Now this is where the committees help the parliament and through parliament help the government. But unfortunately, the statistics speak otherwise. The statistics say, sir, in the 17th Lok Sabha, only 14 bills have been referred for further examination, that is till the budget session of 2023. As little as 25% of the bills introduced were referred to the committees in the 16th Lok Sabha. When you compare to 71% and 60% referred by the 15th and the 14th Lok Sabha respectively. Now this indicates a declining trend of national legislation being subjected to expert scrutiny. So I would advise that the committees, which are a core strength, may be utilized much more. So bills passed and the rules not being framed. इतना गर्मा गर्मी में आप bills pass करके ले जाते हैं बाहर, मगर उसके rules frame होते नहीं. आप देख रहे हैं subordinate legislation committee के सामने कई वक्त आते रहता है कि अभी rules not framed. So this is something which the government needs to seriously look at, sir. I mean, bills are sacrosanct. Now, Abhi Vijay Sai Reddy Sahab, he was talking about the AP reorganization bill. Yes, AP reorganization bill has been passed 10 years ago. It was passed not merely as a bill. It was passed due to the pressure of the struggle, due to the sacrifice of the people of Telangana, who have been fighting for a separate statehood. Kafi log, people have sacrificed their lives. A lot of employees have lost their jobs. People have left different countries, the good opportunities to come and fight for the cause of Telangana.
which was led by our leader KCR ji. Now 10 साल हुए वो बिल पास होके, आज भी लोकसभा राज्यसभा में क्वेश्चंस कम कि what are the assurances, what are the promises, they are not fulfilled. They are referred to the assurances committee. The other day, Keshav Rao Saab and myself, we had to with such a heavy heart, we had to look into the review of the bills passed but not implemented in the 10th year, that is the final year. So आप कुछ ना कुछ एक sunset clause लगाइए कि भाई आप 10 साल में खत्म करना है तो खत्म कर दीजिए, अगर करने का नहीं है come back to the house. If there's a problem, come back to the house. So this is how the effectiveness of any bill, of any legislation would help the sanctity of this house and also the people of the country at large, sir. Of course, we have seen, for example, the farmers' bills being withdrawn. Agar farmer bills aap committee ko bijate, so, things would have been different. But you learnt it the bitter way. Log sacrifice way, you have to come down on your prestige and eventually apologize and say, I'm taking back the bills. That wouldn't have happened if the parliament had functions to its full set principles. Unfortunately, that did not happen. In last many years, we are seeing how anti-defection is being evaded. Now, I would not like to blame any institute or any person, but the system itself has got that lukana which has to be cleared up. We have seen how anti-defection is evolving to get over the 10th schedule, to get over the problem of anti-defection, how parties are acting in that way. We have seen now, apart from individual shifting parties, now we have to look at this aspect where alliances are formed for elections, alliances fight the elections, and after the election, alliances break up. Wouldn't that reflect as a vote? Wouldn't that reflect as a defection? Wouldn't that go as against the spirit of the persons who have elected them? Because जब दो पार्टी मिलके चुनाव लड़े और चुनाव के बाद अलग-अलग हो जाते हैं, तो definitely this also attracts anti-defection, in my view. So और हम क्या ये सब मुद्दे कोर्ट को ले जा रहे हैं? And when we go to the court, Deputy Chairman, sir, we have seen how overburdened they are. We have seen instances of the Chief Justice of India breaking down. He says, I don't have the infrastructure to tackle so many cases. When they are so overburdened, why do you send it? क्यों ना हमारे committee constitute करिए, which keeps looking into it? Why new committee? Why not committee on law and justice? Why can't they keep saying, you kindly give the mandate to them? आप देखिए anti-defection कैसा evolve हो रहा है और उसके क्या-क्या amendments लाना चाहिए. They'll keep working on it. We have very eminent people here, senior lawyers, well experienced in public life. Who better than them to help us, guide us? So this is the area where, in my opinion, sir, we should see. So the other aspect of utilizing the platform, for example, Manipur. Now, Manipur has been in news, national news, local news, international news, demands from this side, demands from that side. There's a solution for this, sir. We have the Honorable President. Why not utilize the office of the President? Why not the President address the Assembly of Manipur? If she addresses the Manipur Assembly, that would give a healing touch. She will be the catalyst of bringing all the forces. She will give a leverage. She can create a platform on which the government can progress further on that, sir. But we are losing these opportunities. I have seen, sir, Dr. APJ Abdul Kalam addressing various assemblies. I have seen him addressing my assembly in Andhra Pradesh. He just didn't come and speak. He came with a development 10 charter development plan, and the plan was given to the government. The government said they will fulfill it, and the speaker said, we will refer it to the assurance committee if you don't fulfill it. So that is the strength of legislation, sir, which unfortunately हम बहुत दूर से डरते legislation के बारे में बात करते हैं जब इतनी ताकत हमारे पास है. तो इसकी इस्तेमाल करिए, ये होना चाहिए. So ये रही, sir, in the 75th year of Republic, the legislation. Then comes a diverse country like India. It needs planning. And planning doesn't mean just one plan. Planning, keeping the diversity of our country. So now we have the Niti Aayog doing this for us. Because planning is what kind of strengthens the federal structure of our country, sir. Every state has got different views, different needs. And that can be done only through planning, sir. So in my humble submission, sir, I would say that you need to strengthen the planning. Because earlier I have seen, when the earlier planning commission was there, chief ministers used to come to Delhi,
sit before the planning commission, express their views. Planning commission used to advise them, aapke yahan ye kami hai, ye kami hai. I have seen my chief minister then, Chenna Reddy Garu, coming here, after explaining it to the planning commission, ki I am from a Naxal affected area, I need special funds. Naxalism cannot be treated as law and order, it has to be treated as a socio-economic problem. Planning commission was impressed. Over and above the plan, they allocated funds which they could utilize in the Naxal affected areas to bring in development. So today with Niti Aayog, Telangana government said, Niti Aayog approved and said, let them give them 5,000 crores for our Mission Bhagiratha and also funds for the other development programs, sir. But unfortunately, the suggestions from Niti Aayog were not honored. So where is Niti Aayog now? The government didn't honor it. You made it toothless organization, which doesn't augur well for us. So with the diversity what this country has, the planning what is required, it not just Niti Aayog or planning commission. You need planning boards at the district level. हर जिले का एक ताकत है और उसकी मजबूती क्या है वो अगर जिले बोर्ड्स में आप रखेंगे जिले बोर्ड स्टेट बोर्ड नीति आयोग you link it up, that is when the development will come in, sir. नहीं तो देखिए आज कई records बताया गया वो what you call it, the inequality 1990 से अभी देखे तो sir, what is shocking is 50% of Indians who had wealth of almost 11% of wealth in 1990, जो bottom of the pyramid है, जो गरीब से गरीब है, they controlled 11% of wealth, and in 2020 their wealth dwindled to 6%. While you are talking about the fifth largest economy, fine, but where is it going? Why are the majority of the Indians getting poorer and poorer? Because of the planning. जिले प्लानिंग बोर्ड से शुरू करिए, फिर आप नीति आयोग के बारे में बात करिए. इनकम डिस्पैरिटीज रूरल अर्बन में सब हो रहा है सब. And sir, and finally, of course, sir, the farming. One major thing for the farming today, farmer का एक issue आता है sir. तो farmer issue 5 मंत्रालयों में जाता है. Finance Ministry for credit loans, your Commerce Ministry for other permissions, WTO. You have what you call it, the Food Ministry for the FCI control, the GMO for, by the Environmental Ministry, and Government of India keeps control of the Essentials Commodity Act. एक किसान के समस्या के लिए 5-6 मिनिस्ट्रीज है सर. एक से एक कभी-कभी टैंडम में काम नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. So my suggestion is, sir, in the 75th year of India's Republic, see the farmer who constitutes the majority, create the post of a deputy prime minister, taking care of farming because he will have the teeth. Let all the ministries which are dealing with farming be constituted with the farmer, and that would be the India's movement, sir. जब किसान गर्व से कह सकता है कि मेरे काम 2 मिनट में होता है. नहीं तो कॉमर्स मिनिस्टर बोलता है कि खरीफ में आप दान मत डालिए, फिर रबी में होते मुझे दान चाहिए, दान डालिए. ये कोई स्विगी सर्विस नहीं होता है ना सर, कि आपको जब चाहिए खाना लाए, जब चाहे जब दान दे, तो वो चलता नहीं. So, and this is no what you call it Chandrayaan science. This is Chandrasekhar's formula. Our Chief Minister KCR has done this. Bundelkhand, Rayalaseema, parts of Orissa, parts of Rajasthan, they were all declared as designated drought-prone areas. It is only Telangana in 2020 stood out not only out of drought-prone, but became the #1 state in the country earning the highest per capita income. So keeping this in view, sir, I would only suggest, sir, just a couple of 2 further demands, sir, with your kind permission. There is a request that a bench of the Supreme Court may be constituted. So why not in South India? So kindly look at Hyderabad. और मैं हिंदी में कह रहा चारों साहब का भाई हिंदी को जबरदस्ती मत डालिए. हिंदी अगर मन से बोलना चाहेंगे, अगर दिल से बात करना चाह रहे तो बात करने दीजिए, मगर जबरदस्ती आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी में ये कानून की बात करिए, तो ये जरा बहुत तकलीफ होने वाली बात है. So with these words, Deputy Chairman, sir, I thank you for the opportunity. Thank you. धन्यवाद माननीय श्री के आर सुरेश रेड्डी जी. माननीय श्री एडी सिंह जी. माननीय श्री एडी सिंह. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to speak on this important motion of thanks by the Honorable President.
The Honorable President, in the beginning of our address, which is actually the document of the government of the day, has enumerated a lot of achievements and development work which has taken place in the country in the last decade. On listening it appears that the whole of India is on a development path and there is prosperity everywhere. But let us take the situation in Bihar. Bihar is also part of India and there is hardly any development in the life of the common man. The government of Bihar was asking for a special category which is yet to be given to them. Secondly, the Honorable President has definitely talked about India, but what about Bharat, where we are feeding 80 crore people and we can understand the kind of lowering of their dignity and उनको हम लोग ने याचक बना दिया है. तो जहाँ तक माननीय राष्ट्रपति महोदया ने बताया है कि हर चीज़ ठीक हो गया है, वैसा नहीं था. और अगर आप बिहार के नए सरकार का हम देखें तो हमारे रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी फ्रॉम मेनी इयर्स हैज़ टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द concept of prohibition, where we are losing because they have created a liquor mafia where at least the state is losing 15 से 20 हजार crore. And of course, and also the sand mafia. So अगर special category हमें नहीं मिल रहा है, तो अगर केंद्रीय सरकार उनको प्रेशर दे के realities of life बताए, तो वो पैसा हमारे स्टेट कॉफर्स में आएगा और हम को फिर स्पेशल कैटेगरी के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज आई फील दैट वी आर लूजिंग एटलीस्ट 40,000 crores बाय क्रिएटिंग सैंड माफिया एंड द लिकर माफिया इन द स्टेट. एंड चूंकि अब ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, और ऐसे भी फेडरल गवर्नमेंट तो हमारा है नहीं, यूनिटरी गवर्नमेंट है, तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो, जाके देखे कि वहाँ पर सचमुच प्रोहिबिशन है या घर घर अवेलेबल है मेड टू ऑर्डर विथ एनी ब्रांड. और जहाँ तक 25 करोड़ लोगों को जहाँ तक बताया गया है कि ये पॉवर्टी लेवल से ऊपर हो गए हैं, तब भी हम लोग को 80 करोड़ लोगों को क्यों फीड करना पड़ रहा है. और दूसरी बात देखिए, देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड अबाउट मणिपुर इन द एड्रेस. There is no respite from violence in the state for 10 months. It appears that the central government does not care about the fate of Manipur, especially the hill tribes who are spending desperate times in difficult conditions for the past 8 months. और एक आर्म्ड प्रिविलेज ग्रुप है जो वहाँ पर शॉट्स कैरी ऑन कर रहा है. और जब सरकार उसको देख रही है अंडर आर्टिकल 355, then it's all the responsibility of the central government to come in terms with, to bring peace there. The Kuki MLAs are not attending assembly session as they fear for their life. There is no democracy in Manipur. Now the Home Minister says that he will go for fencing of the borders of states of India and Myanmar to travel. No, there is no democracy. Now the Home Minister wants to fence the 1643-kilometer border with Myanmar and the free movement regime which allows the citizens of bordering states of India and Myanmar to travel up to 16 kilometers on each other's territory without visa will be reconsidered. This move is against the interest of Mizoram, Nagaland, who have opposed it. It is high time that these issues in the state be resolved. The new policy also has foreign policy implications and will end PM's Act East and BIMSET integration, Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. Now coming to India's relation with the neighboring countries. Honorable Jaishankar ji told recently, every country has problem in its neighborhood. At the end of the day, neighbors need each other. Currently, India's relationship with the neighbor is very worrisome. That we have seen in Maldives. We have also already have strained relationship with Pakistan and Taliban in Afghanistan. India was having a very cordial relationship with Nepal and Bhutan. About 2 years back, China had attacked Doklam in Bhutan. After a couple of small fights, India backed off to some extent. At the same time,
Bhutanese king requested India to stay away from Bhutan and started a very fairly good relationship with China. The ongoing border negotiation between Bhutan and China has led to a new dimension of Indo-Bhutan relationship. The Chinese are pressurizing them that the Indian army contingent, which is based there, should be returned back to India. Occasionally, China is grabbing small land portions in Bhutan, and India is not able to intervene to prevent China's violation of Bhutanese territory. There are reports that China influence is increasing in Doklam area, and it acquires a strategic position there. It will be very worrisome for India if we have so far as a chicken neck is concerned, because that will stall our movement to northeast. Through its money and economic power, Sri Lanka, by gifting soft loans. At present, out of the total debt of Sri Lanka, it owes 52% to China. In Nepal also, China is exerting pressures in many ways. With Bangladesh, the Chinese exports have multiplied 16 times in the last 2 decades. Today, China is the largest trading partner of Bangladesh. Myanmar is also under the influence of China. China has renewed its interest in the Chinese Myanmar economic corridor, which will undermine India's advantage in the region. The inability of the government to manage Manipur crisis and a decision to fence the boundary with Myanmar, along with the free movement regime, will further stress the Indo-Myanmar relations. Cybercrime. In paragraph 14 of the address, it has been maintained that Digital India has made the life and business easier in India. Today, 46% of the world's total real-time digital transaction takes place in India, but at the same time, there is a quantum jump of 55% in cybercrime related to cheating cases as compared to last year. Maximum cases are related to job fraud, followed by online purchase frauds. Cases are also increasing in other categories of cybercrime. Innocent people are losing crores of rupees to these cybercrime frauds. The police do not seem to be well equipped in deal with these crimes, and detention of the conviction rate is very poor. Something has to be done urgently. RBI has taken action against Paytm, but there is a need to look at what value many of these digital middlemen are adding. Why can't the government not promote its own UPI backbone and BHIM application besides PSU bank application? We do not need middlemen. Oil. Petrol prices have increased 45% since 2014, diesel price 70% since 2014. Increased fuel prices are affecting the lives of citizens. The fuel prices were last revised in April 22 when the price of crude was $114 per barrel. Since then, there is no change in the fuel prices. The current financial year, the average crude price was between $93 to $77 per barrel, average being 78.19. Now the crude oil price is $80 per barrel. The oil companies are earning a lot of profit. Government is earning through tax. Why not this profit be passed on to the citizens in India by reducing the fuel prices? What has happened to the market-linked pricing policy in petroleum sector? Prices are not allowed to increase before election, but intensity is also not allowed to fall within the given and to give relief to the people. Cost overruns of the infrastructure projects. Para 15 of the address talks about record investments in physical infrastructure during the last 10 years in various areas. The report of the statistics and program implementation has pointed out that out of the 1,820 infrastructure projects worth 150 crores and above, 431 were reported cost overrun and 848 projects were delayed. 431 cost overrun projects amounted to 4.84 lakh crores. Out of this 848 delayed projects, 202 have overall delays in the range of 1 to 12 months. 200 have been delayed for 13 to 24 months. 323 have 25 to 60 months delay, and the 123 projects have been delayed for more than 60 months. The average time overrun of these 848 projects stood at 36.5 months. However, does it reflect upon the good governance and efficiency of the government in taking up the country to the path of development? We are back to square one.
And of course, we have to believe that the corruption in contracting has ended. Ram Raj hai. Empowering Panchayat. Over 65% of the country lives in rural area. The performance of Panchayati Raj institutions is therefore critical for achieving the development goals of any government. There are more than 2.5 lakh panchayats in the country. However, the financial constraints have not allowed the Panchayat Raj institutions to realize their potential. The institutions have very limited financial powers and almost fully dependent on government support. They generate very less revenue from the local taxes and fee. The reluctance of the state governments providing financial support in affecting the performance of the local bodies. It is well accepted fact that the decentralization yields better outcome. The leaders and the officials at local levels are in a better position to design and execute projects based on local levels. A mechanism needs to be developed to give local bodies to predictable and meaningful flow of revenue. This will help them plan and execute the programs effectively. Education. Education is the most important for the development of any country. Para 32 of the address mentions the implementation of the new education policy. It also says that to improve the quality of education in government is running PM Shri Vidyalayas. There are 14.9 lakh schools, 75 lakh teachers, and 26.5 crore students in the country. According to the National Achievement Survey 2021, the learning level of students have shown a gradual decline over the years. The Nationalist Annual Status Education Report 22 by Pratham Foundation provides snapshots of children's schooling and learning throughout India. In many states, the students in higher classes like 3rd, 5th, and 8th classes are unable to read text and perform arithmetic tasks taught in class 2. The understanding of arithmetic is higher. In higher class 8 student is quite low. Around 35% of the class 8 students were unable to perform division or subtraction meant for class 2. There is an urgent need to look at the standard of education in the country. अब मैं अपना समाप्त करने के लिए अटल बिहारी जी का एक कविता पढ़ता हूँ. जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज है वो कल नहीं होंगे. होने न होने का कर्म यूं ही चलता रहेगा. हम हैं, हम रहेंगे, या भ्रम भी हमेशा पलता रहेगा. थैंक यू. माननीय सदस्य जॉन ब्रिटास. Thank you, Madam. I am little sad that Honorable Rashtrapati Ji has been made to read out the election manifesto of BJP. As expected, there has been mention about Ayodhya thrice. And in all the speeches, without Ayodhya, without Prime Minister, no speech is completed from the treasury benches. Sudhanshu Trivedi ji, he spoke about astrophysics, Veda, science, everything. Sudhanshu ji, where he has gone? See, after all, he is only a Trivedi. There is a Chaturvedi. Bipolar, a political party. You object, please object. I have spoken to Mr. Pandit, that's what I am telling you. Sir, they all speak about Ram. Arey, hamara bhi hai Ram. Aapka thodi hai. Ram belongs to us also. See, my Ram is Mahatma Gandhi's Ram. Of compassion, of harmony and love. You also have a Ram. You also have a Ram. But there is a prefix to that. You know what is the prefix? Their Ram is Nadu Ram. That is a farak. That is the difference between our Ram and your Ram. Sir, nowadays, we cannot distinguish between the Prime Minister and the High Priest. Whether our Prime Minister is a High Priest or the High Priest is a Prime Minister. If there is a political program, it will be turned into a religious program. If it is a religious program, it would be turned into a political program. They all accused us of staying away from Ayodhya Pran Pradishta. What did the Shankaracharyas did? Will you send ED and CBI after Shankaracharyas? All of them stayed away.
because they didn't want to be part of this political drama which you are trying to whip up there in Ayodhya. Sir, madam, let me just say one thing. Mahatma Gandhi ji in Harijan precisely wrote about them, sir. Precisely wrote about them. To repeat Ramanama and to follow the way of Ravana is actual practice worse than useless. It is sheer hypocrisy. One might deceive oneself or the world, but one could not deceive the Almighty. You cannot deceive Lord Rama, because though you are harping on Rama, your only intention is to reap political benefits, nothing else. Madam, the situation in this country, it's vitiated. You would be surprised, madam. A professor in an organization, in an institute, posted in her social media account that she is proud of Godse for saving India. This is because you are inspiring the academics to say that. Can you ever think about such a situation, say 5 years back in this country? This is where the country has been taken on. Madam, today is 5th. Yesterday was 4th. There is a significance for 4th. You know what is 4th significance? February 4th? That was the day Mr. Rajiv Chandrasekhar, our hero, your hero, Sardar Patel banned RSS. Just on the eve of this day. You understand that? And one more thing. I was so sad to see the Honorable Rashtrapati being paraded behind a Shankol. Is it a modern democratic country, madam? Is it not a fact that Sardar Patel would be turning in his grave because he was instrumental in dumping Shankol, Simhasan, crown to redeem this country from all these monarchies? You want to take back this country to the monarchy era. Shortly, Mr. GC, Nasir Bhai, you will see a Simhasan here. The parliament would be turned into it. I am always afraid. I am always afraid when the Prime Minister prostrates in front of an organization or institution. Prime Minister, when he took charge as the Prime Minister, he came and prostrated on the steps of Parliament. Kadam kar diya Parliament. Wherever he prostrate, kadam kar rahe. If he calls Mitrom, there is going to be a misery for the people. You know that. What happened during the demonetization. So, you are doing injustice to Mr. Sardar Patel by bringing back Shankol and Simhasans. And of course, the clowns also will be back because palace clowns were there. Naturally, when monarchy comes, Rajiv Saab, palace clowns also will come back. Sir, it's an insult to Republic, of course. Sir, the moment the Kerala, where is Mr. Javadekar ji? Rajiv Chandrasekhar ji is very active. It's said that he is going to be contesting from Kerala. Thank you, sir. Welcome. We are very happy that he should come. He should listen to the music of the people of Kerala. That is what we want him to do. So, instead of giving everything to Mr. Muralidharan, you also should come there. Sir, madam, the point is very simple. Sabka saath, sabka vikas. सभी वक्त को ये सुन के तंग हो गया. किसका साथ है? आप लोग किसका साथ है? किसका साथ है? आपने मेरे साथ है ना? आपने प्राण प्रतिष्ठा किया. I don't want to dispute about pran pratishtha because these are times when human beings will have to give pran to gods. That is it. But the primary responsibility of the Prime Minister is to give pran to the citizens, not the gods. He should obviously stick to his duties. He should go to Manipur and conduct a pran pratishtha for the citizens. That should be done first. Instead of that, don't create political drama to just get some votes. Vipla Babu, I know you are nodding your head. You are in agreement with me. You cannot dispute me. I know that. Sir, madam, now the pastime of BJP, RSS, is dismantling institutions. Institution after institutions are dismantled. We all talk about Suresh Reddy ne bol diya ye parliament ke baare mein.
अभी क्या डिबेट चल रहे, कोई परusale बिल्स ड्यू डिलिजेंस से, व्हाट हैपेंड टू दी स्टैंडिंग कमिटीज, कुछ हो रहे प्रियंका मैडम, कुछ हो रहे? शी हैज नॉट इवन Let me just say one thing. Mahatma Gandhi ji in Harijan precisely wrote about them, sir. Precisely wrote about them. To repeat Ramanama and to follow the way of Ravana is actual practice worse than useless. It is sheer hypocrisy. One might deceive oneself or the world, but one could not deceive the Almighty. You cannot deceive Lord Rama. Because though you are harping on Rama, your only intention is to reap political benefits, nothing else. Madam, the situation in this country, it's vitiated. You would be surprised, madam. A professor in a organization, in an institute, posted in her social media account that she is proud of Godse for saving India. This is because you are inspiring the academics to say that. Can you ever think about such a situation, say 5 years back in this country? This is where the country has been taken off. Madam, today is 5th. Yesterday was 4th. There is a significance for 4th. You know what is 4th significance? February 4th? That was the day Mr. Rajiv Chandrasekhar, our hero, your hero, Sardar Patel banned RSS. Just on the eve of this day. You understand that? And one more thing. I was so sad to see the Honorable Rashtrapati being paraded behind a Shengol. Is it a modern democratic country, madam? Is it not a fact that Sardar Patel would be turning in his grave because he was instrumental in dumping Shengol, Simhasan, crown to redeem this country from all these monarchies? You want to take back this country to the monarchy era. Shortly, Mr. GC, Nasir Bhai, you will see a Simhasan here. The parliament would be turned into it. I am always afraid. I am always afraid when the Prime Minister prostrates in front of an organization or institution. Prime Minister, when he took charge as the Prime Minister, he came and prostrated on the steps of Parliament. Kadam kar diya Parliament. Wherever he prostrate, kadam kar rahe. If he calls Mitrom, there is going to be a misery for the people. You know that. What happened during the demonetization. So, you are doing injustice to Mr. Sardar Patel by bringing back Shengol and Simhasans. And of course, the clowns also will be back because palace clowns were there. Naturally, when monarchy comes, Rajiv Saab, palace clowns also will come back. Sir, it's an insult to Republic, of course. Sir, the moment the Kerala, where is Mr. Javadekar ji? Rajiv Chandrasekhar ji is very active. It's said that he is going to be contesting from Kerala. Thank you, sir. Welcome. We are very happy that he should come. He should listen to the music of the people of Kerala. That is what we want him to do. So, instead of giving everything to Mr. Muralidharan, you also should come there. Sir, madam, the point is very simple. Sabka saath, sabka vikas. सभी वक्त को ये सुन के तंग हो गया. किसका साथ है आप लोग? किसका साथ है? किसका साथ है? आपने मेरे साथ है ना? आपने प्राण प्रतिष्ठा किया. I don't want to dispute about प्राण प्रतिष्ठा.
because these are times when human beings will have to give pran to gods. That is it. But the primary responsibility of the Prime Minister is to give pran to the citizens, not the gods. He should obviously stick to his duties. He should go to Manipur and conduct a pran pratishtha for the citizens. That should be done first. Instead of that, don't create political drama to just get some votes. Viplo Babu, I know you are nodding your head. You are in agreement with me. You cannot dispute me. I know that. Sir, madam, now the pastime of BJP, RSS, is dismantling institutions. Institution after institutions are dismantled. We all talk about सुरेश रेड्डी ने बोल दिया ये पार्लियामेंट के बारे में अभी क्या डिबेट चल रहे कोई perusal bills due diligence से what happened to the standing committees कुछ हो रहे प्रियंका मैडम कुछ हो रहे she has not even Birendra Prasad Vaishya. Thank you, sir. Given me opportunity to speak on the motion. Sir, on behalf of my party president, Atul Vara, and on behalf of my party, Assam Gana Parishad, I raise here today to support the motion of vote of thanks address given by Her Excellency President of India. Sir, this is the first speech, first address of Honorable President of our country in this new building when our country is observing 75 years of adoption of our Constitution. So this 10 years, last 10 years, sir. Because I am not getting much time, I am getting very small time. So within this limitation of the time, I like to pinpoint successful achievement of our government, sir. Sir, in this critical time, all is passing through the critical time. What is, sir? No. For testing. Sir, I can get some extra time also, no, sir, because I got some minuses. You Sir, speak. Today, world economy is passing through a very critical time. Leading countries like China, Germany, France, United States of America, facing the trouble of the economic growth, sir. In this critical time, sir, India economy is doing fantastically beautifully, sir. It is not my version, sir. It is recognized by the International Monetary Fund. It is recognized by United Nations of India, and it is reflected by the motion of the World Bank. Sir, in this critical time, when we are facing about the situation like China, Germany, USA, at the time our economic growth is more than 7.5%. This is the achievement. This is the wonderful leadership of our Prime Minister, Narendra Modi ji, and who is the driving seat. Under his leadership, India is very well in economy. Sir, I'm going to speak about our external affairs policy. Indian external affairs policy is recognized by the world. It is supported by all leading nations, sir. And it is the proud moment for every Indian. Being an Indian, I feel proud under the leadership, after the successful ending of the G20, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, under the chairmanship of India, Indian position globally stand in very high position. Sir, we have a very good relation with the Africa. Father of the nation,
Mahatma Gandhi started his struggle from the Africa, sir. And under the leadership of Narendra Modi, under the chairmanship of India, African country got seat in the G summit, and this is the great leadership of our country, and this is our very fantastic relation with the African country, sir. Sir, I'm from northeastern region, sir. Many people have spoken about the Manipur, sir. Sir, without going to Manipur, it is very easy to criticize the situation of Manipur, sir. Without going to Manipur, it is very easy to criticize the situation, sir. But this is the only government, sir. Honorable Home Minister Amit Shah came Manipur for 3 days, sir. Earlier, no Home Minister is visited more than 1 day, sir. And our Home Minister Amit Shah visited and camped Manipur is 3 days, sir. Sir, try to understand the situation of the Manipur, sir. Don't do politics about Manipur, sir. It is the duty of every political party. It is the duty of every Indian citizen to sincerely think about the permanent solution of the Manipur instead of doing politics, sir. Sir, Indian economic condition, I have already told, sir. Last year, we have spent more than 12,000 crore for infrastructure development of our country, sir. In the recent budget, Honorable Prime Minister in her interim budget proposed 1,100 crores for the infrastructure development of our country, sir. It is known to every, sir. It is known to everybody. India now is the leading mobile producer country of the world, sir. This is achievement. We should recognize, instead of criticize all the time, we have to recognize the achievement also, sir. Sir, beauty of northeastern region is just God-gifted. Beauty of the northeastern region is God-gifted, sir. This beauty not created by Narendra Modi. This beauty is not created by NDA government. When UPA was there, at that time of beauty of northeastern region was 10 there, beauty of northeastern region, beauty of Assam was there. But sir, you have to look after the data. If you have to look after the data, you have seen the domestic and international tourists visiting northeastern right is very high, sir. Percentages increasing like anything, sir. This is due to the peaceful situation of northeastern region. I am very proud. I am very proud. I am from northeastern region, sir. And I very proudly say, now northeastern region is the one of the states of our country, which is the most peaceful situation of the country. And due to this peaceful situation and due to this infrastructure development, can you imagine? Sir, can anybody imagine? 20 years back, there is only one flight from Guwahati to Delhi. There is no direct flight Guwahati to Delhi, sir. If there is a flight, only one flight India, coming Guwahati to Patna, Patna to Delhi, sir. Now, there is a 22 regular flighting from Guwahati to other parts of the country. This is the achievement. And due to the peaceful situation, due to the improvement of infrastructure situation, tourism is coming our country, and to me, tourism is going. Sir, I am an Indian, sir. Every Indian should be proud because India is the only country of world. India is my India, my Bharat, is the only country of the world whose flag, our national flag, sir, please conclude, sir. Southern pool of the moon, sir. I salute our scientists, sir. We must salute our scientists. Equally, we must give compliments to our government
for this achievement, sir. Sir, give me, if I'll be happy, give me 1 minute time, sir. Okay, okay. Sir, this is the scenario, sir. Sir, we are speaking about the sports development of our country, sir. This year, in Asian Games in China, for the first time, Indian athletes got more than 100 medals. Our para-athletes, they have got more than 100 medals, sir. This is due to the facility provided by our government for the infrastructure development, sports development in our country, sir. Sir, again, we are speaking about the Manipur. We are speaking about the northeastern region. Again, I must compliment Honorable Prime Minister of the country because NDA government, Narendra Modi government, under his leadership, first sports university of India is established is Manipur. This is the great recognized to the northeastern region. This is the great recognized to the Manipur. We are speaking of the Manipur, but reality, Modi is doing for betterment of Manipur. And I'm equally very happy to see when you have seen the tally of our athletics, how many medals our players getting. If you've seen it, then you have seen. Sir, I am speaking. Madam, I speak of northeastern region. Allow me. If you're going to see the medal tally of Asian Games, if you're going to see the medal tally of Para-Asian Games, you people will be delighted. You people will be happy because many medals getting athletes from the northeastern region, athletes from Manipur, athletes from Assam, because this is the commitment of Narendra Modi government. Because only for this reason, this government established women first sports university in the Manipur. With this, sir, I request everybody, try to understand situation of Manipur from the heart, sir. I request everybody, don't do politics about the Manipur. You have to work everybody above the political thinking. Thank you, sir. Because we have to work sincerely to resolve the issue of Manipur. With this, thank you very much. I'll give you. Don't worry. Mohammed is there? Yes, he is here. Huh? Again, sir. Mohammed Nadimul Haq. Sir, thank you very much for allowing me to speak on the motion of thanks of the President. Sir, the Honorable President, in her address, mentioned Amrit Kal thrice and Vikshit Bharat 7 times. These phrases make good media bites. But I would like to know from the Union government, because let's be clear, it is the government which has written the speech. What exactly do these terms mean? Are there any concrete definitions? In the face of these vague terms, let me give you some hard facts. The President said in a speech, now for the first time, and I quote her, now for the first time in our lives, we are witnessing the eradication of poverty on a massive scale, unquote. So what about the 15 crore people in India who are still poor? And this number is based on their report. I can speak for 10 minutes on why the methodology for calculating this number is wrong. The actual number is much higher, but let's go with it. If 15 crore people are poor, then why does the government keep on harping about how it is giving free rations to 80 crore poor people? Is this Amrit Kal? And for the poorest of the poor, you further push them into poverty for political vendetta. In states where you can't win democratically,
you deliberately starve them of funds. This fiscal federal terrorism, 21 lakh poor Manrega workers haven't been paid for 2 years. Rupees 6,900 crores is owed to Bengal for Manrega alone. Another rupees 9,300 crore for Awas Yojana. Rupees 7,000 crore for paddy procurement. So overall dues worth are over 1 lakh crores. I, sir, was listening to my colleague here, and I was seeing that the Treasury branch are laughing away. So to them, they should hear the voice of the people. I say that कहकों में नहीं, आंसुओं में पलते हैं, वो इनकलाब जो ज़माने का रुख बदलते हैं. You want to deprive Bengal, but even then, our government under Mamata Banerjee will keep working for the people. The Bengal government will release all the Manrega dues owed to 21 lakh people from our own state funds. Please learn from Bengal. Bengal is better than BJP states in poverty alleviation. The multi-dimensional poverty index in Gujarat is 9%. In Assam, it is 14.5%. Uttar Pradesh, 15%. Madhya Pradesh, 21%. In Bengal, it is just 8%. Where are the 2 crore jobs that we were promised? 2 out of 5 graduates don't have a job. Almost half of the youth are unemployed in this country. So is this Viksit Bharat? What about almost 10% food inflation? Look at prices of essential commodities. Compared to 2014, the price of rice has gone up by 56%, wheat by 59%, milk by 61%, tur dal has gone up by 120%. Is this Amrit Kal? The President mentioned farmers 11 times in a speech. Let me give 2 data points. According to NCRB's latest data, 30 farmers commit suicide every day. So 700 farmers reportedly lost their lives during the farm law protest. Why did this happen? Because the draconian farm laws were bulldozed in parliament. Eventually, you had to repeal them. The President in her address mentioned the word double in her speech 9 times, but didn't talk about doubling farmer incomes. How many times was this promised? Sir, please learn from Bengal. Farmers' income has not only doubled in Bengal, it has tripled. From 91,000 rupees to 2.9 lakh rupees. You have been in government for 10 years now. We did this in 2018, in 9 years. Let me come to health, sir. A CAG report revealed more than 7 lakh beneficiaries of the government's prize Ayushman Bharat scheme to be invalid. In Madhya Pradesh, over 1.1 crore was paid to about 400 patients who were declared dead in the database. In this also, the cost is shared between the union and state governments. In Bengal, Swasth Sati scheme covers 2.4 crore families. The entire cost is borne by the state. Completely cashless, paperless, free tests and treatment in all government hospitals. So please learn from Bengal. Sir, let's talk about minority welfare. The President mentioned minorities only once in a speech. What? That too about citizenship to minorities from other countries. What about minorities living in India? In 2023-24, the ministry saw a 38% slashing of funds, receiving one of the lowest budgetary allocations in terms of key social welfare ministries. The Maulana Azad Foundation saw a reduction of 99% funds. Schemes that support minority students in clearing public exams got nothing. The BJP governance model operates as a bulldozer Raj, demolishing minority establishment, altering names, erasing people, and rewriting histories. Today, our children navigate a divided India where sections of the society live in uncertainty. They watch as MP use communal slurs in parliament without facing any consequences. They face cultural vilification, political persecution, and economic boycotts. Amrit Kal se desh mein kya badlav aaya hai? Nothing, except that a patriotism is now defined by the color of a dress,
the food we eat, and the names we are born with. Sir, we talk about Amrit Kal, but the last assembly election in Jammu and Kashmir was held 10 years ago. The JNK reorganization bill, which stripped JNK of its statehood, was passed in 2019. The supplementary list of business reached the members at 11:18 a.m., while the bill was introduced at 11:07 a.m. It was discussed and passed the very same day. The government promised that black money will be recovered from tax havens abroad. In Panama, Paradise, and Pandora leaks, names of thousands of rich Indians were revealed who had parked black money in different tax havens. So I demand a white paper from the government on this issue. No more empty promises. Let the people know. The Bharatiya Janata Party is destroying institutions. I have enough data to prove that. Great institutions like Parliament, Election Commission, CAG, CBI, ED, RBI are all being destroyed. Even the majestic Supreme Court has not been spared. It is now being called the subservient court. There is disturbing talk about bench fixing in the SC. The Parliament cannot look away. Let me ask some questions to the government. Why has the Indian Prime Minister not held a single press conference in 10 years? Conclude your speech. Why has the Lok Sabha not had a deputy speaker in the last 5 years? Why has the Committee on Security in Parliament complex not been reconstituted in the last 5 years? Why has not a single BJP MP been suspended in the last 9 years, whereas 146 MPs were suspended in the last winter session of Parliament for demanding a discussion on the security breach in Parliament? Sir, Please conclude your speech. Sir. okay, sir. I'm just concluding. Sir, paragraph 29 of the President's address talks about India's ranks globally in various sectors. Let me add to that. India ranked 93rd in the Global Corruption Index, 111th in the Global Hunger Index, 117 in the Inclusiveness Report, 126th in the Global Peace Index, 127th in the Global Gender Gap, and 150th in the Press Freedom Index. Is this Vikshit Bharat? So I end with one couplet. This बहुत बर्बाद है लेकिन सदाए इनकलाब आए, वहीं से वो पुकार उठेगा जो जर्रा जहां होगा, इनकलाब आएगा रफ्तार से मायूस ना हो, बहुत आहिस्ता नहीं जो बहुत तेज नहीं. Thank you very much, sir. Dr. Kanmozi NVN Somu. Honorable Chairperson, sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the motion of thanks on the President address. Sir, the performance of the government is like a coin with two sides, obverse and reverse. The performance of the government has got two sides, positive and negative, but the President address sums up only to the positive side of the last 10 years, comfortably forgetting the negative sides which has been existing in the last 10 years, sir. Sir, I'm exclaimed to find the phrases like in the last 10 years or a decade ago found mentioned more than 32 times in the President's speech while narrating the achievements of this government in the last 10 years. The nation also wants to know the reverse side, which is terrible. It is quite understandable that the President address on the election year would sound like that. It is more like a teaser of a film. But due to the coming Lok Sabha elections, but the positivity not only should be spoken, all the negativity of the whole country needs to be mentioned. I would like to record in this August House what really matters and what is really missing. The Honorable President has failed to mention the blatant failures of this government, especially. Sir, anyone sitting in this August House knows exactly what is happening in Manipur. If this is a condition for the Member of Parliament, what about the normal people and the ordinary citizens of the country? The President fails to address and mention what is happening in the Manipur state, whether any appropriate steps being taken by the government to stop the ethnic violence in Manipur and to restore peace and normalcy in the Manipur in the state of the country. Sir, the Honorable President has failed to mention about the 75 foreign trips made by the Honorable Prime Minister in the last 10 years, visiting around 70 countries. If not for the COVID, he would have visited 100 countries, sir. He would have made a century on it. But they have failed to address what was the inputs of it, what is the investment brought by the Prime Minister of India to our country, what is the growth of a country by visiting so many
Nothing. It is only a very, very unspiced speech by the president, sir. Sir, the suicides by the farmers and the farm workers. It is very unfortunate that the incidence of the death by the suicide by the farmers and the farm workers is on the rise. More than 1 lakh farmers have committed suicide in the last 10 years. According to the report of National Crime Records Bureau, 30 farmers died every day by committing suicide in spite of the tall claims of farm loan disposals by the government. A country cannot be considered a developed one when the sons of the soil, farmers, live in utter distress and penury. The government, which boasts that it provides free ration for 81 crore people below poverty lines for the next 5 years, is indeed indebted to those poor farmers who produce such humongous quantities of food grains, toiling in hot sun and braving hostile socio-economic and climatic conditions, sir. Sir, the overall unemployment rate in India as of now has gone beyond 10%. In 2014, the unemployment rate was 5.4%. As of now, it is 10.03%. The unemployment rate among the age group 25 to 35 years has touched 30%. This shows that 40% of our youth population is unemployed. Another 30% of the population is underemployed. Only the 30% of the people are fortunate enough to get a regular job in the government, either in the government or in the PSUs or in the private entities. So we should not forget that in their manifesto, they had mentioned about getting job for every Indian in this country. Let us make a note of it. So the violence and the crime against the women and children in India, like the physical or the sexual violence committed against a woman, typically a man is on the rise. There are other forms of violence against women, which includes acts such as domestic abuse, sexual assault, murder, dowry deaths, honor killings, female infanticide, sexual crimes like rape, modesty-related violence, human trafficking, forced prostitution, domestic violence, and acid throwing, and many more. Sir, according to the National Crime Records Bureau in 2011, there were more than increased incidents of reports of crime against women, while in 2021, there is a sharp increase of 87% increase. According to the 2021 annual report of National Crime Records Bureau, 31,677 rape cases were registered across the country. This is an average of 86 cases per minute. So we have passed Women's Reservation Bill in such kind of a scenario in the country, which is still a far dream for all the women of the country. Sir, in this situation in Tamil Nadu, under the leadership of our MK Stalin, 40% reservation in women government jobs have been given. The Moovalu Ramamirdam Ammayar Higher Education Assurance Scheme of ₹100 until the girl child is able to complete her higher education, and the Kalangar Magali Urimai Togai of ₹100 for the financial support for the women. Sir, atrocities against the SC/ST and the oppressed communities. As per the report of the National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, more than 5 lakh atrocity cases have been registered in the last 10 years under the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Prevention Atrocities Act 1989. On an average, more than 50,000 cases were registered under this law. It is really unfortunate to see a country which proclaims as the third largest economy in the world and also forces a social stigma and shame. The attack and the atrocities against the SC/ST and the oppressed communities is on the rise since 2014. There are several of thousands of such incidents happened, but nothing has been reported or registered, which shows the dark and the ugly side of the society we are living in. Ironically, the immediate past president, Sri Ramnath Kovind, and the present president, Honorable Draupadi Madam, are also from those societies, sir. There is an urgent need for the comprehensive law to provide socio-economic and political security and safety for the people belonging to the SC/ST as well as from the other vulnerable communities. Sir, there is an increase in the dropout of students belonging to the SC/ST OBC from IITs, IIMs, and NITs and central universities, and students committing suicides. It is shocking to know that maximum number of dropouts occur among students belonging to the SC/ST and OBC and minority communities from the PG and PhD programs across the countries in the IITs. In the last 10 years, more than 8,000 students belong to these communities and minority communities have dropped out from the IITs, IIMs, IITs, and NITs, and the ISS. And 50 students died by suicide inside the campuses across the country, and there is no address about this in the madam's speech. Sir, there is an unprecedented increase in the cyber crimes and cyber fraud in the country. The number of reported cyber crimes in India increased by more than tenfold in the last 10 years.
The number of unreported would have been manifold. Even the websites of the vital and crucial government departments are being hacked. The menace of the crimes and frauds through social media networks is increasing. Alarmingly, even the social media handles of the ministries and the ministers are compromised. What is the guarantee for the common people then? We need to enact strict laws and stringent action to curb and stop the menace of the cyber crimes and cyber frauds in the coming years. Otherwise, the people of the country will be swallowed by the criminals of the cyber world. Sir, the lynching and the killing of the people from minority communities, it is an act of killing someone or a group without a legal trial. In other words, it is a planned extrajudicial killing via a group. The Honorable Supreme Court observed that these extrajudicial attempts of killing under the guise of these protectors of the law have to be nipped in the bud, otherwise it would lead to anarchy which would flog and destroy the nation like an epidemic. The last 10 years, India has seen an outbreak of the religious crimes. Sir, the President's address is silent on this very dangerous issue, which may ruin the life and the nature of the future generations. It's a wake-up call for all of us. If we don't act judiciously now, the future will witness tumultuous scenes and the reactions very frequently. So, killing of the defense personnel posted at hostile locations is on the rise of the last 10 years. So, the value of the rupee versus the dollar, it is unfortunate that the value of the Indian rupee against the dollar has been falling continuously for the last 10 years and dropped to an unprecedented low of 83 now. The value of INR against the US dollar was 53 per US dollar in 2013 to rupees 83 per US dollar. India is predominantly an importing nation, depends on the import of crude oil fertilizers. Dr. India's speech. Sir, just 2 more minutes. I would just like to talk about the national education policy has set the target of reaching 50% GNR in 2035. The Tamil Nadu has reached its this milestone way back in 2020. This was possible because of the one man, he is Thandai Periyar, he's propounded the Dravidian Code and propelled by the people of Tamil Nadu with equality, social justice and brotherhood. Peraringar Anna, the founder of Dravida Munnetra Kazhagam and Muttamalinga Dr. Kalaignar has followed the principle of Ondre Kulam Oruvane Devan and Kadamai Kanniyam Kappittupaadu. With their superlative enlightening speeches, they have energized the heart and the soul of Tamil Nadu and paved the way for the equitable growth, which is spearheaded by her leader, M.K. Stalin. Sir, before I conclude my speech, I would like to quote our leader, Aringar Anna, who spoke 62 years back on the motion of thanks on the President address in this August House, unquote, what Aringar Anna said. I regret very much that the President has not stated anything about the neo-nationalism that is surging up in the South. Sir, I have stated that there are 3 tenets: democracy, socialism, and nationalism. I would conclude by saying that democracy is distorted, socialism is emaciated, and nationalism is misinterpreted. I think in the coming years, there will be a new sense of appreciation, and the needs and philosophy of the South will be better understood, and self-determination accorded to Tamil Nadu, from where I have the honor to come. Unquote, sir. When we look at the happenings around us, his maiden speech has the relevance even today. Thank you very much. Vikram Singh Sani. Respected Chairman, sir, thank you for this opportunity to speak on the motion of thanks to the President address. I would request you, after a lapse of 1.5 years, I am able to give my maiden speech only today. So please correct the time and add 10 minutes. Or I hope you will be considerate. You have 15 minutes anyway. No, 15 minutes. 4 minutes you have given to Northeast. Okay, you continue your speech. Honorable Madam President have laid down the key achievements of the government in the past year and also laid down some of the steps. I rise to appreciate some of the important things and make a note of few observations and things that this government can do, or let me say together we can do, that matter to the populace or common man of this country. Sir, the President address said that our inflation was over 8% in the 10 years before 2014, and now it is 5%. I really appreciate that India have considerably done a decent job in balancing the inflationary pressure with huge social spending despite the COVID pandemic, Russian
Ukraine war and other disruptions. However, we must acknowledge and learn that if we compare India with the world economies, we will find that India has always a very high inflation than rest of the world, especially I'm laying the data with respect to the European Union. I would like to mention that household essential commodities have witnessed record price in last 7-8 years. Today morning I did some survey. कुछ गृहणियों से हमने ये दाल, आटा, चावल, सब ये एडिबल ऑयल के प्राइसेस लिए. आई एम लेइंग ऑन द हाउस ऑफ द टेबल. इसके हिसाब से अब वनस्पति ऑयल 118% बढ़ गया. मस्टर्ड ऑयल समझ नहीं आ रहा. सरसों का तेल 92%, आटा 43%, ग्राम दाल, उड़द दाल 60%, मिल्क जैसे मेरे और कोलीग्स ने कहा. और meanwhile the irony is that the farmers who produce these products, their income did not increase even half of this price. Also the price of petrol, diesel have gone exorbitantly high. और अब जैसे अभी बताया गया कि इंटरनेशनल प्राइस, वी हैव ए एडमिनिस्ट्रेड प्राइस क्लॉज. तो प्राइस जब ऊपर जाती है तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती है कंज्यूमर को. अब कम हो गई है तो वो बेनिफिट ऑयल कंपनीज ही ले रही हैं. वो बेनिफिट कंज्यूमर्स को क्यों नहीं दिया जा रहा जब इट शुड बी एस्केलेशन, डी एस्केलेशन. और दूसरा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने भी यही रिपोर्ट किया कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो 9.53% दिसंबर में रही, एंड इट इज़ अ ह्यूज हाइक देन द प्रीवियस. सर, वी शुड नीड ऑन सम परमानेंट सॉल्यूशंस विच एक्ट एज ए शील्ड फॉर द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम ग्लोबल अनसर्टेनिटी. अब पॉवर्टी की बात करते हैं. अब ILO ने एक डिक्लेरेशन दिया कि पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर. अब बहुत अच्छी बात है, 25 करोड़ राष्ट्रपति, महम राष्ट्रपति जी ने कहा 25 करोड़ पॉवर्टी से ऊपर आ गए. अभी दोपहर को ही मैं सुन रहा था, हमारे कुलीग शिवाजी कह रहे थे कि इसकी, एंड आई होप ही वाज राइट, कि इसकी जो थ्रेश होल्ड है वो 27 रुपीज़ पर डे की इनकम होनी चाहिए गांव में, और 33 रुपये की पर डे इनकम होनी चाहिए शहर में. तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या ऊपर हैं. अब आप भी सोच लीजिए, 27 रुपये और 33 रुपये, ये थ्रेश होल्ड भी मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को कहूँगा कि भाई लेट्स बी ऑनेस्ट टू आवर सेल्स, इसको ठीक किया जाए. और इसमें एक और डाटा आया है जो ग्लोबल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, MPI, उसके हिसाब से अराउंड 415 मिलियन पीपल एग्जिटेड पॉवर्टी विद इन स्पैन ऑफ 15 ईयर्स, 2005 से 2021. तो कुछ पॉवर्टी की एलिवेशन हुआ है, लेकिन फिर भी हम 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं. और ये अभी भी बात कही जा रही थी कि कोई सेंसिस नहीं हुआ, और 2011 से गवर्नमेंट हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट्स पॉवर्टी फिगर्स. एक NSSO जो स्टैटिस्टिकल विंग है, उसने 2017-18 में एक अपना स्टैटिस्टिकल का रिपोर्ट बनाया था, पर वो पब्लिश नहीं किया गया. और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सारी दुनिया में इंडिया का रैंक 111 है 125 में. तो हमें अभी बहुत सफ़र तय करना है. वी हैव टू ट्रैवल ए लॉट. और पर कैपिटा इनकम, मैं पढ़ रहा था कल ही कि पता नहीं बांग्लादेश, भूटान और मालदीव से भी हमारी पर कैपिटा इनकम कम है. ये छोटे देश हैं, ज़्यादा अमीर भी नहीं है, डेवलपिंग समझ लीजिए, पर हमारी पर कैपिटा इनकम ये जो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले हैं उनसे भी कम है. तो कहीं ना कहीं हमें ये इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है. अब एक और रिपोर्ट UK की आई, ऑक्सफैम की, और 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 72% इंडिया की वेल्थ को ओन करता है. तो बहुत अनइक्वालिटी है. और ये भी एक आंकड़ा है कि वेल्थ ऑफ 16 पीपल इन इंडिया इज इक्वल टू वेल्थ ऑफ 60 करोड़ पीपल, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. तो हमें ये कहीं ना कहीं जो अमीर और गरीब में खाई बढ़ती जा रही है, इसको कहीं ना कहीं कम करना होगा. ऐसा लग रहा है कि वो जो खरगोश और टॉर्टवाइज, कछुए की कहानी थी कि अमीर शायद
खरगोश की तरह आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गरीबों को भी उसी हिसाब से ही बढ़ना चाहिए और उनका स्तर ऊपर होना चाहिए। अब इंडस्ट्री की बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, इन शॉर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया is the soundest remedy of all the problems of even agriculture problems of India. अब प्रेसिडेंट के एड्रेस में स्टार्टअप्स की, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, MSMEs, प्रोडक्टिविटी लिंक जो इंसेंटिव स्कीम की बात कही गई, विच इज़ वेरी गुड, PLI, और खुशी की बात है कि मोबाइल फ़ोन्स पे भी राजीव चंद्रशेखर जी बैठे हैं हमारे दोस्त, IT में उनकी ड्यूटी कंपोनेंट्स की कम कही गई। अब आपको पता है कि कोविड में सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स को लेके हमारी प्रोडक्शन ने कितना सफ़र किया, ऑटोमोबाइल में, IT में, और बहुत सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ ताइवान, चाइना, USA से। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 1980 से ही बढ़ा, पर अभी अक्टूबर 2023 में अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो इंडियाज़ हैड ए हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट, इट हिट ए रिकॉर्ड ऑफ $32 बिलियन। तो उसके लिए भी हमें निरंतर काम करना होगा। और इंडस्ट्री को लेके मैं समझता हूं कि सरकार को जो लैंडलॉक्ड सूबे हैं, बॉर्डर स्टेट हैं पंजाब जैसे, उसमें कोई प्रोजेक्ट बठिंडा रिफाइनरी का 15 साल पहले या 12 साल पहले आया था, PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क was not granted to Punjab even on alternative location. Similarly, industries like software parks, semiconductor hubs have not been given to Punjab despite Punjab having these capabilities. G20 की बात की गई, बहुत भारत की छवि उससे बढ़ी, बहुत हमने खर्च भी किया 400 कुछ करोड़, लेकिन जैसे मेरे अदर कोलीग्स कह रहे थे, we have to see actual deliverables to the benefit of India, FDI, ठीक है, इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट की प्रधानमंत्री जी ने, पर मैं समझता हूं कि हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, हम अभी क्वाड के भी मेंबर हैं, हम आसियान के साथ भी कर रहे हैं, हमें CIS कंट्री में स्पाइस रूट, सिल्क रूट भी रिवाइव करना है। तो कहीं ना कहीं यूरोप तो खुद ही अभी रिसेशन में है, तो अच्छी बात है, लेकिन हमें दूसरे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी खोलने पड़े। आपका ध्यान में एग्रीकल्चर और फूड पे आता हूँ, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन से बड़ा विख्यात इंसान नहीं शख्सियत हो सकती, तो उन्होंने कहा था, इफ़ एग्रीकल्चर गोज़ रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव ए चांस टू गो राइट। अब एग्रीकल्चर 46% हमारे जो भाई हैं वो एग्रीकल्चर पे, इट्स एग्रेरियन इकॉनमी, लेकिन अब जो बजट एलोकेशन एग्रीकल्चर का है वो कम होता जा रहा है। अब पंजाब की बात करें तो जो MSP, जिसमें पंजाब बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है फूड का, फूड सिक्योरिटी का, अब वो जो MSP की कमेटी में और CACP की कमेटी में पंजाब से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो भी मैं आग्रह करूंगा कि उसमें उनको लेना चाहिए। और MSP वीट राइस में ही मिलती है साहब, अब कॉर्न पे भी बाकी जो MSP वो पेपर पे है। अब मक्का का देख लीजिए, MSP 2090 रुपये है, पर मंडी में मक्का कॉर्न जो 700 से 1000 रुपये में बिक रहा है। और हम क्रॉप रोटेशन कैसे, फार्मर्स को क्रॉप रोटेशन हमें करानी पड़ेगी कि वो कब तक राइस वीट, अब मिलेट्स का ज़माना है, पार्लियामेंट में बहुत सराहनीय स्टेप है, लेकिन फार्मर्स को भी हमें अवगत कराना पड़ेगा मिलेट्स की तरफ, क्रॉप रोटेशन की तरफ। PM किसान स्कीम जो 6000 रुपया एनुअल देती है, उसमें पता नहीं कि पहले 11.84 करोड़ बेनिफिशियरी थे जो साइट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, अब उसमें बड़े अचंभे से जो उसकी फिगर है वो 3.87 करोड़ रह गई है। तो इस पे भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि ये जो PM किसान स्कीम में, आप तो खुद किसान हैं और बड़े अच्छे समय आप सदारत करने आए हैं साहब, मैं कह रहा था PM किसान, मैं किसान नहीं, किसान पुत्र हूँ। हाँ, किसान पुत्र हैं, किसान दाता हैं, कुछ भी हमारे अन्नदाता हैं, आपकी मर्जी पे हम हैं। 1.5 साल बाद MP बनने के बाद आज आपने मौका दिया मेडन स्पीच का, बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा था सर, 11 पहले ये 6000 रुपया 11.84 करोड़ किसानों को मिलता था, ये अब 3.87 को मिलता है, तो इसको हमें देख के इन्वेस्टिगेट करके
तोमर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ठीक किया जाए। सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स अब 30% अक्टूबर दिसंबर में कम हुई और आगे भी जाते हुए कम हो रही है। तो मैं आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि रेड सी कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रेट बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये सब्सिडी हम कम ना की जाए। और आपने कहा आप किसान पुत्र हैं, आपको पता ही होगा, आप मेरे से ज़्यादा गुणवान हैं, नॉलेजेबल हैं कि 145 किसान रोज एक पर डे, मैं भी चौंक गया, 145 किसान मजदूर भारत में एक दिन में 145 किसान सुसाइड करते हैं। आत्महत्या की चिता पर देख मुल्क के किसान को नींद कैसे आ सकती है, हम देश के इंसान को। ये डाटा है, हमें, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमें मिलके काम करना है। मैं कोई, ये सभी की जिम्मेवारी है। ये इस प्रेसिडेंट एड्रेस में भी मैं बोलूंगा कि कोई भी बात कही जाती है उसको क्रिटिसिज्म नहीं, पॉजिटिव में मैं कह रहा हूं हमें मिलके ये देश बनाना है। कभी तो यहाँ संवाद होना चाहिए। अब हेल्थ की बात करें तो विंस्टन चर्चिल साहब ने कहा हेल्दी पॉपुलेशन इज द ग्रेटेस्ट एसेट एनी नेशन कैन हैव। अब आयुष्मान भारत बहुत अच्छी स्कीम है, पहले भी बात हुई, कई मेरे कोलीग्स ने कहा डाटा में डेड लोगों को भी मिल रहा है। अब 9.85 लाख जो रिपोर्ट आई है उसमें आयुष्मान भारत बेनिफिशरीज वर लिंक, सेम मोबाइल नंबर पे 10 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। तो ये आरटीआई में त्रुटियां हैं। आरटीआई के हिसाब से 15 लाख बेनिफिशरी हैं, पार्लियामेंट में 1.63 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू सिंक्रोनाइज डाटा। लेकिन मेन बात, आयुष्मान भारत स्कीम में कोविड जैसे ये बीमारियां कवर नहीं है, तो वो लोगों को बहुत आउट ऑफ द पॉकेट उस पर देना पड़ा। और प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें 3% ही आ रहे हैं। एजुकेशन की बात करते हैं, हमने एम्स, आईआईटीज, आईएम्स बनाए। प्राइमरी एजुकेशन की सर देश में हालात ठीक नहीं है कि अभी आपने भी पढ़ा होगा, 10 दिन पहले एक इंग्लिश डेली में ASER की रिपोर्ट ने बताया कि 14 से 18 साल की आयु में जो बच्चे थे 25% सेकेंड लेवल में अपनी रीजनल लैंग्वेज का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाए। 43.3% 14 से 18 साल में ही मैथ सेकंड क्लास का नहीं कर पाए। तो हमें रूरल एजुकेशन में जो, क्योंकि वहीं से हमारी नींव बनती, हम भी तप्पड़ वाले स्कूल में पढ़े, लेकिन मेहनत उसमें हमें रूरल हर सूबे को चाहिए और एजुकेशन के लिए चाहिए। और एक हमारा जो एजुकेशन आउटले है वो भी कम है, 2.9% है। भूटान में 8% है, ब्राज़ील चलो बहुत बड़ा मुल्क, फिर वहाँ भी 6 है, मालदीव्स में 4.6, मॉरिशियस में। तो हमें इसको कहीं ना कहीं 5-10% लाना होगा। और जो शिक्षा पे मिनिमम 10% खर्च करना चाहिए। मेरी मेडन स्पीच है तो आप कंसिडरेट करेंगे, मैं 5-7 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। लेबर और स्किलिंग में ये राजीव चंद्रशेखर जी बैठे हैं, स्किलिंग के ये इंचार्ज हैं, अंदाता हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है, इतने लाख करोड़, क्योंकि एक तो यहाँ फिगर भी लाखों करोड़ों में ही चलती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट माइल डिलीवरी चाहिए। अब जो है ये PMKY और PMK के ये सब स्कीम्स हैं, NSDC का मैं भी बोर्ड मेंबर सौजन्य से, लेकिन सब प्रॉब्लम क्या है कि स्किल करना एक अलग बात है। अब प्रेसिडेंट साहब के और उनके एड्रेस में लिखा है इतने हजार कितने स्किल हो गए, जॉब लायक बना दिए। जॉब लायक नहीं ना, जॉब्स, उनको नौकरी चाहिए। नौकरी हमें, हम सबकी जिम्मेवारी है, हमें उनको नौकरी देनी पड़ेगी। मैं भी खुद NGO चलाता हूँ, हमने 5000 यूथ को पिछले 2 सालों में नौकरी दी, 20,000 रूरल सेंटर्स में हमने एम्पावर किया। तो 29.7% ऑफ इंडियाज यूथ इज अनएम्प्लॉयड, ये डाटा है। और हमारे पास स्किल लेबर 4.69 है, दुनिया में आपको पता है 50, 68। अब ये स्किल इंडिया मिशन का बजट भी कम हो रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ही दरख्वास्त करेंगे कि स्किल के इनके मिनिस्ट्री के धर्मेंद्र प्रधान जी और हाँ जी, और स्टेट ऑफ पंजाब में मिनिस्ट्री हैव रिड्यूस द फंड एलोकेशन जस्ट बाय 92%, ज़्यादा नहीं, 92% कट गया है। और ये सारे इसके जॉब्स की तरफ मैं आपका ध्यान
लगाता हूं। Conclude. इंटरप्रेन्योरशिप, हाँ जी, Last 30 seconds. नहीं सर, यहाँ आप जब नहीं थे, नॉर्थ ईस्ट को 4 मिनट 5 मिनट दिए गए। मैं तो पंजाब से हूँ और मेडन है, मेरे को 5 मिनट्स दीजिए सर। मेडन स्पीच है, बोलने तो दीजिए। मैं तो सुझाव ही दे रहा हूँ। एनर्जी में अब एक और है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, डिजिटलाइजेशन आ रही है, उससे राजीव चंद्रशेखर जी जॉब्स और जाएंगी। तो हम लोगों को कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, क्योंकि मैकेनाइजेशन से वो मजदूर और कम होंगे। एनर्जी में राष्ट्रपति मैडम ने क्लीन एनर्जी, सोलर कैपेसिटी, पावर ग्रिड, उज्ज्वला, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत ही बढ़िया बात की। हम ग्लास भी गए, हम सोलर अलायंस में भी गए, सारा वो किया। प्लीज कंक्लूड। हाँ जी, एथेनॉल जो एनर्जी में प्लीज कंक्लूड सर। बी फेयर ना, मेरी मेडन स्पीच है, मेरे को बोलने तो दीजिए ना सर। ऐसे तो एक मिनट मैं नहीं बोलता, बैठ जाता हूँ सर। देखिए सानी साहब, नहीं, मैं 2-3 मिनट तो मेड गुड पॉइंट्स। इट इज ओवर 17 मिनट्स। नहीं, पर मेडन स्पीच है सर। 17 मिनट्स तो हमारा टाइम था। अच्छा चलो 2 मिनट दे दीजिए, व्हाई टू वेस्ट टाइम। मैं कंक्लूड कर, प्लीज। आई हैव हाई रिगार्ड्स ऑफ 2 मिनट प्लीज, क्योंकि हर 10 सेकंड में आप कहेंगे तो सर मैं। एथेनॉल शुगर केन और राइस से बनता है और वाटर इंटेंसिव है, तो हमें देखना होगा अब क्रॉप रेजिड्यूज, स्टबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूल फॉर थर्मल प्लांट्स और फार्मर्स। इससे आपने देखा जो दिल्ली में ये धुआं छा जाता है, क्लीनर एनवायरनमेंट, उसका भी इलाज होगा। रिसर्चर्स फ्रॉम पुणे ये एग्री वेस्ट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इंदौर में जो है सर, जो डीजल बन रहा है प्लास्टिक वेस्ट एंड सीएनजी आउट ऑफ लिक्विड वेस्ट बन रहा है, तो एनर्जी रिन्यूएबल पे हमें नई चीज़ों पे ध्यान देना होगा। डिफेंस के बारे में ये बहुत अच्छा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने कहा। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स, 40,000 करोड़। पर मेरा मानना यह है कि हमारी जो ऑफसेट पॉलिसी थी कि भाई जो हमें डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है, हम उस पर ऑब्लिगेशन लगाते हैं कि इसका 30-40% आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो या एक्सपोर्ट करो, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। उस पर ध्यान देना। और हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इतने हैं कानपुर से लेके इधर, उनको वो इक्विपमेंट बनाने चाहिए जो हम इंपोर्ट करें। बुलेट प्रूफ जैकेट है, आर्मर्ड व्हीकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनी, पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो है पुश करने की ज़रूरत है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और जैसे ये पंजाब हरियाणा, ये जो सूबे हैं हमारे, इसमें ड्राई पोर्ट्स और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जब तक नहीं बनेगा तो ये लोग compete नहीं कर पाएंगे। लास्ट सोल ऑफ इंडिया लाइज इन विलेजेस। सर ये सर 100 स्मार्ट, मैं लास्ट कर रहा हूँ, 100 स्मार्ट सिटीज पेपर पे हैं, एक्चुअल वो बने नहीं हैं। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा सर, महात्मा गांधी जी ने कहा, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेट अस इंश्योर सोशल फाइबर ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी। Dr. Amar Patnaik, sir. Thank you, sir. 7 minutes. Honorable Chairman, sir. And you know how to monetize time. As I 7 stand minutes. here on behalf of my party, the Biju Janata Dal, and my leader, Shri Naveen Patnaik, the Honorable Chief Minister of Orissa, in support of the motion of thanks on President's address, I am filled with pride on several counts. First, for being an ODR, as Honorable President is the first ODR to occupy this highest constitutional office of our country. She is also the first tribal president of India and only the second woman president of India. I salute the visionary leadership of my leader, Naveen Patnaik, who as undisputed leader of 4.5 crore ODRs for about quarter of a century now, was the first to support her candidacy to this august office. Sir, the Arthashastra mentions 3 important principles of good governance. Sarva Loka Kalyankari Karma, meaning universal welfare. Sarva Loka Sangram Ebapi, meaning maintaining and protecting each and everyone in the creation. And Sarva Hitaya Rata, that is securing universal care for everyone. Honorable Chairman, sir, the President's address highlighted that the grand edifice of a Viksit Bharat will be erected on 4 strong pillars: women power, youth power, farmers, and the poor. Sir, our Honorable CM Naveen Patnaik's governance model has always centered around bringing happiness to these sections of society, adopting the unique
5T model of implementation, which includes transparency, technology, teamwork, time, and transformation. In the words of our Honorable CM, who has been the flag bearer of women's empowerment in our country, women empowerment is not a slogan, but a non-negotiable code for us. Since 1992, when Odisha pioneered the women's political reservation under the legendary leadership of Sri Biju Patnaik by providing 33% reservation for women in local bodies, the BJD has persistently advocated for this right. Women-led development has been the mantra of development and governance of Honorable Chief Minister Naveen Patnaik ever since he assumed the reins of the state in 2000. Honorable CM Naveen Patnaik was the first and the only CM in the country to nominate women to a third of BJD's Lok Sabha candidates in the 2019 Lok Sabha elections. Therefore, passing of the Women's Reservation Bill in 2023, which the Honorable President alluded to in her speech, fills us with great satisfaction. I would like to exhort the Union Government to consider conferring the Bharat Ratna on this legendary leader Biju Patnaik, which has been a demand not just from BJD, but also from some other parties who had the privilege of knowing and working with him. On the economic empowerment front, our Mission Shakti program, started by Honorable CM Naveen Patnaik in 2001, has successfully transformed about 6 lakh women SHGs, comprising about 70 lakh women, into vibrant hubs of economic activity across different sectors. The Union government's effort to follow the same path is praiseworthy. Speaking of youth power, sir, the Union government's progressive investment in new-age technology, such as through artificial intelligence mission, is a great step towards making India a leading digital economy. This comes as an encouraging support to Orissa government's recent measures in this field, the Orissa for Artificial Intelligence and the Artificial Intelligence for Youth initiatives launched in 2023. Further, Honorable President had rightly focused on the significance of the sports economy, which is a great source of meeting the aspirations of our youth and providing opportunities to them. Our CM believes that investment in sports is an investment in youth. Investment in youth is an investment in the future. From building the largest hockey stadium in the world and supporting the national hockey teams, both men and women, to creating state-of-the-art infrastructure for promoting all sports amongst all sections, especially women and tribals, such measures have enabled Odisha to move closer to the vision of becoming India's sports capital. This unique sports model of Odisha, built around partnerships of sporting excellence, competition, coaching, infrastructure, and welfare schemes for meritorious athletes, can be a blueprint for the center and other state governments. Honorable Chairman, sir, farmers are the backbone of our nation. Former American President John F. Kennedy once said, "The farmer is the only man in our economy who has to buy everything he buys at retail, sells everything he sells at wholesale, and pays for the freight both ways." Thanks to the leadership of Honorable CM, Orissa is the only state in the country to double the farmer's income. This achievement has been made possible through systematic interventions and income support to all farmers, including the landless laborers and the tenant farmers, through the Krushak Assistance for Livelihood Income Augmentation Scheme, the Kalia scheme. Through this House, I wish to fervently implore the Union government to emulate the same model and expand the reach of Prime Minister Kisan Samman Nidhi scheme to encompass tenant and landless farmers, and implement the MS Swaminathan Committee report in true spirit while calculating the MSP for procurement of farmers' produce. I also suggest introducing a composite blended insurance scheme customized for farmers' various needs. This inclusive plan could cover crops, agricultural tools, as well as personal insurance such as health and accident coverage. This would save time and money for farmers and ensure comprehensive protection. Speaking of the poor, sir, the upliftment of 25 crore people from multidimensional poverty is certainly a considerable feat. Our leader, Sri Naveen Patnaik, believes that a healthy population with the right education and skill is always the prime driving force for a prosperous nation. Orissa experienced the most notable reduction in the count of multidimensionally poor, dropping from 29.34% in 2015-16 to 15.68% in 2019-21. It has also achieved the fastest decrease in poverty in rural areas,
from 32.59% to 19.28%. This underlines the significance of a well-functioning social sector which is accessible and affordable till the last mile of the state. I also want to highlight the importance of social mobility. In a 2000 survey by the World Economic Forum spanning 27 nations, India emerged as the leader in residents' confidence regarding upward social mobility. This underscores the widespread belief amongst Indians that with humble beginnings and hard work, prosperity and success is an achievable and prevalent journey. However, social mobility is elusive in a society plagued by inequality of all kinds, some of it which has been historically inherited. It is the imperative that we address this inequality in all its forms. And I am reminded of the lines of Sant Bhima Bhoi. So he was one of the topmost Oriya poets sent of Mahima Dharma. He says, Mo jivana pache norke padithau jagat uddhara heu. Let my soul be condemned to hell, but let the universe be redeemed. So lastly, I would be remiss if I didn't mention that the vision of Viksit Bharat would not be possible without Vikasit states. Therefore, it is imperative to uphold the principles of federalism outlined in our constitution, particularly in the devolution of fiscal resources to the states, and in particular to states with historic backwardness and who regularly face the scourge of natural disasters like Orissa. Anyway, thank you so much, sir, for giving me this opportunity. K. Kesav Rao. No, sir, I said I will speak tomorrow, if you excuse me. All right. Professor Manoj Kumar Jha, not present. Shri A. Rahim. Chairman, sir, this is my maiden speech. 7 minutes. Sir, this is my maiden speech, sir. Kindly ensure 15 minutes. Sir. Kindly give your protection, sir. This is my maiden speech, sir. I'll make it 10 minutes. Sir, please, sir. 10 minutes are good enough. Please, continue. Sir. Mr. Rahim, continue. I know your talent. I know your talent. Sir, thank you, sir. Sir, this is my maiden speech. So I would like to start my speech with the historical words of Sri Narayana Guru. And I do believe that this is the befitting mantra for the present era. Jadi Bhedam Madadvesham Edumillada Sarvarum Sodarathene Vadunna Madargasthanamanidu, which means this is a model place where everyone lives together with humanhood, regardless of caste and religion. Sir, these are the words inscribed under the Shiva Pradishta done by real Vishwaguru, Sri Narayana Guru, the social reformer who walked in the front with Renaissance values. Sir, there is a reason behind me quoting Sri Narayana Guru's words at the time of Shiva Pradishta. In the beginning, the Honorable President in her address was very eloquent about the Prana Pradishta in Ayodhya. It was pointed out as the biggest achievement of the government. I would like to read the preface of our Constitution, preamble of our Constitution, sir. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, and democratic republic. Sir, I would like to remind you again and again, India is a secular, democratic republic. How a government can portray Ram Temple as their biggest achievement in a secular country like India, sir? In this particular context, I would like to remind you the Shiva Pradishta done by Sri Narayana Guru in my home district Trivandrum in 1888. After the Shiva Pradishta, Sri Narayana Guru inscribed the message of secularism and humanhood under it. At the same time of Prana Pradishta, 3 Christian churches were attacked in Madhya Pradesh. What is the message given by this attack, sir? Sir, this government has been trying to divide the people, stop the divisive politics, and start talking about the distress of common people. Come and talk about the inflation. Come and talk about the unemployment, the elephant in the room. Sir, the Honorable President's speech has turned out to be nothing more than a speech filled up with empty claims and inflated figures that have no connection with the social reality of our country. The policy announcement was expected to describe where our country is today and how the government should formulate policies for the future.
but the president's speech turned out a hollow echo devoid of substance and direction. Sir, throughout her 31 pages address, the Honorable President never used the word unemployment, the elephant in the room. Sir, what is the present condition of our country? The unemployment rate has risen to 10.9% in the last October, according to the data of Center for Monitoring Indian Economy. The educated youth labor force is begging in the market for jobs. The government claims that last year the government has given government jobs to lakhs of youth in mission mode. I hope that it was about Rozgar Melas. Sir, didn't the government itself admit the Rozgar Melas were a strategy to put dust in the eyes of the people? I would like to mention my own experience. When I asked a question about Rozgar Melas in this guest house, Minister in charge of the Prime Minister's office, Dr. Jitendra Singh, has given the written answer in its 206th session of Rajya Sabha, that not a single new post was created through Rozgar Melas and only appointments were made to existing vacancies. Sir, this is the reality. Sir, lakhs of posts are lying vacant in institutions under the union government. Sir, the unemployment, underemployment, and contractualization of labor are the three major evils that are faced by the Indian youth. Agnipath is a tremendous example of contractualization of the Indian job sector. Even the recruitment of army is becoming contractual. Instead of permanent appointments, the government is recruiting contract laborers in the banking sector, insurance sector, and even the railway and the PSUs. The Narendra Modi government is not creating new jobs and also have no intention to filling the permanent vacancies. Sir, this is not Amardikal, sir. Sir, this is not Amardikal for Indian youth. This is Mridakal. I urge the government that to stop contractualization and ensure permanent job for the Indian youth. Sir, now I am coming to the gig economy. A large number of India's educated youth who are gasping with unemployment are part of the gig economy. The well-educated youth are working in companies like Swiggy, Zomato, Uber, and other unorganized sectors for cheap wages, sir. They are working from street to street, irrespective of rain, summer, and winter. There is not a single mention of such gig workers in this address, sir. There are no specific plans or schemes for their welfare. Sir, this is not an Amardikal. This is a Mridakal for the Indian youth, sir. Sir, inflation is increasing exorbitantly in our country. Retail inflation in India has increased to 5 to 9% according to NSO data. Moreover, inflation is higher in rural areas than cities. Sir, this has led to an increase in price commodities, including vegetables and food items. The union government has completely failed to control the price hike of essential commodities. Sir, the poor are becoming the poorest. Very shamefully, I would like to say that the government claims that it's an Amardikal at the time when the country ranks 111th of the global hunger index. Sir, while talking about the price hike, what is the price of the petrol and gas? The petrol costs about 97 rupees liter today. I would like to recollect to you the time when under the leadership of Indian National Congress, the UPA government, they deregulated the price fixing mechanism of petrol. During that time, BJP organized unprecedented protest against the deregulation policy. Now I recollect a viral visual, a member and Minister of State, Sri V. Muralidharan, in this August House, representing Maharashtra, organized even a bullock cart protest in the capital of Kerala. Sir, but when they came to power, they even deregulated the price-fixing mechanism of diesel, sir. Sir, even on this budget day, the price of commercial gas cylinders increased by ₹15. Does the government have the courage to say how many times the price of petrol, diesel, and gas cylinder increased during their Amardikal since 2014, and on what percentage? Sir, since 2014, the living expenditure of the common people is
skyrocketing day by day. This is not an Amrdakal for common people. This is for Mrdakal. Sir, now I am coming to the airfare. Like the petrol and diesel, this 56 inches government doesn't have any control over airfare. The Indian private air carriers are looting domestic travelers and non-residents Indians. This 56-inch government is laughing at common people while watching this. The government doesn't have any control over the price of petrol. They don't have any control over the price of diesel. They don't have the control over airfare. They don't have control over anything that is directly affecting the lives of the common people. In short, they are rewriting the mantra of Indian democracy, of the people, by the people, for the people, to of the corporate, by the corporate, and for the corporate. Sir, the union government is implementing unproclaimed financial emergencies upon opposition-led states. They are fiscally handcuffing them for political motives. In the last sir, just a minute, sir. Sir, now I am coming to the Nari Shakti. What is the real picture of Nari Shakti? Sir, according to NCRB data, 51 women are physically or mentally being abused every hour in our country. Women were paraded nakedly in Manipur. The government was silent. We have seen what happened in Bilkis Banu case. The Honorable Supreme Court of India caught the Gujarat government's decision to grant remission to 11 convicts in the case of Banu's gang rape and murder of 7 of her family members during the 2002 Gujarat riots. Sir, I started my speech by expressing my concerns over the changing nature of secular fabric of my country. Secularism and pluralism are the soul of our country. Don't bulldoze on it, sir. Sir, why India has become a religion? Why India has not become a religious state? The only one reason for that is the secular essence of the Indian freedom movement. Sir, I am representing Kerala, which is the land of great freedom fighter and martyr Wakam Abdul Khader. He is popularly known as INA hero. He entered into the Indian freedom fight under the leadership of Netaji Subhash Chandra Bose. He was great revolutionary and freedom fighter who got arrested along with other 3 INA soldiers on the 10th September, sir, just a minute, 10th September 1943. Those 4 brave soldiers were hanged. Madras St. George Fort was witnessed. M. Thambi Durai. I have given you more time than you expected. Dr. M. Thambi Durai. Thank you. Half a minute. Conclude. Sir, sir. My time, sir, you have to protect me. Sir, kindly, yes, sir, just a fraction of a second. Half a minute. Just a minute. Please conclude. Sir, those 4 brave soldiers were hanged. Madras St. George Fort was witnessed an interesting incident just before they got hanged. Only 2 persons can be hanged at a time in Madras Central Jail. British officials had decided to hang Wakam Abdul Khader and Fauja Singh together, and Anandan Nair and Bardhan. The brave Wakam Abdul Khader demanded to the British to hang with the Anandan Nair. British officials asked why. That 26-year-old brave son of India said that I belong to a Muslim family. Please, nothing will go on record now. Please, Dr. M. Thambi Durai. Please, Dr. M. Thambi Durai. Thank you very much. Nothing will go on record now. Dr. M. Thambi Durai. No, M. Thambi Durai. Please continue. Sir, Mr. Chairman, sir, I raised to participate and put forth my views on behalf of ADMK party and Edapadi Palaniswamy of my leader on the address by the Honorable President of India to the members of Parliament on 31st January Honorable members, 2024. It is already 6 p.m. If the House agrees, we may take up the business till 7 p.m. today. Okay, sir. I'm Please continue. Allow me, sir. As it is customary, the Honorable President highlighted the achievements of the government during the last 10 years and outlined the policy priorities of the government to make India a developed nation by 2047. The Honorable President has stated that India has emerged as the fastest growing major economy and that it maintained a growth rate
over 7.5% per consecutive quarter, sir. The President also mentioned that 80 crore people are being given free ration, which is extended for 5 more years, sir. I want to mention, sir, in our Tamil Nadu, our former Chief Minister, Amma Jayalalitha, is introduced giving the free rice to all the cardholders. This is a phenomenon what we have done for the poor people. I request the central government to consider that not only 80 crores, let be given to all the people of the cardholders of this country. That has to become, I am requesting, sir. Regarding, as far as the GST, sir, generally all the members are telling about the GST. They are raising the concern about that. Our DMK people, so Siva spoke regarding that he could not get the sufficient for the government of Tamil Nadu. Sir, with the great difficulties, our former Chief Minister, Edappadi Palaniswamy, even we are facing the financial problem, he is able to get the funds from the central government and implemented that so many schemes for the farmers and everything. Sir, but this government, present DMK government, is higher, increased the tax for the properties, tax for the diesel and everything. They could not reduce it. And also liquor also, which they are selling, they increased that. Like that, the DMK government increased all the prices, but they are blaming the central government that got the fund. And whatever, sir, now the present Chief Minister has gone to abroad to raise fund for the investment. When he could not get the fund from central government, how he is going to get the fund from foreign country, I could not understand, sir. Therefore, no, I'm telling this, when... Please. Is why, sir, this please. Honorable member, please, take your seat. Take your seat. Continue. Take your seat. When he was the Chief Minister, when he conducted his international investment, he raised a lot of funds. He also visited foreign countries. He has done. But I'm telling, because why I'm telling, that tax is when we are living at that time and it is reasonable, which we are not able to do, the problem will cause, sir. Second, I want to make regarding the major issue of fishermen issue. Sir, coming to the Kachitub is the main issue. Many times we are raising this issue in the parliament. But the government is not able to solve this problem because the Kachitub is the part of our Tamil Nadu, that is India. It's because of the Kachitub is given to the Sri Lanka government unceremoniously in 1974, 1976, that period. Still our Tamil Nadu fishermen is suffering the lot because if we are having that Kachitub, our territory, this could not happen. Therefore, I request the central government to consider that, see, it is a part of the Indian territory. It is not approved by the parliament. Any territory we have in other countries, it must be approved by the parliament. Till now, not yet approved. Therefore, the government has to consider, see, that it has to be part. At the same time, sir, regarding fishermen, recently, many times they are arrested. Many letters are written by various times for the government of central government to help our fishermen. Recently also, many fishermen are arrested. I request the central government to see that they can be released at early. This is my other request, sir. Regarding the... And also, sir, for example, sir, the help for our President has said empowerment of women. So I am very happy that bill has passed in the parliament because I was the law minister in 1998 when I have Vajpayee government. I introduced the bill for this kind of reservation for the women. At least this period, that during the Modi period, what our Amma Jayalalitha also recommended that time, that's implemented. I am happy that. But I request them when they are going to implement that. That is more important. That issue, that spirit of the parliament, giving empowerment, passing the bill, which, sir, I am telling you, I want to continue. So, 2 minutes, please, allow me, sir. These are the things which are requesting that has to be implemented early. And all regarding, sir, the medical colleges, now I am happy that the government has come forward, they announced more medical colleges. Same way, Tamil Nadu government also requesting medical colleges. That has to be considered because during Edappadi Palaniswamy period, 23 medical colleges historically established in the 4 years. But the present day government, I don't know how many colleges present 3 years over, how many I'm going to, they have to explain to me this. No, this I want to tell. This is that you have written that
But you have written that, but it is not, but our period, same, farmers problem. When the farmers, when they're facing a problem, second regarding, when Edapadi Palaniswamy in the power, he has given lot of helpful for the farmers, and also card holders, all card holders, they have 2,500 rupees Pongal gift has given. But the present DMK government gave only 1,000. That also with hesitantly then. Why they could not give 2,500 rupees, which Edapadi Palaniswamy implemented. That Please has to conclude, be, conclude. Sir, I'm going to finish, sir. I'm going to finish. Only I'll take 1 or 2 minutes, sir. Regarding, No, please. Kaveri issue, sir, Kaveri issue very 30 important. seconds, please. Sir, only 1 minute. I want to finish it. Please conclude. Sir, Kaveri issue is a burning problem. Meghdad, that dam must not be constructed, whichever our party has demand is. Edapadi Palaniswamy also request many times raise the issue. I request the government of central government to use their influence and their thing for the Karnataka government not to construct Meghdad. It will affect the Tamil Nadu farmers. Sushil Kumar Modi. Thank you very much, sir. 20 minutes, sir. महोदय, मैं सबसे पहले देश की राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी को कीप द पेपर अवे फ्रॉम माइक. यस. देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जहां एक और कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, वहीं दूसरी ओर अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके 11 दिन के बाद उस राम जन्मभूमि आंदोलन के जो प्रणेता हैं, महानायक हैं, उनको भारत रत्न का सम्मान देकर देश के करोड़ों राम भक्तों का सम्मान किया है. सर, India is on the threshold of becoming economic superpower of world. 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और जब दूसरी बार 2019 में प्रधानमंत्री बने तो 2023 में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. महोदय, ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी. 2014 से 2023 के बीच इंडियाज जीडीपी grew by 85%. यानी 14 से 23 के बीच में इंडिया का जो जीडीपी था, that grew by 85%. यूके का 3%, फ्रांस का 2%, रशिया का 1%, इटली का 0% और ब्राजील का -15%. क्योंकि इस दौरान भारत का जीडीपी 85% ग्रो किया. इसी का परिणाम था 85% ग्रो किया. उसी का परिणाम था कि भारत 2023 में यूके, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, इटली, रशिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. और सवती महोदय, 2024 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2027 में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत बन जाएगा. सती महोदय, 2027-28 में हम केवल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बनेंगे, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी यानी 413 लाख करोड़ 413 लाख करोड़ की हम इकोनॉमी बन जाएंगे. और प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक
भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में और बनाने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। श्रीमती महोदय, आज भारत केवल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी केवल अर्थव्यवस्था नहीं है, दुनिया का 4था सबसे बड़ा शेयर बाजार भी है। अमेरिका, चाइना और जापान के बाद इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ऑफ वर्ल्ड। हम 1 साल पहले हांगकांग हमसे ऊपर था, हम 5वें नंबर पर थे, लेकिन 1 साल में हांगकांग को पीछे छोड़कर आज इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है वो दुनिया के अंदर 4थे नंबर पर है। उसी प्रकार श्रीमती महोदय, आज भारत सबसे तेज विकास दर वाला देश है पूरे दुनिया के अंदर। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2024 में प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार पूरे दुनिया की विकास दर 3.1% रहेगी, यूएस की 2.5, जर्मनी 0.5, फ्रांस 1, इटली 0.7, जापान 0.9, यूके 0.6, चाइना 4.6 और भारत 7.3% की विकास दर के साथ दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से विकास हासिल करने वाला देश होगा। श्रीमती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, largest producer of jute, largest producer of sugar, and largest producer number of real-time digital payments. और श्रीमती महोदय, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हम नंबर 2 किन चीज़ों में हैं? राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कॉटन, एक्वाकल्चर, इन चीज़ों में आज भारत पूरे दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर है। और साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में भी आज भारत पूरे दुनिया के अंदर 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स इन दिस वर्ल्ड। क्रूड स्टील, कोल, अल्मोनियम, इसमें भी हम पूरे दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर हैं। श्रीमती महोदय, जहाँ तक तीसरे नंबर की बात है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, पावर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट गेन एरिया, इसमें हम पूरे दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं। और चौथे नंबर पर विंड पावर कैपेसिटी, सोलर पावर कैपेसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी में भारत चौथे नंबर पर है। तो हम यूँ ही अचानक 5वें नंबर पर नहीं पहुंच गए, इसके लिए इतना मेहनत और इतना प्रयास करना पड़ा है। श्रीमती महोदय, बचपन में हम लोग सुनते थे गरीबी हटाओ। मैं 10वीं कक्षा में था, इंदिरा जी कहती थी, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। लेकिन आज 50 साल से ज़्यादा हो गया, गरीबी हट नहीं पाई। लेकिन आपको मालूम है कि नीति आयोग ने जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो आंकड़ा प्रकाशित किया है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ गरीबी की जंजीर से मुक्त हो चुके हैं। और श्रीमती महोदय, 13-14 में जहाँ 29.17% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में थे, वहाँ 22-23 में घटकर 11.28% बचे। और मैं यूपी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जहाँ 6 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जहाँ 3,77,00,000 लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। श्रीमती महोदय, नरेंद्र मोदी जी के पहले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले थे और अब 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, ये न्यू मिडिल क्लास, इसके अंदर ये प्रवेश कर चुके हैं। आखिर जब गरीबी से बाहर निकलेगा तो वो मिडिल क्लास में प्रवेश करता है। और श्रीमती महोदय, जो एवरेज रियल इनकम ऑफ पीपल हैव increased by 50%
आम आदमी की जो औसत आय है उसमें 50% की वृद्धि हो चुकी है। पीपल आर लिविंग बेटर, अर्निंग बेटर, विथ बेटर एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर। और सती महोदय, अगर 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी का प्रयास है। 4 करोड़ 10 लाख गरीबों को पक्का मकान, जिस पर 6 लाख करोड़ खर्च हुए हैं। 11 करोड़ घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई, जिस पर 4 लाख करोड़ खर्च हुआ है। 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जिसमें 2.5 लाख करोड़ खर्च हुए हैं। और अगर 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन अगले 5 साल तक और दिया जाना है तो 11 लाख करोड़ अतिरिक्त व्यय होगा। नरेंद्र मोदी का एक ही सूत्र है, सैचुरेशन, सैचुरेशन, सैचुरेशन। हर स्कीम के अंदर कोई आदमी ना बचे, हर आदमी को संतृप्त कर दो, सैचुरेट कर दो, ताकि कोई बैकवर्ड नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं। सभापति महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा, केवल हमने गरीबी से लोगों को मुक्त नहीं किया है। इस देश के अंदर 22-23 में 1,70,000 लोग करोड़पति हैं। हमने करोड़पति की संख्या में भी इजाफा किया है। 2021-22 में जहाँ देश के अंदर इनकम टैक्स के ब्रैकेट में जिनकी 1 करोड़ की आय थी, आप भी शायद उसमें आएंगे, वैसे लोगों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख थी। वो 22-23 में बढ़कर 1,14,000 थी। वो 22-23 में बढ़कर 1,70,000 हो गई। सभापति महोदय, जहाँ 10 साल पहले प्रति वर्ष 94,000 कंपनियां रजिस्टर्ड होती थी, अब ये संख्या बढ़कर 1,60,000 हो गई है। इनकम टैक्स रिटर्न जहाँ 3 करोड़ 25 लाख लोग फाइल करते थे, वो संख्या बढ़कर 8 करोड़ 25 लाख हो गई है। 2014 के पहले के 10 साल 13 करोड़ वाहनों की बिक्री हुई, जबकि पिछले 10 साल में 21 करोड़ वाहनों की बिक्री हुई। सभापति महोदय, 14-15 में 2,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके और 23-24 में दिसंबर तक 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री हो चुकी है। सभापति महोदय, डिजिटल गवर्नेंस में हम ग्लोबल लीडर हैं, हम पूरे विश्व के नेता हैं डिजिटल गवर्नेंस में। और आज अगर दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो भारत के अंदर हो रहा है। सत्य महोदय, डिजिटल इंडिया ने लोगों की जिंदगी और व्यापार को आसान बना दिया है। दुनिया के विकसित देशों में भी इस प्रकार का डिजिटल सिस्टम नहीं है। दुनिया भर के देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए पूरे दुनिया से लोग भारत के अंदर आ रहे हैं। सत्य महोदय, हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आधार, यूपीआई, कोविन, एपीआई सेतु, डीजी लॉकर, आरोग्य सेतु, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उमंग, दीक्षा, ई संजीवनी, ई हॉस्पिटल, ई ऑफिस, ई कोर्ट, पोषण ट्रैकर, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यानी आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने ऐसा ढांचा खड़ा किया है पूरे देश के अंदर कि पूरे दुनिया के लिए वो एक मार्गदर्शन का काम कर रहा है। सत्य महोदय, मैं जियो कंपनी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने इंटरनेट और ब्रॉडबैंड को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। जहां आज से कुछ साल पहले प्रति माह प्रति व्यक्ति 62 मेगाबाइट मोबाइल डाटा इस्तेमाल करता था, आज वहीं ये बढ़कर 18 गीगाबाइट प्रति माह मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 200 GB, पहले 1 GB की कीमत थी 200 रुपये, आज 10 रुपये में और 1 GB डाटा उपलब्ध है। सत्य महोदय, वी आर ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स इन द वर्ल्ड। 14-15 में जहाँ 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन बने थे, वहाँ 21-22 में संख्या बढ़कर 32 करोड़ हो गई है। और मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट जहाँ पर
14-15 में 1566 करोड़ हमने एक्सपोर्ट किया, दैट इज इंक्रीज टू 90,000 करोड़ इन 22-23। सत्य महोदय, हमने दुनिया को एक और चीज दी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी 34 लाख करोड़ 300 योजनाओं के अंदर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुआ है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द हो गया, 4 करोड़ 10 लाख एलपीजी कनेक्शन रद्द हो गए। और कितनी बचत हुई? 2,75,000 करोड़। जो पैसा गलत हाथों में जा सकता था, उसको गलत हाथों में जाने से हमने बचा लिया। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, एलईडी बल्ब स्कीम के कारण इलेक्ट्रिसिटी बिल में 20,000 करोड़ की बचत हुई है। जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना, इसके कारण गरीबों को 16,000 करोड़ का क्लेम मिला है। जन औषधि केंद्र के कारण 28,000 करोड़ की दवा खरीद में बचत हुई है। सब्सिडाइज्ड रेशन पर 20 लाख करोड़ खर्च हो चुका है। सभापति महोदय, आयुष्मान भारत के कारण 3.5 लाख करोड़ की बचत नागरिकों को हुई है। फर्टिलाइजर अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को मिल सके, इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपया और खर्च किया है। इनकम टैक्स में जो रिफॉर्म्स हुए, उसके कारण टैक्स पेयर्स को 10 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये और उनकी बचत हुई है। सभी महोदय, आए दिन हम पर आरोप लगता है कि विपक्षी दल के नेताओं को फंसाया जा रहा है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि देश के 14 राजनीतिक दल, कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, आप, एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, सीपीएम, सीपीआई, ये सारे दल सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया। और पीआईएल में ये कहा इन लोगों ने कि विपक्षी दल के लोगों को जानबूझकर तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं सुप्रीम कोर्ट और उसके जज कौन थे, उसके अंदर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारडीवाला, और चंद्रचूड़ ने क्या कहा? ऑपोजिशंस रेमेडी इज इन पॉलिटिकल स्पेस, नॉट इन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वाइल डिसमिसिंग प्ली अगेंस्ट एलिज्ड मिसयूजेस ऑफ ईडी एंड सीबीआई। तो जो लोग रोज आरोप लगाते हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप तो 1 साल पहले गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आपके पीआईएल को और खारिज कर दिया और कहा अल्टीमेटली द पॉलिटिशियंस आर ऑल्सो सिटीजन्स, एज सिटीजन्स दे आर एमिनेबल टू द सेम लॉज। चीफ जस्टिस ने कहा दैट पॉलिटिशियंस हैव नो राइट्स हायर देन दैट ऑफ अदर सिटीजन्स। आप उसके बाद क्यों नहीं गए? आप अलग अलग मामले को लेकर जाते। और सभापति महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, सभापति महोदय, अगर टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के घर पर और उनकी दोस्त अर्पिता चटर्जी के घर पर 28 करोड़ अगर नगद मिलता है, 5 किलो सोना मिलता है, तो क्या सीबीआई ईडी को चुप बैठ जाना चाहिए? ज्योति प्रिया मल्लिक, जो रेशम घोटाले के अभियुक्त हैं, मंत्री थे, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। क्या जब वो इतने गंभीर आरोप हैं, तो क्या सीबीआई ईडी को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सभापति महोदय, साहू, क्या नाम था साहू का? धीरज साहू। अगर 350 करोड़ रुपया अगर किसी एमपी के घर में नगद पाए जाते हैं, तो क्या सीबीआई को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? महाराष्ट्र में अनिल देशमुख, नवाब मलिक, और सभापति महोदय, यही लोग थे जो राफेल चिल्लाते थे, पेगासस चिल्लाते थे, चौकीदार चोर चिल्लाते थे, और अडानी के नाम पर एक पूरा लोकसभा का सत्र इन्होंने पानी में बहा दिया। जी ठीक, लेकिन आज अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया? उसके बाद एक बार भी मैंने
अडानी का नाम नहीं सुना। सभापति महोदय, आज हेमंत सोरेन और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कह रहे कि मैं चुनौती देता हूं कि कोई प्रमाणित कर दे। तो हेमंत सोरेन जी, आप तो गए थे सुप्रीम कोर्ट, आपको क्यों नहीं बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्यों सुनने से इनकार कर दिया? सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर बेल पर हैं, मेडिकल ग्राउंड पर। सभापति महोदय, आखिर संजय सिंह 6 महीने से जेल में, उनको कोर्ट ने क्यों नहीं बेल दिया? अगर निर्दोष थे, जानबूझ करके फंसाया गया, तो आपको क्यों नहीं बेल मिली? मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है, 1 साल हो गया। सभापति महोदय, इस देश की किसी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को और बेल नहीं दी। और सभापति महोदय, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जो 4 मामलों में सजा याफ्ता है, वो हमको प्रवचन दे रहे ईमानदारी का। और जो रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन घोटाले का मामला है, इतने पुख्ता प्रमाण हैं कि सभापति महोदय कि कोई इन लोगों को बचा नहीं सकता है। सभापति महोदय, आज देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है, जो सैलरी नहीं लेते हैं, अपनी सारी तनख्वाह की राशि दान कर देते हैं, उनके पर कोई कर्ज नहीं है, उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई लैंड का एसेट नहीं है, और नरेंद्र मोदी का जो बैंक बैलेंस है वो केवल 574 रुपया उनके पास बैंक बैलेंस है। तो सभापति महोदय, प्लीज कंक्लूड। जी, मेरा अगर 5 मिनट समय, योर पार्टी हैज टू टेक अ कॉल, अगर करके 5 मिनट। अध्यक्ष, सभापति महोदय, अभी राम जन्मभूमि का जो अनुष्ठान हुआ है, इस दुनिया में कोई ऐसा नेता जो 11 दिन तक नारियल का पानी पीकर रह सके, जो कंबल बिछाकर देश का प्रधानमंत्री जमीन पर सोता है, 11 दिन का अनुष्ठान करता है, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। ये काम कोई ऋषि तुल्य योगी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि 1989 से 2014 तक इस देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। अल्पमत की सरकार, मिलीजुली सरकार, ब्लैकमेल, सौदेबाजी, खरीद फरोख्त, कमजोर सरकारें, समर्थन वापसी का दौर। क्या देश फिर इसी प्रकार की सरकार चाहता है? अटल जी की सरकार 13 दिन चली, 1 वोट से हार गई। चौधरी चरण सिंह को 23 दिन में इस्तीफा देना पड़ा, संसद का मुंह तक नहीं देख पाए। चंद्रशेखर जी 7 माह केवल प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह 11 महीना, एचडी देवगौड़ा 11 महीना, इंद्र कुमार गुजराल 13 महीना, अटल जी 1998 में केवल 13 महीना रहे। क्या यह देश फिर इसी प्रकार की कमजोर सरकार चाहेगा? देखना कोई इस प्रकार की मिलीजुली सरकार, अब देश फिर देवगौड़ा और गुजराल के दौर में लौट के नहीं जाना चाहता है। अंत में सभापति महोदय, अमेरिका की एक कंसल्टेंट कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, उसे दिसंबर 2023 में सर्वे किया है जिसमें बताया कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है, तो उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। महोदय, अंत में नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। और अंत में सभापति महोदय, ये अमृत काल का आह्वान है। मुक्त मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। आपसे सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से एक बार, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। डॉक्टर Ami Yaznik, the time is 2 minutes. I make it 5 minutes. Thank you, sir. Thank you, Honorable Chairman, for giving me this opportunity to speak on the motion of thanks of the Honorable President. Sir, the address showed that as if nothing had happened before 2014.
the earlier governments, post-1947, starting from Jawaharlal Nehru's vision of putting the foundation strongly with his vision, and thereafter the progressive laws per decade, the 5-year plans, and the vision of Rajiv Gandhi ji to usher in the computer age much before it was required here, all this has added to what the President address said about the economy that happened in 2014 to till the present time. Sir, Nari Shakti was the highlight, but I was disappointed that the Honorable President did not talk about the reality on the ground. A young girl is running away from a rapist on a public road, and she's wanting a piece of cloth to wrap around her. But it speaks volumes that she does not have that piece of cloth. It speaks about the police system, the public space, the societal mindset, and the laws which cannot protect her. So despite this Nari Shakti, I am very happy that women are empowered today. But what about those young girls, small children in the remand homes? They're shivering when they look at the rector. Where are those laws that are protecting them? 51 FIRs every day, the NCRB record shows. So when there is no protection, no safety for women, how can we talk about a progressive country? How can we say that, well, we are the 5th economy? Yes, with 80 crores of people being given food, free rations, we are a larger economy. But what about that free ration food? Are you giving nutritious food? What about the anemia? What about the malnutrition? What about the malnourishment? What about the wasting of children? What about the children not getting enough food? And what about female mortality, child mortality? This was not addressed by the Honorable President in her address. But coming to the main thing, a developed country or a country can call itself developed, an economy can be called advanced economy only if your children are educated. There was no mention of rural infrastructure for education. The dropout rate, if you see, sir, it is embarrassing. The children are not getting enough time, enough opportunity, and enough infrastructure to go to school. This dropout rate is so high that we talk about education, we talk about digital India, but what about the basic infrastructure that is required? Healthcare facilities, we have not talked about the absence of healthcare facilities in rural areas. All this was absent in the Honorable President's address, and the most important was mention of new laws. Sir, there was no mention of the backlog of more than 5 crores of cases. People of this country want justice. The preamble of the Constitution talks of justice. And if that justice is not accessed, then what is the use of going to a system where you cannot get justice, but you get languished in jails, you wait for your matters. A child from 4 years becomes a major, and his custody matter goes on and on and on in the court infrastructure, the court system. So this is where I think the new laws, I think we should have, the President's address should have addressed what is going to happen to the physical infrastructure, the judicial infrastructure, the justice system, where the people of this country are waiting for justice. And the last point, sir, we talk about digital India. And the President's address talked about digital India and several schemes, renamed, new named, and all kinds of schemes. But where are the systems that would deal with cyber frauds? Young children who are looking at online lessons, taking online school lessons, get pop-up messages of pornography. Where is that cyber security? What kind of a generation are we giving in the next century, in the next decade, or the decade thereafter? Continuously praising one particular kind of a governance model, which is not speaking of a robust governance model, not speaking of strong institutions which are already placed by earlier governments. I think this address lacked in some of these basic and very important factors which should have been brought out to show that where is this economy, where is this democracy heading towards. The institutions have been weakened. The younger generation is waiting listlessly for employment. There are no openings, and not to mention about people who have gone away to far countries, these high net worth individuals who have gone away abroad and have settled elsewhere. And we are talking about the wealth drain and the brain drain, but none of these issues were there in the Honorable President's address. Sir, one last point, sir. When we talk about our younger generation, sir, should not there be a job satisfaction or a job creation in the country itself? Why should these youngsters be going to far countries? And why should not
we keep some kind of a system that we retain our young brains, we retain our young doctors, we retain our young engineers and computer scientists within the country and create a robust mechanism so that the democracy can be said to be a robust democracy, and we can then boast of an economy which is somewhere in the hierarchy. Thank you, sir. Srimati Sulata Dev, 5 minutes. जय जगन्नाथ। धन्यवाद दूंगी चेयरमैन सर आपको मुझे मेरे मदर टंग उड़िया में बोलने का सुजोग देने के लिए। महामहिम राष्ट्रपतिंकर एई नुआ सदन रे प्रथम अभिभाषण रे धन्यवाद प्रस्ताव मते सुजोग देथिबारु मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। महामहिम राष्ट्रपति ओडिशार झियो मु गर्व अनुभव करे जेतबेले सी पंडित उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास हुंतु किंबा कुंतला कुमारी सावंतकर पंक्तिरु तांकर भाषण मध्य आरंभ करती। मु गोटे कथारु मोर धन्यवाद प्रस्ताव आरंभ करी एवं मु मोर पार्टी विजु जनता दल एवं मोर माननीय मुख्यमंत्री तरफ मु धन्यवाद देवी कृतज्ञता जनइबी माननीय महामहिम राष्ट्रपति की तांको अभिभाषण पई। मु गोटे पंक्ति कहबी जे कहूथिले आमर संथ कवि भीम भईंकर प्राणिक आरत दुख अप्रमित देखु देखु के बासहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। आमे जे काहे कि मु एक कथा कहली एटार सब जिनिस गोटे गोटे मनीष ह्यूमन बीइंग्स रो तार केते नीड अच्छी केमिति अच्छी ताको आमे केमिति नर्चर करबा तापर मध्य से लिखिथिले। जदिओ से दृष्टिहीन थिले तापर मध्य से बुझी पारुथिले लोक मानकर दुख। मु कहबी एथि पई जे हेल्थ कथा कहबी सब जिनस टच करचंदी किंतु मो पाखरे कम समय थिबार मु चुंबक रे कहबी हेल्थ कथा कहबी आ ए पंक्ति कहि कि मु नवीन पटनायक संगे उक्ति की जोड़िया चेष्टा करी जे सब बेले कहिचंदी प्रत्येक जीवन मो पई मूल्यवान। हेल्थ क्षेत्र रे जेतबेले महामहिम राष्ट्रपति महोदय हेल्थ को ये करुचंदी सराहना करुचंदी सेतबेले मु कहबी जे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सेतबेले भारत वर्षर समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करथिले जेतबेले कोविड रे 17टी राज्य को निश्वास देकी लोकंकर जीवन बंचैथिले। ये होची ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री काम। मु पुणी कहबी आज मध्य जेतबेले बीएसकेवाई नवीन कार्ड विजु स्वास्थ्य कल्याण नवीन कार्ड रे समस्त स्वास्थ्य सेवा केवल भाव में सुरक्षित हे तापे मध्य से प्रतिबद्धकता करचंदी। एबे मध्य जदि देखिबे प्रत्येक सीएससी रे 3 दिन हैला हमर नुआ करके समस्त को डायलिसिस रो सेवा मिलुची। मु एबे एथिपई कहबी जे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक काहे के कहिचंदी प्रत्येक जीवन मूल्यवान से केवल 4.5 कोटी ओडियांक पई कहिनादी तांकर हृदय रे समस्तंक पई जागा अछि। एथिपई कहबी जेतबेले आमे समस्त देखिचे बाहानगर रेल दुर्घटना रेल ट्राजेडी जेतबेले बाहानगर रेल दुर्घटना हैला सेतबेले माननीय मुख्यमंत्री तुरंत उठिकिना जाई सांगे सांगे से गोटे टीम करी पाखापाखी 90टी एम्बुलेंस को राति रे ग्रीन पैसेज देकिना सांगे सांगे बाहानगर पठेइथिले एवं शह शह आहत एवं मृतक को रेस्क्यू करके आनिथिले काहा को छाड़ी नथिले केबे भी भाबी नथिले एटा कहार रेलवे डिपार्टमेंट की केंद्र सरकार कर निजे कहिथिले प्रत्येक जीवन मूल्यवान। ये होची माननीय मुख्यमंत्री मो दलर जे नेतांकर हेल्थ। मु पुणी आसीबी हेल्थ पर जदि देखिबा आमे महामहिम राष्ट्रपति अयोध्या राम मंदिर कथा कहते मु खुशी आमे समस्त खुशी आमे राम मंदिर प्रतिष्ठा हबार खुशी किंतु 17 तारीख 22 तारीख दिन राम मंदिर प्रतिष्ठा है 17 तारीख दिन पुरीर जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा प्रकल्पर शुभ उद्घाटन होता आउ एते सुंदर भाव भव्य परिक्रमा प्रकल्पर निर्माण करा जायछि ताहा देखिले खुशी लागिबो एवं लक्षाधिक भक्त मध्य सेठिके आसुचंती। आउ 27 तारीख दिन समलेश्वरी पाखे समलेश्वरी मंदिर शुभ उद्घाटन है। समलेश्वरी हो जगन्नाथ मंदिर हो तारातारिणी हो तांको हृदय रे समस्त ये अच्छी कहीं आमर नवीन ओडिशा रे एभली प्रकार विधि व्यवस्था करा जायछि जे प्रत्येक पंचायत को समस्तकर से मंदिर हो मस्जिद हो गिरजा हो किंबा आपणकर गुरुद्वारा हो समस्त 50 लाख व्यवस्था करा जायछि समस्त को भली भाव में डेवलपमेंट हो पारिबो। ये होची माननीय मुख्यमंत्री काम। मु पुणी कहबी जे बैंक कथा कहते सबुआड़े केमती बैंक कनेक्टिविटी कथा जदिओ मु जानी
प्रधानमंत्रीଙ୍କର ଯାହା ଭିଜନ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ କ୍ୟାସଲେସ୍ ହଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ସାର୍ କେତେ ସମୟ ଅଛି ମୋର 17 seconds. तापर मत सार गोटे मिनिट देवे तापर मु कहबी जे आमर बैंक मो बैंक जरिया सब कम होची मो बैंक 2000 कोटी टंका खर्च होती तेणु 2000 कोटी खर्च करके प्रति पंचायत रोची सर काइंडली 1 मिनिट सर आउ गोटे कथा मु कहबी आमे समस्ते मु धन्यवाद देवी कृतज्ञता जनइबी कहूथिले सुशील मोदी जे कर्पूरी ठाकुर कथा कहूथिले लालकृष्ण आडवाणी की भारत रत्न कथा कहूथिले आमे जेतेबेले भारत रत्न कथा आमे खुशी से दिया जाऊ आम खुशी किंतु मु गोटे कथा कहबी जे जो जदि आज आम 370 उच्छेद करुचे काश्मीर पे जदि आम स्वाधीन बांग्लादेश पाइचे ताहले केवल गोटे मात्र लोक कहीं डिनाय करि परिबेने से होचंदी बिजू पटनायक मु निश्चित भाव में अनुरोध करी जदि आम कर्पूरी ठाकुर को दौचु जदि लालकृष्ण आडवाणी की दौचु ताहले निश्चित भाव में स्वर्गत बिजू पटनायक जी स्वाधीनता संग्रामी जी सुदक्ष पायलट ओडिशार स्वाभिमान ओडिशार अभिमान ओडिशार गर्व ओडियांकर गौरव बिजू पटनायक को भारत रत्न दिंतु महामहिम राष्ट्रपति पाखे मोर प्रार्थना मोर अनुरोध जे से निश्चित भाव में प्रथम नागरिक हिसाब से स्वाधीन भारत से रेकमेंडेशन करंतु सरकार को जे बिजू पटनायक को भारत रत्न दिया हो एवं मु निश्चित भाव में पुणी थे कहबी जे महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण को हृदय मु समर्थन करुच्ची जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी Sri YOYO. Honorable members, Dr. Keshav Rao waited for his turn. Honorable members, mark my words, Dr. Keshav Rao waited for his turn, made a request he will avail the opportunity tomorrow and then left. Those of the members who are not present normally forfeit their right to participate in the debate. And I'm sure this is a healthy practice. We in this house have to wait for our turn, and we are here not only to address the house, but also listen to other members. That being so, those who have not been able to avail the opportunity, it will be difficult to make that opportunity available to them for this particular work. Shrimati S. Fagnon Koynak, 10 minutes. 10 minutes, ma'am. Thank you, Chairman, sir. I express my gratitude for this opportunity to participate in the motion of thanks on the President's address. Her address has clearly outlined the trajectory of Bharat's Amrit Kal, and the government under her has identified the 4 pillars for Viksit Bharat: youth power, women power, farmers, and the poor. Chairman, sir, in the last decade, our country has seen unprecedented growth, progress, and development. It has been a decade of transformational change in which the motto of Sabka Saath, Sabka Vikas has been the guiding light of the government. In the endeavor to take Bharat truly forward, Prime Minister Modi has made women empowerment his priority, which is reflected on the ground today. Since day one of assuming office, Prime Minister Modi has made women the focal point of his development. In charting New India's growth story, Prime Minister Narendra Modi has emphasized that India is transitioning from women's development to women-led development. In this grand vision, women are being reimagined as architects of India's progress and development, rather than being passive recipients of the fruits of development. Schemes are not narebaze, but have made an impact. PM's Ujjwala Yojana, 10 crore beneficiaries, 10 crore women are involved in self-help groups, 8 lakh crore in bank loans, and 40,000 crore in financial assistance has been provided to self-help groups. There are plans for 2 crore Lakpati Didis and Namo Drone Didi, 15,000. Imagine what it does to the confidence of a lady when she handles a drone and is considered to be the most tech-savvy lady in the village. Beti Bachao, Beti Padhao, which has led to improved sex ratio of 1,020 females for every 1,000 male,
NFHS 5, and maternity leave for working women has been increased from 12 to 26 weeks. At no point in independent India has women been given so much recognition and her contribution for nation building elicited as much as now. Our Republic Day celebrations this year saw Nari Shakti in all its glory and honor. What could be more better personification of Nari Shakti than our very own Honorable Rashtrapati Srimati Draupadi Murmuji, the Supreme Commander of our armed forces, leading a nation of 140 crore people. Honorable President has also praised the passage of Nari Shakti Vandan Adhiniyam after a 30-year wait. In her words, my government has enlarged the role of daughters everywhere, in water, land, sky, and space. Chairman, sir, the Modi government continues to push forward its inclusive developmental agenda with women at the forefront. The government has come up with many welfare programs and schemes to facilitate the further empowerment of Nari Shakti. In her speech, our President has clearly mentioned the importance of Bharat's youth and the initiatives taken by the government. Youth constitute the most dynamic and important segment of our population. Our country is one of the youngest countries in the world with a median age of 28.5. More than 50% of our country's population is below the rank of 25, which bodes well for our future. It is indeed heartening to note that since assuming office, Honorable Prime Minister Modi has accorded top priority to Amrit Peti. Let us not forget that our Yuva are one of the 4 pillars of Viksit Bharat as envisioned by Prime Minister Modi. The new national education policy, which is aimed at promoting fairness in educational opportunities for all students, focuses on mother tongue and other Indian languages. It also promotes vocational education and offers a comprehensive and interdisciplinary education with modern future-oriented objectives. 14,000 Sri Vidyalayas are being planned, 6,000 are operational, further improving access to education. Dropout rates among SCs, STs, and OBCs, particularly among girl students, have declined. 16 new AIIMS, 315 new medical colleges have been established, and 1,500 new nursing colleges approved. In the 10 years of Modi government, Bharat has seen a major cultural shift in the sporting landscape. What Prime Minister Modi has done is provide an outlet for our youth to realize their untapped potential. Sports can be a great unifier, and under his leadership, the country has seen a surge in our youth wholly embracing the sporting culture with open arms. In the process, many barriers have been broken and a new national consciousness has been evolved. National unity is rapidly being established through sports. It is difficult to imagine how for a country of 1.4 billion people, producing world-class athletes and sportspersons was almost an impossible task, cricket aside. For too long, a fringe participant in international sporting events. Winning even a medal was considered to be quite the achievement. In the 2013-14 budget, the Ministry of Youth Affairs and Sports was allocated rupees 1,219 crore. Contrast that to the Viksit Bharat budget this year, which has allocated rupees 3,442.32 crore to the same. There is a sea of difference in the way things are now done under the government. Our country's impressive performance of late in international sporting events can be attributed to a lot of things initiated by the Modi government. So far, 5 editions of Khelo India School and Youth Games, 3 editions of Khelo India University Games, 3 editions of Khelo India Winter Games, and 1 edition of Khelo India Para Games has been hosted. Upcoming annual Khelo India Games are 4th edition of Khelo India University Games in Assam this month, and Khelo India Winter Games in Jammu Kashmir and Ladakh. A total of 308 new sports infrastructure has been approved in 32 states and union territories. 1,072 Khelo India centers have been notified across the country, and there are 32 Khelo India state centers of excellence across 31 states and union territories. The country's first national sports university is operational in Manipur, currently functioning from a temporary campus at Khuman Lampak Sports Complex. This inclusive development of the government for all has been reaffirmed by our President, Srimati Draupadi Murmuji, as she highlighted the several initiatives aimed at creating fair opportunities for all sections of society.
For the first time, government has extended reservation benefits to economically weaker sections within the general category, recognizing the needs of disadvantaged groups. A 27% reservation quota for OBCs has been introduced in central government-funded medical colleges, which will improve access to medical healthcare education. The National Commission for Backward Classes has been conferred constitutional status, which will further strengthen its role. Panchtirth, 5 places associated with Dr. B.R. Ambedkar, is developed as national pilgrimage sites, and 10 museums dedicated to tribal freedom fighters are being established across the country. For the first time in independent India, the contributions of tribals are being recognized, beginning with notifying 15th November, the birth anniversary of Birsa Munda, as Janjatiya Gaurav Divas. 740 Eklavya model schools, which is a 400% increase in the number of schools being sanctioned since 2014. The budget for tribal development has increased to 1,20,000 crore from 24,000 crore in 2014. Prime Minister's Janman Yojana has been launched with an outlay of 24,000 crore for vulnerable tribal groups to screen sickle cell anemia, and 1 crore 40 lakh persons have been screened till now. With an approved outlay of 6,600 crore, PM Divine Scheme is funding infrastructure and livelihood for youth and women in the Northeast. With significant reduction in the incidence of separatism, Northeast India is now truly experiencing growth and development. A 10,000 crore Northeast Venture Fund, the first and only dedicated venture fund for the region, has been set up to promote growth of business, ventures and skill development in the Northeast. One of the most significant developments in the Northeast region has been the improvement of connectivity. The completion of long-pending infrastructure projects like the Bogibil Bridge and the Dola Sadia Bridge over the Brahmaputra, the ongoing construction of the world's tallest girdar rail bridge on the Imphal-Jiribam line, the record length of roads constructed, and the resurgence of waterways transport have all boosted economic and business potential in the region, making it a testimony of revolutionary connectivity that was long aspired by the people. Additionally, several new airports have been constructed in the region. A total of 8 airports have been added to the region in the last 9 years, taking the total number of airports to 17. The improvement of connectivity has also helped in providing quality healthcare services to the remotest part of the region. Policy initiatives and healthcare schemes have brought about a significant change in the healthcare scenario of the region. The government's commitment to the Northeast region has been lauded by people from all corners of the region. I thank Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, for moving ahead inclusively with the guarantee of fulfilling the dreams of 140 crore countrymen. Thank you, sir. Jai Hind. You have taken exactly your time, 10 minutes, not a second more. Dr. L. Hanumanthaya. Thank you, Chairman, sir. Sir, the time left is 2 minutes, but I'll make it 5 minutes. Thank you, Chairman, sir. Honorable President of India has spoken on many issues, but my concentration is on the social justice and equal status for workers. Sir, in the last 9 years, Manrega workers have been paid less than minimum wage. Workers accept these meager earnings due to unemployment fears. Sir, if 100 people got the work, only 23 scheduled caste were there. Now, if 100 households get the work, only 19 scheduled caste were in the job. I would like to ask the government, is it the social justice? Why can't people from these communities get work under Manrega? What are the reasons why they are not getting? Have any accountability on this is there in the government? Sir, in 9 years, 16 crore 20 lakhs people job cards have been deleted, and 1 crore 70 lakh people have been excluded from the ABPS, Aadhaar-based payment system. It is appalling to see that the government, which guaranteed to provide 18 crore jobs in 9 years,
has made 18 crore people unemployed within the Manrega itself. Sir, the UPA government brought the scheme to provide social justice to the poor, but this government has denied the poor the rights, and the Congress party will never endorse this act. We will stand by the poor until the justice is delivered to those sections. Sir, another important aspect which we always speak, and the Honorable President has also spoken about, Sabka Saath Sabka Vikas. Sir, the misuse of agencies like ED, CBI and IT, I wanted to give a small example, sir. This government misusing the ED, IT, CBI to suppress the opposition leaders to destabilize elected governments. Sir, BJP has tried to tackle several state governments by misusing the central agencies, but not been successful in 14 states so far. Sir, in the last 10 years, 411 MLAs have been horse traded, but BJP has not been able to gain power through the back door. Sir, now the tyranny of ED is even being faced by common people. We recently saw how summons were issued to two Dalit farmers in Tamil Nadu. One is Kannayan, aged 72 years, Krishnan, aged 67 years, who own 6.5 acres of agricultural land, were issued summons by the ED. Sir, the summons were issued because they were engaged in a land dispute with the local BJP leader. The local BJP leader was accused of land grabbing. They had just 450 rupees in their bank account and depended on old age pension for their livelihood. Sir, the mention of their caste in official documents exposes the deep-seated discrimination within government agencies. This incident highlights this government failure to protect marginalized communities and its complicity in perpetuating caste-based injustices. Sir, the vacancies in the government jobs, an alarming 31.8% of teaching positions remain unfilled in central universities. So vacancy stood at 38.6% for SCs, 45.5% for STs, 44.5% for OBCs, and 71.5% for EWS. Sir, the figures are still alarming if the vacancy rates for associate professor and professor positions reach as high as 85%. Sir, the shortage of experienced faculty, especially in senior positions, is impacting students' learning outcomes, serving as a testament to the government's denial of equal opportunity to its youth. Thank you. Sir, my last sentence, sir. In the health sector, the government talks about setting up new AIMS hospitals. Sir, but the reality is different. Over 5 years, the 495 new doctors' positions are vacant. Thank you, gentlemen. Thank you. Thank you. Honorable members, special mentions up to serial number 1 to 15 will be taken to be laid on the table of the House. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 6th February 2024. Birthday greetings. Honorable members, I am pleased to extend greetings to Honorable Members of Parliament, Sri K.C. Venugopal, Srimati Kanta Kardam, Sri Neeraj Dangi, Sri Samir Urao,
whose birthdays were yesterday on 4th February, and also to Shrimati S. Phongnon Koinak on her birthday today. Sri K.C. Venugopal, whose birthday is on 4th February, he has been a member of this August House since June 2020 and serving his first term. Sri K.C. Venugopal had been a member of Kerala Legislative Assembly for 3 terms, 1996 to 2001, 2001 to 2006, and 2006 to 2009. Cabinet Minister in the government of Kerala for 1 term. He has served as member Lok Sabha for 2 terms and has been a Union Minister of State for 2 terms. Honorable member had also served as Deputy Chief in Lok Sabha. Sri K.C. Venugopal is a political and social worker by profession and is married to Dr. Asha K. and blessed with son Gokul and daughter Parvati. He has chosen the names very carefully, Gokul and Parvati. Srimati Kanta Kardam has been a member of this August House since April 2018 and serving her first term. She has played an important role in various social, cultural activities and several issues concerning awareness of human rights of downtrodden, deprived sections of the society, and has been vocal for their upliftment and rights. Srimati Kanta Kardam is an agriculturist, social worker by profession and is married to Sri Veer Singh Kardam. She is blessed with 2 sons, Neeraj and Ashish, and daughters Upasana and Swati. Sri Neeraj Dangi has been a member of this August House since June 2020 and serving his first term. It is noteworthy that Honorable Sri Neeraj Dangi had made remarkable efforts in supporting the tsunami victims' families and post-tsunami relief work in Andaman and Nicobar Islands in February 2005, which was monitored by Ministry of Home Affairs, Government of India. He is a member of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Honorable member is the son of late Sri Dinesh Dangi, a popular leader of Rajasthan, who had served as Minister in Government of Rajasthan. Sri Neeraj Dangi is an engineer, political and social worker by profession and is married to Dr. Preeti Soni. He is blessed with 1 son, Yuan, and daughter, Katyayani. I had the good fortune to be in the assembly along with his father. Sri Samir Oran has been a member of this August House since May 2018 and serving his first term. He was a member of Legislative Assembly of Jharkhand for 1 term. As Minister of Committee of Welfare and Scheduled Castes and Scheduled Tribes as a member, he is enlightening the committee through his vast experience in the field of upliftment of SCs and STs. Sri Samir Oran is an agriculturist and farmer by profession and is married to Shrimati Sushila Oran. Shrimati S. Phongnon Koinak has been a member of this August House since April 2022 and serving her first term. Honorable members, I would like to share that through her untiring efforts, she has been instrumental in admitting a large number of children aged between 6 and 14 years who would drop out or never enrolled to school into formal schooling in Mon Educational Block Resource Center, EBRC, and Aboi EBRC, which covers 37 villages. Her active role in the implementation of targeted intervention project at Aboi for injecting drug users, other vulnerable population, and being part of implementation of link workers scheme in Mon district for the prevention of HIV and AIDS is truly commendable. She also played an important role in initiation of the process of documenting Koinak cultural heritage. Srimati S. Phongnon Koinak is a social worker by profession. Honorable members, on your and my behalf, I wish them a long, healthy, and happy life
and extend greetings to their family members. Honorable members, I have to inform the House of the sad demise of the President of the Republic of Namibia, His Excellency Dr. Hage G. Geingob. He was a freedom fighter, a statesman, chairman of the Constituent Assembly that formulated the Namibian Constitution, the first Prime Minister of independent Namibia, and the third President of the country. He dedicated his entire life to the welfare of his people and development of his country. President Geingob was a friend of India. President Geingob role in facilitating relocation of 8 Namibian cheetahs to India in September 2022 is greatly admired. On behalf of this House, we express our deepest condolences to the government and the people of Namibia. We share our sympathies with his family, friends, and admirers. We deeply mourn the passing away of His Excellency Dr. Hage G. Geingob. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Papers to be laid on the table. General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name as serial number 2 in the list of business today. Shri Pankaj Chaudhary. माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 2 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं. Shri Rajiv Chandrasekhar. I used to lay the paper mentioned against my name as serial number 3 in today's revised list of business in Rajya Sabha, sir. Thank you. Shri Rameshwar Teli. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं. श्री कौशल किशोर. सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2/5 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं. श्री वी मुरलीधरन. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ajay Bhattji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 6 in today's list of business. Shri Pankaj Chaudhary. सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमन की ओर से व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं. पेट्रोलियम फूड के उत्पाद पर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को 1700 रुपया मीट्रिक टन से बढ़ाकर रुपये 3200 मीट्रिक टन करने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 18/2022, केंद्रीय उत्पादन शुल्क को संशोधित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी 2024 की अधिसूचना संख्या 5/2024, केंद्रीय उत्पादन शुल्क. We have Mr. K.C. Venugopal here. I tried contacting him yesterday also. He was in the flight. I was telling the House, you chose the name of your children very carefully, Gokul and Parvati. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Dr. Ashok Kumar Mittal. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of the 28th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on the subject Countering Global Terrorism
at regional and international levels, as listed against my name in today's revised list of business. Statement by Minister Shri Hardeep Singh Puri. Sir, with your permission, I rise to make the half-yearly statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 19th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs on demands for grants 2023-24 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. Sir, I lay the statement. Honorable members, I have received one notice under Rule 267. The notice does not merit admittance. Matters raised with permission. Shri Samir Urang. माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को सदन में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। गुमला जिला में आज तक रेल लाइन नहीं पहुंचा है। मैं बार बार सदन के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि लोहरदगा से लेकर के कोरबा, ये धर्मजयगढ़ से कोरबा का लाइन प्रारंभ हो गया है रेल लाइन, और धर्मजयगढ़ से लोहरदगा 291 किलोमीटर है। ये कई बार इसका सर्वे हो रहा है, लेकिन ये निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गुमला जसपुर ये जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहाँ से हमारे जो है देश के सेवा करने के लिए कई ऐसे सैनिक वहाँ देश की सेवा कर रहे हैं, और एक बहुल जनजाति बहुल क्षेत्र है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो है सर्वे होने के बाद यथाशीघ्र यह रेल लाइन बने, जिससे कि गुमला से जसपुर और धर्मजयगढ़ से कोरबा और इधर जो है जसपुर गुमला से रांची तक जा करके वहाँ के जो सैनिकों के लिए रेल की सुविधा हो सकती है। वहाँ किसान हैं, किसानों को फल सब्जी के लिए आगे वो बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ वो माइनिंग एरिया भी है, और इन सारे सुविधाओं से वो आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी इसको यथाशीघ्र निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद माननीय समीर उरांव जी। ऑनरेबल श्री वाई को सब्जेक्ट नीड टू रिलीज नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड टू तमिलनाडु विदाउट डिले। Honorable Deputy Chairman, sir, the recent heavy rains and floods due to cyclone Machong, which devastated 5 districts of Tamil Nadu, namely Chennai, Tiruvallur, Kanjipuram, Chengalpattu, caused loss of life and damages to vast public and private property, followed by these unprecedented heavy rains and waterlogging and floods in 5 districts, Tirunelveli, Thoothukudi, Kanyakumari, Chengalpattu, Tiruvallur, resulted in destruction of public infrastructure and made lakhs of people homeless. I have requested the Honorable Prime Minister and Home Minister through my letter dated 19th December to send a central team to visit disaster-prone areas for release of financial assistance. Our Honorable Chief Minister, Thalapathy Stalin, also requested for release of Rs 37,000 crore for providing relief to the disaster-affected people and to improve the public infrastructure which was damaged. We also demanded that the recent disaster occurred to Tamil Nadu be declared as a national disaster and adequate relief fund may be released immediately. In this connection, a higher level delegation of MPs from Tamil Nadu also met the Honorable Home Minister at Delhi on 13 January 2024 for expeditious release of funds, in which I was also present.
In that meeting, the Honorable Home Minister assured that all formalities will be completed and adequate funds will be released soon. However, nothing had happened so far, despite the report was presented by the central team to the Home Ministry. This is a stepmotherly treatment meted out to the state of Tamil Nadu. I would therefore demand that the disaster relief amount as demanded by the Tamil Nadu government may be released immediately to the state, as people are still suffering from the disaster and lot of relief and reconstruction works are awaiting for the funds. Thank you, Aikoji. Dr. Fauzia Khan need to make dash cams mandatory for reducing hit and run cases in India. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. The amendment to Section 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Section 304A of the IPC, brings about significant changes in addressing road safety and traffic violations. Sir, Section 279, 304A, 338 of IPC apply in hit and run case incidents. In extreme cases, the police may book a hit and run case under Section 302. 302 जो खून करने पर लगता है और कोई ड्राइवर जो 302 सेक्शन में बुक हो गया उसको सजाए मौत हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है सर। कुछ दिन पहले इन प्रोविजंस को लेकर इसके विरोध में बहुत भारी संख्या में ड्राइवर्स एसोसिएशन ने रस्तों पर आकर प्रोटेस्ट भी किया था। सर, किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में सबूत की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर सज़ा इतनी भारी हो तो सबूत की स्पष्टता भी आवश्यक होनी चाहिए। One key aspect that deserves attention in the wake of these stringent measures is the promotion of dash cams. Dash cams have emerged as a valuable tool that can provide concrete evidence in the event of a road accident. So most countries in the world have adopted this on a large scale. Making the use of dash cams mandatory for manufacturers aligns with the objective of collecting reliable evidence, ensuring transparency, and facilitating a fair legal process. So today, seat belt beeps, plastic bonnets, and so on have been made mandatory for manufacturers. Dash cams may be made mandatory in the same way. The significance of dash cams becomes more pronounced considering the prevalent issue of tampering with evidence and corruption within the authorities. In advocating for the widespread adoption of dash cams, it is crucial to highlight their role in not only protecting law-abiding citizens, but also acting as a deterrent against corrupt practices by law enforcement, sir. Sir, these devices serve as an impartial witness, recording events accurately and discouraging unethical behavior. As India grapples with the challenges posed by strict traffic regulations, the incorporation of dash cams emerges as a practical and effective solution to address concerns related to accidents, evidence tampering, and promote responsible driving practices, sir. Thank you. Thank you. Manya Shri Imran Pratap Gadi, concern over unconstitutional action taken by DDA to remove encroachment in Delhi. उपसभापति महोदय, मैं डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मज़ारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती। डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं।
जो डीडीए 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्ला खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते? मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी, सब्जेक्ट डिमांड टू विथड्रॉ द ड्राफ्ट डी रिजर्वेशन पॉलिसी proposed by UGC. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, as per the data submitted to the Lok Sabha in the month of August 2023, 4% of the professors and 6% of the assistant professors working in central universities belong to OBC. Sir, this number stands at 7% in the case of SCs and mere 1.5% in the case of STs. Sir, quite surprisingly, University Grants Commission, UGC, has issued recently draft guidelines de-reserving the vacancies meant for SCs, STs and OBCs, OBC candidates in higher educational institutions, and open up them for general category. This is very much unconstitutional and unwarranted, sir. The guidelines clearly state the ban on de-reservation of reserved vacancies in direct recruitment might be lifted in exceptional cases. I really don't understand what exceptionally exception cases and that are prevailing now for the UGC to take such a the unconstitutional steps, sir. Sir, the central, I draw your kind attention to the Central Educational Institutions Reservation Teachers Cadre Act 2019 clearly prohibits the de-reservation. Sir, the general procedure that is being followed and throughout India, in all, not only in respect of educational institutions, but even in respect of other government bodies, non-government bodies also, unfilled quota positions in universities, in the case of SC, STs and OBCs. And if they are not filled and unfilled and re-advertised and then special recruitment drives are carried out till the suitable candidates are identified, and until the suitable candidates are identified and these vacancies are filled, this procedure will go on, and there's no occasion and there is no reason why this should be de-reserved, sir. Sir, my sincere appeal to the government to prevent UGC from implementing such draft guidelines that erode the constitutional rights and protections which have been conferred on SCs, STs and OBCs for, in the case of reservation, sir. I urge the government to ensure that the vacant positions reserved for these OBCs, SCs and STs are expeditiously filled and concerted efforts should be made. Thank you very much, sir. Thank you, Mani Vijay Sai Reddy ji. Mani Sri Ajay Pratap Singh, demand to include Kol tribe in particularly vulnerable tribal groups, PBTG
माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान कोल जनजाति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह सर्वविदित तथ्य है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। मध्य प्रदेश की आबादी का लगभग 21% आबादी जनजाति भाइयों की है। इन जनजाति भाइयों के बीच में लगभग 7.68% आबादी कोल जनजाति की है। मध्य प्रदेश की यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका उद्गम स्थल कहा जाता है रीवा जिले के फरेंदा गांव या कुराली गांव में है। ये जो कोल जनजाति है, इसके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने सतना जिले के 5 गांवों का सैंपल के तौर पर चयन करके उनका जो अध्ययन किया है, उसके निष्कर्ष को से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उसके निष्कर्ष के अनुसार कोल जनजाति के मध्य जो शिक्षा का प्रतिशत है सतना जिले में, वो लगभग 32% है। सतना जिले की आबादी लगभग 22 लाख है। 22 लाख में से कोल जनजाति 2,68,000 हैं। 2,68,000 के बीच में मात्र चंद सैकड़ा लोग ही स्नातक हैं। कुछ लोग ही 12वीं की कक्षा पास किए हुए हैं। कोल जनजाति के लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। ये सामान्यतः मजदूरी करते हैं अथवा खेतीहर मजदूर हैं। बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं। इनके पास आवास के लिए भी कोई अपनी ज़मीन नहीं है। ये अन्य जाति के किसानों की ज़मीन पर बसे हुए हैं अथवा सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं। इनका ये जो मुद्दे हैं, ये जो समस्याएं हैं इस कोल जनजाति की, इसको हल करने के लिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जो अभी प्रधानमंत्री जनमन योजना लागू की गई है पीवीजीटी ट्राइब के लिए, उसके तहत या तो कोल जनजाति को पीवीजीटी ट्राइब के अंतर्गत शामिल किया जाए अथवा प्रधानमंत्री जनमन योजना का विस्तार कोल जनजाति तक किया जाए, जिससे कि उनका जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है वो दूर हो सके और विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके और उनका भी उत्थान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अजय प्रताप जी। माननीय श्री इरण कडाडी, नीड फॉर अमेंडमेंट इन एमपी लैट्स गाइडलाइंस। माननीय श्री इरण कडाडी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान, डिमांड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स टू ओडिशा। उपसभापति महोदय, आज आप बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आभारी हूं। सर, उड़ीसा में किसानों के लिए फर्टिलाइजर का बहुत कमी है। इसी के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी कई बार कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके हैं, बोल चुके हैं और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि फर्टिलाइजर उड़ीसा में जो कमी हो रहा है उसको कैसा फुलफिल किया जाए। नेशनल लेवल का अगर देखा जाए सर, तो पर हेक्टर 137 मतलब 1 क्विंटल 37 केजी पर हेक्टर खर्चा होता है या फिर केंद्र सरकार देती है। लेकिन उड़ीसा में 66.17 माने 66 किलो ही फर्टिलाइजर दिया जाता है। उसका मतलब काफ़ी कम है, 50% करीब करीब कम दिया जाता है। इसीलिए हमारा डिमांड है सर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में उड़ीसा में 76% लोग इन्वॉल्वमेंट है। 87,46,000 हेक्टर में फसलें होती है सर, उसमें 18,79,000 हेक्टर इरिगेटेड लैंड है। इसके बावजूद, इतना डिमांड करने के बावजूद पता नहीं क्यों हमारे फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रहा है। केंद्र सरकार क्यों नहीं सुन रही है, मुझे पता नहीं। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे उड़ीसा में एग्रीकल्चर फार्मर्स बहुत अच्छा फसल कर रहे हैं। इसी के कारण जो कृषि कर्मण अवार्ड जो दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से, वो उड़ीसा सरकार को 5 बार से ज्यादा दिया जा चुका है। उसका मतलब बहुत ही अच्छा फसल उड़ीसा के किसान लोग कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि पहले दिन ऐसा था, कुछ साल पहले ऐसा था कि लोग खाने को अनाज नहीं पाते थे।
छोटे छोटे बच्चों को पेट में अनाज देने के लिए उनके परिवार का जो पिता होता था, जो भी होता था, वो चोरी करके लाके अपने बच्चों को अनाज देता था सर। इसीलिए खेत से अनाज चोरी हो जाएगा, इसके कारण बहुत से किसान रात को खेत में जाके सोते थे, खेत में जाके जगते थे सर। लेकिन आज स्थिति ऐसा है, कोई खेत में जगता नहीं है, कोई खेत में सोता नहीं है, क्योंकि सबके घर में अनाज है सर। उसका मेन कारण है, उसका मुख्य कारण है कि उड़ीसा का सरकार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो किसानों के लिए जो योजना किए हैं वो उनको लाभ दे रहा है और बहुत सुविधा से किसान अपने परिवार को पोषण कर सक रहे हैं सर। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है कालिया योजना, जिसके तहत किसानों को 5,000 रुपया हर सालाना दिया जाता है और 50,000 रुपया तक सर उनको बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाता है, जिसके कारण किसान आज उड़ीसा में खुशहाली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ये फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रहा है, कैसा इसको फुलफिल किया जाए। आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा के किसानों को। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी कंसर्न ओवर राइजिंग केसेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड इन द कंट्री। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज हर भारतीय ऐप, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल ऑनलाइन साधनों के माध्यम से अपने लेन देन की दैनिक क्रिया को बिना समय गंवाए आसानी से पूरा कर रहा है और यह डिजिटल युग का कमाल है। कोरोना महामारी के काल को माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व ने आपदा को अवसर में बदल कर रख दिया है, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हमारे देश में हो रहा है, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। माननीय उपसभापति महोदय, जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, उसी के साथ साथ बहुत बड़ी चुनौतियाँ भी आती जा रही है। इसी क्रम में इस डिजिटल युग में डिजिटल लेन देन ऑनलाइन के माध्यम से कुछ लोग फ्रॉड या ठगी या धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस प्रकार का फ्रॉड करने वाले लोगों के लिए कई प्रकार के कानून लेकर आई है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड या ठगी करने वाले मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 13,500 ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले निजी बैंकिंग क्षेत्र में हुए हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत को पिछले 7 सालों में हर रोज औसतन करीब लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ बैंक फ्रॉड या स्कैम के जरिए हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार एवं निजी एवं सरकारी बैंक के अधिकारियों से एक सवाल भी है। यदि हमारे देश के सभी बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं, आधार कार्ड पहले से ही तकनीकी रूप से सत्यापित हो चुके हैं, तो यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड या ठगी होती है तो हमारे सिस्टम में ऐसी क्या खामी है जो हम फ्रॉड करने वाले लोगों के खातों को ट्रेस नहीं कर पा रहे या पकड़ नहीं पा रहे हैं? यदि इस प्रकार की कोई खामी है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। ऐसे असंख्य केस है जो लिखित में नहीं आते हैं। मैं भी दूर दराज आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ। यह पीड़ा मेरे क्षेत्र के लोगों की भी है। एक कॉल या एक मैसेज में आए लिंक को खोलने मात्र से उस गरीब की मेहनत शून्य हो जाती है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निजी क्षेत्र के बैंक का अधिकारियों से विशेष आग्रह है कि वो अपने वित्तीय लेन देन के सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि किसी गरीब के लिए यह बैंकिंग धोखाधड़ी श्री संजीव अरोरा।